Northeast states. Leaders from those states have also come here. So it's going to be a strategy meet which will go on till 5 p.m. today. After that, tomorrow it is again going to resume at 8 a.m. and will continue till 4 p.m. It is also important to highlight that soon after casting his vote, Prime Minister has landed in Delhi. He came here to inaugurate this joint strategy meet. I remember that this somewhere shows how BJP is always in 24/7 campaign mood, 24/7 strategy chalking out mode, and that's what the other political parties need to learn. Not only Prime Minister but also Union Home Minister Amit Shah is here to take part in that particular meeting. So this somewhere tells us as to how BJP is always involved in reaching out to people to strategize how to again form government in other states, and that's what is being done here. The strategy for that is being chalked out here as we are speaking. Prime Minister is inside the BJP headquarters. He is going to address the office bearers, and after this very short break we will be getting more and more details as the meeting continues to take place at BJP headquarters. Prime Minister Narendra Modi in few minutes from now is going to address the BJP meet which is taking place at BJP headquarters in National Capital. Stay tuned for more updates. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest. So yesterday there was a session on a range of our priority areas. For instance, inclusive, resilient and accelerated growth. There was focus on women leadership. There was a discussion on digital transformation and data for development. And there was also a discussion on climate finance and life movement. This was a preliminary discussion, a society event. But we have circulated issue notes around all our working groups. Close to about 14 issue notes have been circulated. These have been read by all the countries. All our priorities have been brought out. Many of them were spelt out by the Prime Minister in his Bali address. These will be subject to debate and discussion here.
Viewers, the top headlines at this point of time, it's a phase 2 of Gujarat elections as voting continues right now in Gujarat. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। All right, news just coming in. We are now understanding that the Congress party has decided to complain against the Prime Minister and the Home Minister. The Congress party, we are told, is complaining against the Prime Minister's walk. Now, just to tell our viewers, the Congress believes that this is a violation of the code of conduct that's in place. Do remember that the Prime Minister walked to the polling station that was about 200 meters or so from where he got off his vehicle. He travelled to the area in a cavalcade and thereafter got down and walked for about 200 meters to the polling booth, and thereafter, after casting his ballot, of course, he walked to his brother's residence. So I think that's what is being opposed by the Congress party. So the Prime Minister walking to the polling booth and then onwards from it has been contested by the Congress party. The Congress calls the walk a road show. Aishwarya Kapoor on the phone line with us now. Aishwarya, tell us more in terms of what the Congress complaint is all about. Well, it's a scared Congress party. Congress party claims that the Prime Minister and the Home Minister of the country walking after casting vote, they are comparing it to a road show. Congress is crying foul, calling walks a walking road show. So they're scared of Modi and Shah walking now. While they should be concentrating on how to take on their strategies that the Prime Minister has not only walked, he has moved to Delhi and then to plan for 2024 elections, they are still stuck on the point that he walked after casting his vote, and they are going to complain to the Election Commission, comparing walking to a road show of the Prime Minister and Shah. So it's not only about Prime Minister but also about Home Minister Amit Shah. Congress is basically crying foul, is calling walking a road show. Congress is unable to understand, that is what comes out of it, that how to take on Modi and Shah. Otherwise, they would not have been stuck on them moving after casting their vote, but would have been taking them on strategizing for 2024. But their state unit is going to complain against the Prime Minister and Amit Shah walking after casting their vote. They are calling their walking equivalent to a road show. It's calling the Prime Minister walk and the Home Minister's walk as a road show. As we speak, we are being told that the State Congress President is going to go to the State Election Commissioner and complain directly, naming the Prime Minister and the Home Minister that they walked after casting their vote. That is the studio's number. All right. So as Aishwarya is pointing out, of course, this has been contended by the Congress party. Now, Aishwarya, how do you see this going forward? Of course, we are given to understand that the Congress says that this walk is a road show. It's against the code of conduct. All right, we seem to have lost that audio connection with Aishwarya Kapoor, our political editor. We're going to get him back in just a bit. But here's what we know so far. The Gujarat Congress has decided to complain to the Election Commission against both, I think, the Prime Minister as well as the Home Minister is what we are learning now. We are told that the Congress party is very upset by the walk that the Prime Minister took to it was about 200 meters or so. He decided to alight from his vehicle and thereafter walk to the polling booth. And thereafter, of course, after casting his ballot, he then went to his brother's home, which was another about 250 meters or so away from there. So the Congress party has taken exception to that. It has gone to the Election Commission. It says that they believe that this is a road show, and that is their complaint against him. Priyanka is joining us live as well. Now, Priyanka, we were reporting in the morning where the Prime Minister, of course, got down from his vehicle and then walked to the polling booth. Now, we are learning that the Congress party has claimed this as a violation of the poll code. They have, in fact, gone to the Election Commission, not just against the Prime Minister, but also Amit Shah. Well, yes, these are initial reports that we are picking up that the Congress has decided that they will be going to the Election Commission. They will be appealing to the Election Commission to take cognizance. They say that this is a violation in terms of the Prime Minister, in fact, walking
to that polling booth, and coming out of that polling booth, he had walked the entire length of the route that he was going towards the booth with. And of course, apart from him, we had seen that Union Minister Amit Shah as well. But the Congress party maintaining that this is in fact a violation of the MCC and also a violation in terms of the law, in fact, that they are not allowed to in fact carry out any kind of campaigning a couple of meters away from the polling booth as well. Now we will have to see whether or not the Congress in fact goes forward and registers this complaint at the Election Commission. But as of now, they have said that they will be approaching the Election Commission to take cognizance of the walk that they claim is a violation both of the Prime Minister and of Amit Shah as well. All right. So as you're pointing out, of course, just to show our viewers, this is what is being objected to. The Prime Minister, of course, was voting in Ahmedabad earlier this morning, and he decided to walk about for some distance at least, greeting people on either side. So this is what the Congress party is objecting to. They believe that this is essentially a road show, and they want the Election Commission to take notice of this, to take cognizance of this and act against them. But also, Priyanka, it's not just the Prime Minister. They've also objected, I think, to Amit Shah and his visit there after casting his ballot to a nearby temple. So can you tell us more about that? What are you picking up? Well, what we have seen is that the Prime Minister, in fact, coming out of the polling booth and walking and of course talking to the cadre on the ground, talking to the media. But even while speaking to the media, Nupur, he has not spoken about anything except for imploring the people of Gujarat to come out and vote in huge numbers. And that's exactly what we saw the Union Home Minister Amit Shah also do. In fact, both of these interactions had taken place quite far away from the polling booth, their respective polling booths, one in Raneb, the other in Naranpura. And of course, we have seen both of them speaking about the voter turnout, speaking about the people of Gujarat to come out and exercise their rights to vote. And that's about it. There was no political hyperbole that we saw in these kind of interactions that came out right after both of them, in fact, had cast their vote as well. But of course, we will have to wait for that complaint copy as well for the logic that the Congress is really resorting to, saying that this is in fact a violation for both the Prime Minister to walk and for the Home Minister to also actually walk towards the polling booth. But that in itself is a very bizarre complaint as well that we're looking at, Nupur, because the Prime Minister, in fact, had been walking towards the polling booth. He had gone inside and had waited in line as well to cast his vote as well. So we'll have to see as to what the Congress is trying to say as far as this complaint is concerned, as far as the legalities of this complaint is also concerned. But as of now, they have said that they will be approaching the Election Commission to take cognizance of this. And we will have to see whether or not the Election Commission also does take cognizance of this or not. But as of now, the Gujarat level leadership, in fact, also not coming out in the open and talking about this particular issue. We will have All right, so that is Sasikala, of course, at the memorial of Jayalalithaa. Do remember, it's been 6 years since Jayalalithaa passed away, and we have seen various factions of the AIADMK, or rather also the political outfits that have come out of the demise of the AIADMK, in a sense. The leaders, EPS, OPS and Sasikala, of course, paying their separate homages. But the big news point that everybody's been talking about is the fact that there seems to be hints now that the two factions, at least, of EPS and OPS could come together. But that's not all. Even Sasikala spoke about it. She said that she is the only one leader who can unite the AIADMK and essentially have a credible opposition to the DMK in Tamil Nadu. Also, pictures on your screen are testament to how big a leader Jayalalithaa was. Thousands of people have thronged the memorial that has been erected for Jayalalithaa. Let's go across to Varshini. I think she's joining us live. And Varshini, if you could just translate what Sasikala is saying.
Well, right now, Speaker Sasikala and her cadres are paying respect to the former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha's memorial at the Marina Beach. And they are also raising slogans about how DK Sasikala is the, political heir, and she must be the next leader for the AIADMK party. Whereas we can also see that DK Sasikala All right, viewers, we'll just connect back with our correspondent. But right now, visuals coming on your screen of Sasikala at the memorial of Jayalalithaa. Tribute being paid by Sasikala as well. Sasikala is paying tribute on the 6th death anniversary, and this is also being seen as a show of strength by Sasikala. कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, इट्स फैक्ट दैट कमल हमारा नेशनल फ्लावर भी है. तो जब नेशनल फ्लावर तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को दे दिए जब, तो वो फ्लावर को यूज नहीं करके और भी नेशनल कितना चीज था. हमारा संभवतः नेशनल टाइगर था पहले, नेशनल जो चिन्ह था, अभी लायंस बना दिया. तो पिकॉक भी है, जो नेशनल एम्ब्लेम है, कितना चीज है. ये चीज को देखना चाहिए, बिकॉज 20 कंट्रीज, इफ आई डोंट रेज अदर विल रेज. जैसे आप एक सांबादिक हमको पूछ रहा है, इसी के लिए मेरे को उत्तर देना पड़ रहा है. नहीं तो मैं देखते जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन तब भी देश का बात है, इसी के लिए हम इसके इशू नहीं बनाया. But it is not a non-issue. It's an important issue, and I think they should think over the matter. Didi, the Gujarat second phase election is on. Prime Minister had gone out to cast his vote, but it was more like a road show, which is in violation of the Election Commission's norms. The same Election Commission which had barred you from campaigning for a day is today quiet. He did a road show, reaching to the polling booth, and after he came out. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent for cent. That Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. না না, আপনি সব জানেন না. ঘটনাটা আমি সকালেই হ্যান্ডেল করে দিয়েছি. তখন দুজন মাত্র ডাক্তার ছিল, দুজন জুনিয়র ডাক্তার, কোনো সিনিয়র ডাক্তার ছিল না. ঘটনাটা 4-5 দিন আগের একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস. যাই হোক, একটা ইয়াং ছেলে মারা গেলে বা অ্যাক্সিডেন্ট হলে মানুষের তো একটা দুঃখ লাগে, কিন্তু তাদের এটা করা উচিত না. কারণ ডাক্তাররা দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট. আমাদের ট্রমা সেন্টার ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেন্টার, এবং 4-5 দিন ধরে দে কন্টিনিউয়াস দে ট্রাইড দেয়ার বেস্ট. রাতের বেলায় মারা গেছে বলে ওরা হঠাৎ ঢুকে গেছে. আমি কত কষ্ট করে, কত টাকা খরচ করে এই ট্রমা সেন্টার করেছি. দুজন জুনিয়র ডাক্তারকে ওরা হেকেল করেছে, ম্যান হ্যান্ডেল করেছে. All right, so Mamata Banerjee speaking there. In fact, Mamata Banerjee will be in Delhi today to take part in the preparatory meeting for the G20 summit, which will be convened by PM Modi at Rashtrapati Bhavan. She's making a couple of points there as well, and she will in fact will be here in Delhi very soon. Now remember, West Bengal will also be hosting the G20 tourism meeting in Darjeeling from April 3rd next year as well. And Mamata is in fact questioning the lotus symbol of G20, and she also has commented on the Prime Minister's walk, saying that it is excused for them. It's excused for them. When she was questioned about the Prime Minister's walk,
which the Congress is going to move the EC for. They have an issue with the Prime Minister's walk there while he went for voting. All right, let's go ahead and take a very short break right now, viewers. We continue getting the top updates as Gujarat also is going to polls today in the second phase. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief YS Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. YS Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Viewers are getting some breaking news coming in. International breaking news now. Dramatic brawl breaks out in Senegal's parliament. Visuals of that you can see on your screen. It looks like it's extremely dramatic. People are punching each other and they're even picking up chairs. Soon I'll be joined by our senior executive editor Abhishek Kapoor, who will take us through exactly what's happening there in the parliament at Senegal right now. Visuals of that on your screen as well. We can see that a brawl has broken out in Senegal's parliament. And in fact, 2 days back too, Senegal parliament saw brawls after MP had hit a woman colleague. Once again, we are seeing more visuals come in and more details coming of a dramatic fight inside the Senegal parliament. And there are chaotic scenes there you can see in the parliament in Senegal. Now what we can see is a massive scuffle which has erupted between the lawmakers. You can see chairs being thrown. You can see that the parliamentarians as well stumbling and falling there. Massive brawl there inside the Senegal parliament. It's time for a very short break, viewers. We continue to be live and breaking and getting to the top updates today. Here's the final fight as voting is underway for the second phase of Gujarat elections. 19.17% voter turnout till 11 a.m.
लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। Amid the Modi chants, PM casts his vote in Ahmedabad Lord's Election Commission for conducting peaceful polls. Stay tuned. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic P-Mark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbala Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbala says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Post to post live coverage. Right now we are in Jammu, the Resident Commissioner office, where the Kashmiri Pandits are staging protest, and this protest is against the threats that have been issued by the terror group, the Resistance Front. The terror group has issued a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. We'll try to speak to some of the Kashmiri Pandits because this Kashmiri Pandit community has been on the target of the terror group for a long, and yesterday itself they have issued another threat to these Kashmiri Pandit employees. Time and again, day before yesterday when we spoke, you said that we have been demanding, but no heed is being paid to our demand. Absolutely, sir. You are quite right that we are demanding for right to live from since May this year, but our demands are not being heard. In respect, the government has stopped our salaries. Giving a respite to our reviews, the government has stopped our salaries, and now a recent list of 57 employees of our community has been issued for by TRF, and they are threatened to be killed. So this is the breach of security. தொண்டர்கள் முடிவு பண்றதுதான் நடக்கும். அது நிச்சயம் தனிப்பட்ட ஒருத்தர் முடிவு பண்ற முடியாது. அது வேற கட்சியில முடிவு பண்ணலாம். எங்க அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல அது மாதிரி செய்ய முடியாது.
ஏன்னா எங்க புரட்சி தலைவர் கட்சி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அவர் அந்த பொறுப்பை தொண்டர்கள் கையில தான் அது நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல ஒவ்வொரு தரப்பும் மெகா கூட்டணின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். யார் தலைமையில மெகா கூட்டணி அமையும் நினைக்கிறீங்க? ஏடிஎம்கேல விடுங்கப்பா. ஓகே மேடம். ஓகே, தேங்க் யூ மேடம். மேடம் தேங்க் யூ மேடம். Hello. So we just heard that reaction from Sasikala, who in fact was at the Jaya Memorial, and she spent the last an hour or so there, and many say that this is possibly a show of strength by her. But what is it that she has on her mind? What is it that she can do, considering that you have seen the AIADMK that is fractured right now? Remember, there were reports that she could actually join hands with a particular faction, and this is how she plans to take on the DMK in the state. Would that happen or not? We'll also try to get in Varshini to help us understand verbatim what exactly we've heard from Sasikala. But there is a churn in Tamil Nadu politics as far as the DMK, the AIADMK is concerned. The BJP, remember, also trying to get a foothold right now into states politics. Varshini, Sasikala there paying tribute to Jayalalithaa. What have we heard from her specifically? What does she say about what's on her mind? Well, when Republic tried asking her about how, this AIADMK party is planning to move forward, because there are three factions right now, and also OPS before a few minutes spoke to Republic saying that coming back together, reuniting is the only way. She says that even she stands by that. The only way to AIADMK party to come back together stronger is to reunite, to put out all the political differences aside and to come back together and work. And she also mentioned something very interesting. She says that one person cannot decide what the party's future is, and by that one person she means that Edappadi K Palaniswamy cannot decide on how the party's future is going to be. It's about everybody, including OPS, including herself, including TTV Dinakar and other important leaders who have also been terminated by the current interim General Secretary Edappadi K Palaniswamy from the party during their General Council meet. So therefore VK Sasikala is also standing strongly on her point, where she wants all the leaders to come back, put aside their political differences and to be put forth a front, a very strong front. So will that happen or not, party. Varshini? I think that's something that we'll keep our eyes on, only for what of time. Apologies, I'm just interrupting you here, but we'll track that story also when we come back on the other side of this quick break. And remember, we are also keeping our focus and the spotlight on the all-important Gujarat elections. We are in the second phase of that election, and the Prime Minister voted earlier. Now he's back in Delhi. He's now chairing a mega BJP meet. More details also of that when we come back. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka, now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus polls to polls, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप?
truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic P-Mark exit poll, December the 5th at 6 p.m. It is the final fight as voting is underway for the second phase of the Gujarat elections. 34.7% voter turnout till 1 p.m. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं. Amidst the Modi chants, the Prime Minister casts his vote in Ahmedabad, lauds the Election Commission for conducting peaceful polls. Modi chants reverberate in Gujarat, but the Congress politicizes this, calls the Prime Minister's walk a violation. The Home Minister Amit Shah, along with his family members, cast their vote in Ahmedabad, appealing to all the first-time voters to step out to cast their ballot. It's also a prestige battle in Uttar Pradesh's Mainpuri, the seat vacant after Mulayam Singh Yadav's demise. And we are building up to the biggest and the most accurate exit poll on Republic with India's #1 news team. And let's get you more details on what's been happening in Uttar Pradesh. Do remember, there is the seat, Mainpuri, that has now, in fact, voting. It's a bypoll that has been necessitated after the death of Mulayam Singh Yadav. Now, Akhilesh Yadav there has spoken to Republic on the entire fracas that has been reported earlier. The Samajwadi Party has, in fact, complained, and they have said that a lot of voters are not being allowed to cast their ballot. They are casting aspersions not just on the Election Commission, also on the ruling BJP in the state. Let's listen into what he says. अखिलेश जी, मैनपुरी का ये बड़ा चुनाव है और क्या इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव नेताजी के ना रहने पर है। पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है। जो विकास दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, सड़कों का, बिजली का या और तरह का, सब समाजवादी पार्टी और नेताजी का कराया हुआ है। इसलिए मैनपुरी की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। जहां से सूचनाएं आ रही हैं, ज़रूर डिले कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हो सकता है ये ब्रीफिंग रही हो या किसने ब्रीफ किया हो कि जिसकी वजह से एक एक व्यक्ति जो वोटर है, जो वोट डालने आ रहा है, उसकी कई बार चेकिंग हो रही है। अगर इसी तरह चेकिंग होगी तो वोट कितना पड़ पाएगा? कई बूथों से ये शिकायतें आई हैं। पीसी में आपने कहा कि लोगों को रोका जा रहा वोट करने से, और प्रशासन जो आपके कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ा हुआ है, क्या शिकायतें मिली? अभी घिरोर में जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं गुप्ता जी, उन्हें पहली बार उठाया, फिर कहा गया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। जो व्यक्ति 70 साल का है उसे बार बार क्यों उठा रहे हैं आप? जहाँ पर शिकायतें आई थी, कुछ जगह ठीक हो गई, कुछ जगह अभी भी है इस तरह का कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, अगर बगल का बूथ देख के आइए, सेंटर फोर्स चेक कर रही है पहले आईडी, फिर अंदर चेक हो रहा है आईडी, फिर एक और चेक हो रहा है आईडी। अगर 3 बार आईडी चेक होगा तो वोटर अपना वोट कब डालेगा? तो आपको लगता है आईडी चेक नहीं होना चाहिए? नहीं, जो नियम है उसके तहत होना चाहिए। जिसका अधिकार है उसको चेक होना चाहिए। अच्छा, चुनौती आप मानते हैं
कोई चुनौती नहीं है। देखिए जो बेईमानी हो रही है रामपुर वो सब देख रहे हैं कि जहां पुलिस प्रशासन की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए निकले और पड़े, वहाँ कोशिश ये चल रही है कि वोट ना पड़ पाए। कर्फ्यू सा लगा दिया डेमोक्रेसी में। अगर आप वोट के दिन कर्फ्यू लगा दोगे तो आप डेमोक्रेसी को हिला रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। और ये जाना किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। एक आखिरी सवाल, नेताजी की विरासत है, एक तरफ उनके शिष्य कहे जाते हैं रघुराज शाक्य और एक तरफ उनकी पुत्रवधू। देखिए नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है समाजवादी विचारधारा जो हमको दी है। नेताजी ने जीवन भर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं के जो अपना पक्ष रखा और जहां ऊंचाई तक पहुंचाया लोगों को। मैं समझता हूं समाजवादी विचारधारा नेताजी यहाँ तक लेकर के आए हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल तक इस विचारधारा को और कैसे मजबूत किया जाए। चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अब आप क्या करेंगे आगे? धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को निगरानी रखनी चाहिए और पूरी निगरानी इसलिए रखनी चाहिए कि जब सरकार और प्रशासन मिल जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पिछले उपचुनाव के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहते, इस उपचुनाव में क्या उम्मीद है? कई बार उपचुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और पिछली बार भी बेईमानी हुई थी। मैं समझता हूँ इस बार वोटर बेईमानी से नहीं डर रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने। So that, remember, is Akhilesh Yadav making that big charge against the Election Commission, against the local cops and the Yogi Adityanath government. This, viewers, is a prestige battle. It's the same seat which is looking at a bypoll. Why? Because of the demise of Mulayam Singh Yadav, and Akhilesh's wife, the former MP Dimple, is in fact contesting from that seat. We'll track that story and much more as Akhilesh Yadav is complaining in the state of Uttar Pradesh. You have the Congress that is complaining now in the state of Gujarat. Now, what does the Congress say? The Congress say that because you had the Prime Minister and the Home Minister Amit Shah today walking as they were headed to cast their ballot in Ahmedabad earlier, they say this is a violation of the Model Code of Conduct. In fact, they go on to call this a road show. We will have Priyanka and Aishwarya both who are reporting on that story. And remember, the story moving very fast. It's a big election controversy. I want to first up go into Priyanka and then we'll get in Aishwarya for the larger big picture here. So, Priyanka, this is nothing new. It shouldn't be a surprise because in 2017, you heard almost similar complaints by the Congress and it's a redux of that entire moment. Why is the Congress looking so spooked and what do they exactly say? Well, that's right, Deepthi, this is something similar that had happened in 2017 elections as well, and the Congress party had approached the Election Commission, and once again, they have filed two complaints with the Election Commission, one against the Prime Minister and one against the Union Home Minister Amit Shah as well. And both of these complaints are talking about violations of the Election Code and the Election Model Code of Conduct as well, and have stated that these are the leaders, in fact, who are also speaking about the polls near the polling booth as well. And they've also said that this entire walk, quote unquote, that they're saying is a road show, is something that they are citing, claiming that the Prime Minister, in fact, was carrying out a road show. But we were there, in fact, Deepthi, we were there on the ground outside of the polling booth as well. And it was that the Prime Minister had come in his cavalcade there towards the polling booth and then had gotten out and had, just like a normal voter, had walked and gone inside the polling booth and had waited. So this is the entire series of events of which Congress has taken offence and taken note of, and have stated that this entire incident, in fact, this entire Prime Minister coming there and walking and going towards the voting booth, that is in fact being called as a road show by the Congress party. And of course, they're also saying that a similar incident had taken place with the Union Home Minister Amit Shah as well, and that he had gone to the temple right next to the polling booth, and that also constitutes to campaigning as well. So these are some of the allegations that are being levelled by the Congress party. We will have to wait and watch how that really pans out for or against the Congress party. But coming to your question, Deepthi, we do see these kind of attempts by the Congress party. Even in 2017, we had seen that, as I mentioned earlier. And of course, this time, as we have been tracking the entire campaign of the Congress party, we have seen that there's not a lot of visibility that we see on the ground of the Congress party in terms of the campaign. Then be it, of course, also in terms of Rahul Gandhi factor, who had been completely missing in action in the state of Gujarat, at least this campaign. And of course, in the backdrop of that, we see these kind of complaints also coming to light. Yeah, Deepthi.
Yes, Priyanka, very quickly, I also want to get in Aishwarya because he has more insight into what sources in the Election Commission say. Now, you know, Aishwarya, we heard Pawan Khera there saying the Prime Minister is a repeat offender. We'll also go into Harsha in just a bit, but, you know, there are no flags. I don't see any banners there. So, what is this complaint about? What basis is the Congress saying that this is a violation of the Model Code of Conduct, and what do sources in the Election Commission say? Deepthi, just analyze what has happened in the last 4 hours. BJP Prime Minister Modi, Amit Shah started from Gujarat, casted their votes, and now they are in Delhi preparing for 2024 Jan elections. That's how fast the BJP's machinery, BJP's organization is working and acting. And the Congress is still stuck in 2017. They are scared of the Prime Minister Amit Shah walking. Imagine that. They are scared, and I repeat, the Congress party in Gujarat is not scared of the speed at which the Prime Minister is working and preparing now in 4 hours from Gujarat elections to 2024 general elections. No, they're scared of the Prime Minister and Amit Shah walking. They're calling a 100-meter walk as a road show. Prime Minister's road show was 50 kilometers long, Amit Shah's road show was 15 kilometers long, and that is what a road show is, not a 100-meter walk. They don't want Prime Minister's face to come out, they don't want Prime Minister to wave hands, and that's their problem. Because they are unable to walk at the speed and work at the speed of this duo, that is Modi and Shah. 3 to 4 hours prior, they were casting their vote in Ahmedabad. And now they are analyzing how to strategize 16 reports being submitted for 2024. And that's the real reason of frustration and desperation which we see, that Congress does not want to work hard. Congress does not have a clear leadership, a clear direction. And as a result, they are just repeating what they did in 2017. And as Priyanka was telling, because they are unable to keep up with the pace of the Prime Minister and Amit Shah. And the example is right there in front of us. Morning, they were in Ahmedabad. Right now, they are in Delhi strategizing for 24. And where is Congress? Still stuck in 2017. And that's a reality check with the Congress party and the other opposition parties. If they plan to take on this duo and this election machinery, which BJP has completely converted to post-2013, that they need to work at their pace if they need to take them on. And that's the bottom line. Deepthi. That is true. That is true. And I think, you know, we should, in fact, try to get more political reactions to that story, because this is a moment, you know, Aishwarya, I clearly remember when we were bang in the middle of the 2017 campaign also, they spoke about the EVMs. In the middle of the day, the Congress and Priyanka, you would remember that in Rajkot, they said EVMs kharab hai. So you see the same bahana, you know, coming up again and again and again, Aishwarya. And before I come to Harsha, let's quickly play out what we heard from the Prime Minister, who's actually appealed to everyone to come forward and vote. And he simply went there to cast his vote. He showed his inked finger and he said everyone needs to be an equal participant in this festival of democracy. और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। So that is a very brief statement that you heard from the Prime Minister, who is a registered voter. He goes on to vote. And we'll quickly, you know, just take our viewers through these images that you're seeing playing out on your screens. We also have Aishwarya, Priyanka and Harsha tracking every bit of this election controversy. Do remember, you're looking at the second phase of polling that is still on, and the Congress already is complaining. What are they complaining about? They say the Prime Minister and the Home Minister walked until the polling booth, and that for them, they say, is a violation of the Model Code of Conduct. Now, like we said,
it's a redux of the entire episode we saw in 2017, Harsha. They again had gone to the Election Commission, but the Election Commission found no merit in that argument. Now, I want to understand, bang in the middle of this second phase, the all-important phase right now, why has the Congress gone ahead to put out this complaint without any basis? What do they say? See, Deepthi, one thing is for sure, in 2017 elections of Gujarat, we had clearly seen that at that time also Congress had complained about EVMs. They have clearly stated that EVMs were wrong, they were not properly working, and BJP has somehow managed to make votes in their own favor. And after that it was cross-checked, and Congress arguments and complaints were found baseless. And this time also in Rajkot and Surat and many parts of Saurashtra, Congress was complaining about EVMs. But let me tell you very frankly, right now I had word with Jagdish Thakur, who is GPCC president over here in Gujarat. He clearly stated that we are going to Election Commission in Gujarat as well in Delhi, because Congress is somehow fearing that today what Prime Minister Narendra Modi's roadshow everyone looked up to, and Amit Shah supporters, how they were in Narangpura, that could be a last push for their vote in favor of BJP, because clearly those visuals on our screen, we clearly saw how supporters, cadre and BJP workers were over there. Even in fact the commoners and locals were also standing in support of BJP. Now Congress clearly knows that the first phase has somehow gone in favor of BJP, because these are election experts, because BJP leaders have also been stating that first phase in many places they have got the survey that they have performed well. Now Congress is fearing clearly that they couldn't perform well, or this second phase could also go much in favor of BJP. Therefore now they want to move towards Election Commission, complaining about the model code of conduct. True, we have seen that Amit Shah was here, and after he cast his vote, he walked to the temple, seek blessings of the god, because it is the violation of model code of conduct which Congress has been stating. But the time exactly when they will go to Election Commission in Delhi and in Gujarat has yet not been said by Jagdish Thakur till now. So we have to wait and watch exactly what are their complaints all about, whether it is the road show or they have any fear of model code of conduct, or they are still stating that EVMs are not working properly. Back to you, Deepthi. Okay. And I do remember, in the middle of the first phase also, you had the AIADMK party talking of slow polling. So I don't know why you have political parties in the middle of campaigning, first phase, second phase. You've seen, similar election controversies. And these are images, ladies and gentlemen, of that, walk that the Prime Minister took because he was going there to cast his vote. The Congress says this is a violation of the Model Code of Conduct. Harsha, before we carry forward this conversation and get in more political reactions, let's quickly listen in to important newsmakers who've spoken to Republic since this morning. मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते, काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसी शक्ति है जहां पर आप अपने आप को शक्तिशाली प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी तो सबसे अपील भी है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और जो शक्ति और सुशासन जो राज्य में रहा है, और गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, तो मैं सभी गुजरातियों को अपील करता हूं कि सब साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी को वोटदान करें। मतदान करना हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो ये अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए।
So let's also get in the first reaction from the BJP. Senior BJP spokesperson Yamal Vyasji is joining us on the broadcast right now. Vyasji, thank you for speaking to us on Republic. How would you respond to this big allegation by the Congress? They say the Prime Minister and the Home Minister violated the Model Code of Conduct, and the Congress is calling this walk a roadshow. Yamal Vyasji, are you there with us? Mr. Vyas, can you hear us, sir? Hello. व्यास जी आपको आवाज आ रही है? हेलो. यमल व्यास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? Okay, I think we have some trouble with that line, but we'll try to get you the very first response from the Gujarat BJP to that allegation that has been put in by the Congress party. On what basis does the Congress believe that this was a violation of the Model Code of Conduct? Or is the truth in the fact that the Congress right now is sensing a defeat the reason why? You hear them breaking up this controversy bang in the middle of the second phase of polling that is underway. We headed to a quick break right now. On the other side, back with lots more. Now, the TRS leader, K. Kavita, has responded to the CBI and she says she needs more time to appear before the investigative agency. This is about the Delhi liquor excise scam. We'll also have details of that on the other side of this quick break. Also, Sasikala is back at the Jaya Memorial, so are EPS and OPS. But what does this mean for the future of the AIADMK? The full story also on that when we come back. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka, now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station. That India and Germany
interact in the framework of the G4 when it comes to the reform of the UN Security Council. We had a discussion on India's G20 presidency, which comes just as Germany itself is concluding a very successful G7 presidency. And I know that we have Germany's strong support as we take up our responsibility in the G20. Among the issues we discussed was also cooperation in third countries, in other regions. I think today our relationship has matured to a point where our cooperation should be visible more and more to the rest of the world. So that was something we discussed. How can we make this happen more effectively? We already have some projects in Cameroon, in Ghana, in Malawi and Peru. But the idea was really how can we be doing very much more. I also welcome Germany's decision to participate in the India-Pacific Oceans Initiative that we had announced in 2019. Where our economic ties are concerned, you all know that India, Germany is our largest partner in the EU. I think we both recognize that the business climate today, the business enthusiasm today is very much stronger. And we certainly, as foreign ministers, would like to channelize that and use it as a positive source of energy for the relationship. We are today supporting the India-EU negotiations on trade, investment and geographical indicators. We hope that they will progress well. The third round of negotiations on the FTA has just concluded. But I think on a broader scale, I think both of us spent time talking about how to create more reliable and resilient supply chains. In the digital world, how to encourage more trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also a more secure global economy. So as you can see, on this range of issues, really it's been a very productive morning. There was some talk between us on people-to-people relationships. We have just signed the Migration and Mobility Partnership Agreement, and I do think that this will be a very strong signal for a greater, not just a greater flow of talent and skills between our two societies, but I think also as a basis for a more contemporary partnership. One issue which also came up were the visa challenges. And we hope that some of these are addressed in the coming months so that the backlog can be cleared. I have every confidence that there will be that effort made by our partner. A specific issue which came up, some of you may be familiar with this case. This relates to a child called Ariha Shah. We have concerns that the child should be in her linguistic, religious, cultural and social environment. This is her right. And our embassy is pursuing the matter with German authorities, but it was also a subject which I had brought up with the minister. Overall, I would say our bilateral relationship today is very wide, it's very deep. And it really covers, all the key areas: political, strategic, economic, SMT, people-to-people, education. But it can grow very much, and I think we, the two foreign ministers, I think are particularly committed to make that happen. Our meeting today, our discussions were helpful in that regard. Once again, really, Minister, I thank you so much for being here and for partnering me in this endeavor. Thank you. Thank you, sir. May I now invite Her Excellency Minister Baerbock to make her remarks. Thank you very much, and I will speak in German. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Subramaniam, Jai Shankar Ji, vielen Dank für den herzlichen Empfang heute hier in Neu-Delhi.
Ich habe meinen Besuch in Indien heute, wie viele vor mir, am Gedenkort Gandhi Smriti begonnen. Schon immer hat mich Indiens reiche Geschichte tief bewegt. Deeply moved by India's rich history, but when I followed Gandhi's last steps today, I became acutely aware of the fact that India's path towards independence truly was not an easy one. Today, almost 75 years after the murder of Gandhi, there is a close bond between our democracies, a bond that unites us on the basis of shared values, human rights, freedom, democracy, Das Vertrauen in eine Ordnung. in an order based on the law. Thank you very much for the open exchange we had today about all these topics, and this open exchange is possible also because, of course, this is my first official visit to India, but it truly doesn't feel like a first official visit. It rather feels like coming to see a good friend. And the fact that we have met several times already this year at the intergovernmental consultations, as you mentioned, in Berlin, the G20 meeting in Bali, or the UNGA in New York, shows how important the close coordination between friends is to us, especially in this year. And it also illustrates that in these difficult times, it is important that we stand together as partners in values, that we really can grow together, and that we are doing so. My visit today could not be more timely. This month, as you said, India's G20 presidency and your presidency in the UN Security Council overlap with our G7 presidency. So you're also having the presidency of the United Nations Security Council. So, Minister Jaishankar, I would like to explicitly thank you for assuming the presidency of the G20, not only in a business as usual way, but you also made it very clear in our discussion that this is a very special task and that you will shape with great responsibility. So India is assuming global responsibility in this difficult moment. Responsibility for the most urgent tasks of our time. We have the global impacts of the brutal war of aggression of Russia against Ukraine, an illegal war that has brought the whole world. Couple of statements coming out at this point of time, where India, Germany, they have signed an agreement together. And they have signed an agreement on the comprehensive migration and mobility partnership with the German foreign minister as well in Delhi. So really cementing the India-German ties there. And a lot of issues were discussed, including the Russia-Ukraine war. And Germany also saying that they share deep ties with India. Viewers, top headlines right now. It's a final fight as voting is underway for the second phase of Gujarat elections. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं. Amid the Modi chants, PM cast his vote in Ahmedabad, Lord's Election Commission for conducting peaceful polls. Modi chants reverberate in Gujarat, but Congress politics is on, calls Prime Minister's walk a violation. Home Minister Amit Shah, along with his family members, cast vote in Ahmedabad, appeals for first-time voters to step out to vote. It's a prestige battle in UP's Mainpuri, the seat vacant after Mulayam Singh Yadav's demise. And viewers, catch the biggest and most accurate exit polls on Republic, with Republic's and India's
#1 news team. Viewers, getting some breaking news coming in. Republic has spoken to Akhilesh Yadav, where bypolls are underway. Akhilesh Yadav, who has just cast his vote, has made some very big allegations against UP police and said that cops are not allowing the people to cast their vote. Allegation coming in from Akhilesh Yadav right now as bypolls are underway. He has made a couple of allegations saying that voters are being stopped from casting their vote. Let's go ahead and listen in to this conversation that Republic TV has had with Akhilesh Yadav. अखिलेश जी, मैनपुरी का ये बड़ा चुनाव है और क्या इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव नेताजी के ना रहने पर है। पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है। जो विकास दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, सड़कों का, बिजली का या और तरह का, सब समाजवादी पार्टी और नेताजी का कराया हुआ है। इसलिए मैनपुरी की जनता एक बार फिर समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। जहां से सूचनाएं आ रही हैं, ज़रूर डिले कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हो सकता है ये ब्रीफिंग रही हो या किसने ब्रीफ किया हो कि जिसकी वजह से एक एक व्यक्ति जो वोटर है, जो वोट डालने आ रहा है, उसकी कई बार चेकिंग हो रही है। अगर इसी तरह चेकिंग होगी तो वोट कितना पड़ पाएगा? कई बूथों से ये शिकायतें आई हैं। पीसी में आपने कहा कि लोगों को रोका जा रहा वोट करने से, और प्रशासन जो आपके कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ा हुआ है, क्या शिकायतें मिली? अभी घिरोर में जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं गुप्ता जी, उन्हें पहली बार उठाया, फिर कहा गया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। जो व्यक्ति 70 साल का है उसे बार बार क्यों उठा रहे हैं आप? जहाँ पर शिकायतें आई थी, कुछ जगह ठीक हो गई, कुछ जगह अभी भी है इस तरह का कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, अगर बगल का बूथ देख के आइए, सेंटर फोर्स चेक कर रही है पहले आईडी, फिर अंदर चेक हो रहा है आईडी, फिर एक और चेक हो रहा है आईडी। अगर 3 बार आईडी चेक होगा तो वोटर अपना वोट कब डालेगा? तो आपको लगता है आईडी चेक नहीं होना चाहिए? नहीं, जो नियम है उसके तहत होना चाहिए। जिसका अधिकार है उसको चेक होना चाहिए। अरे चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। या फिर इसकी देखिए, जो बेईमानी हो रही है रामपुर, वो सब देख रहे हैं कि जहां पुलिस प्रशासन की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए, निकले और पड़े, वहां कोशिश ये चल रही है कि वोट ना पड़ पाए। कर्फ्यू सा लगा दिया डेमोक्रेसी में। अगर आप वोट के दिन कर्फ्यू लगा दोगे तो आप डेमोक्रेसी को हिला रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। और ये जाना किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? एक आखिरी सवाल, नेताजी की विरासत है, एक तरफ उनके शिष्य कहे जाते हैं रघुराज शाक्य, और एक तरफ उनकी पुत्रवधू। देखिए, नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है समाजवादी विचारधारा जो हमको दी है। नेताजी ने जीवन भर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं के जो अपना पक्ष रखा और जहां ऊंचाई तक पहुंचाया लोगों को। मैं समझता हूं समाजवादी विचारधारा नेताजी यहां तक लेकर के आए हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल तक इस विचारधारा को और कैसे मजबूत किया जाए। चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अब आप क्या करेंगे आगे? धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को निगरानी रखनी चाहिए, और पूरी निगरानी इसलिए रखनी चाहिए कि जब सरकार और प्रशासन मिल जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पिछले उपचुनाव के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहते, इस उपचुनाव में क्या उम्मीद है? कई बार उपचुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और पिछली बार भी बेईमानी हुई थी। मैं समझता हूँ इस बार वोटर बेईमानी से नहीं डर रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकले हैं। We are right now at Delhi's Karkardoma, where outside this hotel, that is the Ginger Hotel, a massive fire was reported on the 3rd floor of this very hotel at around 9:15 a.m. As you can see in the visuals, 11 fire tenders at that point of time were rushed to spot. Total chaos was witnessed. Right now, we do have some ambulances and some fire tenders. We are getting to learn that nobody so far has been injured in the fire, in the mishap that took place in this very hotel so far.
However, the rescue operations right now are still underway. The people are telling us that the reason for why the fire broke out has not been known yet. However, the situation is now under control. Remember, it is to be noted that it is a hotel, and the fire was at 9:13 a.m. in the morning at the 3rd floor, and the 3rd floor is a banquet hall. So it is likely to be said that the fire took off from the kitchen, but however, nothing has been confirmed by official sources as well. We have few people here who were there at the rescue op. Sir, आप वहाँ पे थे जब आग लगी थी? हाँ जी। क्या सिनेरियो था वहाँ पे? क्या हो सकता है वहाँ पे? क्यों आग लगी थी? इसके बारे में तो पता नहीं। हम बगल वाले होटल से आए थे, जब हमें पता लगा आग लगी तो हम तुरंत आए। उसके बाद हमने अपना किया। कितना ज़्यादा फैल गई थी आग? आग तो पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। काफ़ी लोग गैस एक ही फ्लोर पे लगने की वजह से पूरे गैस फ्लोर पे भी धुआं हो गया, इस वजह से लग गई थी आग। फ्लोर एक ही फ्लोर पे लगी थी आग। लेकिन सारे लोग Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism. And essentially the fact that, we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues, but the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism. And I think there was understanding from the German side in this regard. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic P-Mark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned. Viewers, the second phase of polling
polling is underway in Gujarat. The voter turnout has soared to 34.74% now. And a short while back, the Prime Minister had cast his vote in Ahmedabad. And he also said that everybody, whether it be men, women, everyone from the first-time voter to the senior citizen should come out and vote in large numbers. Here's a full story. At around 8:50 a.m., Prime Minister Narendra Modi's grand convoy left from Raj Bhavan in Gandhinagar. The convoy headed for Nishan Public School poll booth in Rani. Thousands lined up and cheered for the Prime Minister. Huge crowds were seen on both sides of the road outside PM's poll booth. And the cheers grew louder as the crowds caught the first glimpse of the Prime Minister's cavalcade arriving. Prime Minister Narendra Modi greeted the supporters and waved at the crowd. Prime Minister entered Nishan Public School and greeted the officials at the polling booth, stood in the queue to cast his vote. Shortly, PM Modi got his finger inked, participating in the festival of democracy. PM was welcomed by his brother, and after spending some time with him, he stepped out and greeted the supporters who had been waiting for hours to get a glimpse of PM. Prime Minister Narendra Modi lauded the Election Commission and people of Gujarat. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। And as Gujarat counts down to December 8, Prime Minister has risen the temperatures in battleground Gujarat. The Modi factor is undeniable. Bureau Report, Republic TV. Viewers, Modi chants reverberate in Gujarat, but Congress politics is on. They're calling the Prime Minister's walk a violation. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m.
Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Chair Visuals right now for Pakistan drone which has been shot down by the BSF in Amritsar, and this is not the first time Pakistan drones are being sent across the border again and again by Pakistan. And Gursimran is joining us live. Gursimran, now one more case of a drone being shot down by the BSF in Amritsar, and our forces acting fast once again to make sure a Pakistani drone which is being sent across the border is shot down and stopped in its tracks. भाई ये आवाज नहीं आ रही। Gursimran, can you hear me? Gursimran, if you can hear me, I just repeat my question to you. All our viewers can see the Pakistan drone which has been shot down with the BSF, and the drone is clearly on our screens. Not the first time Pakistan has sent drones. Multiple times this year Pakistan has sent drones across the border, Gursimran. Yes, this is another such attempt of Pakistani side to push in drones into the Indian territory, and this quadcopter has been brought down by the BSF. It is in the Amritsar sector where this Pakistani drone has been brought down, and what we are getting to know that late last night this drone tried to enter the Indian territory in the Rodawali Kala area that falls in the Amritsar sector of international border, and the BSF troops fired at this Pakistani drone. And later, when the searches were carried out in the area, they recovered a quadcopter drone with one packet of heroin. See, this is not a small packet of heroin. This seems to be a huge consignment of narcotics that was being pushed from Pakistan to Indian territory along the international border using a drone. Yesterday, we also saw that in the Taran there was a Pakistan down in the Fazilka sector. So time and again, the Pakistani drones being brought down. Right. Well, Gursimran, hold on for a second. We're getting some more breaking updates coming in at this point of time. Now, the Supreme Court has gone ahead and taken cognizance of the drug menace. The Supreme Court has pulled up the Punjab government this time. Viewers asking what is the police doing about this. Supreme Court has also warned the Punjab government and says clearly, curb the drug menace or the youth will be finished. Gursimran, we know for a while right now that the problem of drugs persists in Punjab. The Supreme Court, the Apex Court, taking note of that and clearly putting the message out right now. Why is the police not acting fast enough to curb the drug menace, Gursimran? Amandeep, can you hear me? I know Amandeep is joining us right now. Amandeep, Supreme Court making a very, very clear stance right now and asking the Punjab government, pulling out the Punjab government about drugs. Drug menace continues there in Punjab. Supreme Court taking note of it. Well, absolutely, Shivaji. The point is that Supreme Court has made certain kind of observation, quoting that every mohalla in the Punjab is having its own illegal bhatti. That is leading to making the illicit liquor. And in fact, now they have pulled up the Punjab government and seeking a report, a detailed report, in fact, on this. And even this is a very serious issue, just because Punjab is suffering from the drug menace since years. Not only now, since years, and they are reaching to no problem. Every second day, we are receiving the videos from several parts of the Punjab that people are hanging up after overdose of the drugs. And in fact, they are not in position in their own senses as well. And that all the videos, especially from the youth platforms, though Punjab police has also run a campaign against the drugs, but that was not fully materialized, and even the drug menace still is the issue in Punjab. So that is the reason. So now the Punjab government will file a detailed report that what all action is taking against those who are supplying the drugs and those who are consuming the drugs. And in fact, what is the present situation on the ground of Punjab regarding the drugs? Either they are able to de-escalate the issue, or the issue is still sustaining in the same ratio.
So now the Supreme Court has directly intervened into the issue, and it is a tough situation for the Punjab government as well. Right. Yes, Shivangi. Amardeep, hold on for a second. I'm being joined right now by our executive editor, legal, joining us, Ridham. This is a very, very important point which has been raised by the Supreme Court. Well, absolutely. Today, the top court of the country comes down very, very clearly on what's been spoken about in the drug menace case. The Supreme Court has said stern remarks being made. Youth will be finished otherwise in Punjab. So the Justice Shah has also said every mohalla there is a bhatti. What is the local police doing? They've asked questions. They've also said this recovery of penalty is not the option. How many FIRs are filed? Why is there no charge sheet? Are those people even being charged? So the Supreme Court, taking very stern note of what's happening in the drug menace in the state of Punjab, makes these observations. The bench of Justice Ravi Kumar and Justice Shah hearing a matter over the Punjab drug menace. Right. All right. Well, thank you so much, Ridham Bhardwaj, our executive editor, legal, for getting us all the top updates right now. Supreme Court has made a very, very big warning right now, saying that why had there been no charge sheet on drugs, pulling up the Punjab government on the drug menace which persists in Punjab. I think first we need to establish the facts very clearly. The European Union, between February 24th and 17th November, Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone Station. It's the final fight as voting is underway for the second phase of the Gujarat elections. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। Amid the Modi chants, PM casts his vote in Ahmedabad, lauds the Election Commission for conducting peaceful polls.
Congress to complain to the Election Commission over Prime Minister's walk before his vote, calls it a road show and hence a violation. Home Minister Amit Shah, along with his family members, casts his vote in Ahmedabad, appeals to first-time voters to step out. It's a prestige battle in Uttar Pradesh's Mainpuri. The seat left vacant after Mulayam Singh Yadav's demise is what people are vying for. And viewers, catch the biggest and most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team starting 5 p.m. Well, a very good afternoon, viewers. Second phase of polling is on right now. The voter turnout has soared from around 19% around 11 a.m. Now it is 34.74%. And Ankit is also joining us right now. Ankit, we have been seeing a lot of big political leaders today. We have seen Amit Shah voting today. We have seen PM Modi voting today as well. The Prime Minister urging everyone to come out and vote in large numbers, Ankit. And it's going to be a very, very significant election. The first phase we saw, which happened a few days ago. Now the second phase will also decide the political trajectory of a nation, as general elections are also coming very, very soon, Ankit. Yes, Shivangi, we are most certainly in the lead up. And I think what's helped in the phase 2 of the Gujarat elections is, like you mentioned, the senior leaders going out and voting. It doesn't get any bigger than the Prime Minister and the Home Minister on their home turf in the big cities in Gujarat, going out, voting, setting that example, and also the Prime Minister's mother going out and voting as well. It just tells people to go out and exercise their franchise. We've had a frenetic day of voting so far. There are about 3 hours to go before the polls close, and then we can bring you the exit poll. But let's take a look right now at what the various leaders have said and what they indicated as they went to the polls today, Shivangi. Right, so let's have a look at this report. At around 8:50 a.m., Prime Minister Narendra Modi's grand convoy left from Raj Bhavan in Gandhinagar. The convoy headed for Nishan Public School poll booth in Rani. Thousands lined up and cheered for the Prime Minister. Huge crowds were seen on both sides of the road outside PM's poll booth. And the cheers grew louder as the crowds caught the first glimpse of the Prime Minister's cavalcade arriving. Prime Minister Narendra Modi greeted the supporters and waved at the crowd. Prime Minister entered Nishan Public School and greeted the officials at the polling booth, stood in the queue to cast his vote. Shortly, PM Modi got his finger inked, participating in the festival of democracy. PM was welcomed by his brother, and after spending some time with him, he stepped out and greeted the supporters who had been waiting for hours to get a glimpse of PM. Prime Minister Narendra Modi lauded the Election Commission and people of Gujarat. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। And as Gujarat counts down to December 8, Prime Minister has risen the temperatures in battleground Gujarat. The Modi factor is undeniable. Bureau Report, Republic TV. So we just saw the Prime Minister voting earlier today, but a party that was watching very closely and appears to have taken an issue with everything he did today is the Congress, which wants to file a complaint with the Election Commission because he took a bit of a walk before he voted. They're saying that it was another road show which is not allowed as per the model code. Now, a person who has weighed in on that is West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Let's listen in now to what Mamata Banerjee had to say amidst this election taking place in Gujarat.
They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent per cent, that Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent per cent, that Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. Well, viewers, Mamata Banerjee is saying that special treatment being given to some people, and as a Congress is saying that there has been a violation of the Model Code of Conduct. Congress clearly on a back foot right now because Congress has been counting on anti-incumbency, but the BJP this time has fielded a lot of fresh faces. My colleague Priyanka has also been on the ground and she is filing this report. She has spoken to Dr. Yamal Vyas of the BJP. Let's listen in. Basically, first of all, I would like to say that the Congress has seen a huge defeat before it, and therefore they are now actually in panic, and that is why they are making this kind of complaints. Not only that, but the Congress has somehow always been anti Mr. Modi and anti Gujarat also, and when they see Mr. Modi's popularity of this kind, when people turn up on their terraces to see him, I think it's only a jealousy and probably dislike for Mr. Modi and Gujarat, which is making them make this kind of complaints. But are you saying then that there is no... Viewers, getting some breaking news at this point of time. Viewers, getting breaking news. Police seeking stringent law enforced religious conversions. The Supreme Court hearing has begun, viewers. Last week, the Gujarat government has filed an affidavit in the Supreme Court supporting steps to curb forced conversions. The government is calling for a national law to ban forced conversions. And of course, we are getting a lot of information as well on the Supreme Court hearing forced conversion plea. Now, this is happening right now as we speak as well, viewers. And this is, in fact, happening as we speak. As we speak, the Gujarat government also telling the Supreme Court that district magistrate is not for religious conversion a precautionary measure. It protects women and backward classes. So let's go across to Rhythm Bhardwaj, our executive editor, legal. Rhythm, women and backward classes are people, the section of society is very vulnerable to forced conversion. Supreme Court really putting ahead and putting out some statements there. Take our viewers through the significance of what's happening right now. The Supreme Court is hearing a plea filed by Ashwini Upadhyay, who is seeking measures to control forced religious conversion. This has caused a huge uproar with the Solicitor General in a 9-page affidavit for the central government telling the Supreme Court that they believe forced conversions is a grave matter. Cognizance needs to be taken. All the states will be filing their replies in the case. They have been pleaded. Earlier, Justice Shah's bench had very clearly made a statement. They believe this is a matter that can harm national security and democracy, and hence the security of the country is of immense importance. Therefore, action needs to be taken. Today in the courtroom, as we are speaking, Solicitor General did say we are getting information from the state. They've also given details of what Gujarat in a 28-page affidavit has said supporting a law on forced conversion. However, the bench said every time we ask for any information, it is said it's a serious matter. And therefore, the Supreme Court is trying to state that they want to quickly hear the matter and pass some sort of a law on this case. This will only happen once everybody has given out great details in the court. As of now, Justice Shah and Justice Ravi Kumar's bench hearing the matter
where the court has said we are going to take a look at what happened. Solicitor General did say that there are several ways of conversion. One is a change of heart, but it's the allurement, deception, fourth aspect which the court needs to decide on. So a high-octave hearing in the Supreme Court on the post-religious convergence case, where we are still seeing what the court will do. It's obvious that in one hearing they will not come out to an order, but a crystal clear hearing in which the Supreme Court means business, where they want post-religious conversions in the country to stop. Now, Rhythm, if you'll stay with us, another aspect is, of course, like you pointed out, last week it was the central government that has filed its affidavit. Now, are we looking at a potential for states also to be filing their responses, or will the centre collate their various laws, like the Solicitor General is referring to Gujarat's stringent law, is what we are getting to hear. So what is going to happen further? Are there other parties who are going to be involved seeking inputs? Ankit, good question, because what we are hoping for is that all the states will file replies in the Supreme Court in this case where they have been impleaded. Gujarat had also been impleaded, and Gujarat has filed a 28-page affidavit in the top court where they have very, very clearly stated they had a law in 2003, I believe, in which they had said post-religious conversion should go. It's 2003 or 2013. I'll recheck those facts. But clearly they said we have an act, and that act had also said post-religious conversion should go. Now we are waiting to see what and how soon this will happen. As that is also happening, the court has now been told by the Solicitor General in a 9-page affidavit for the central government that we have already passed a lot of, we've already said several states have already passed this law. So we have to see how soon will this law become a central law for the entire nation. The Supreme Court in one of the first hearings, I think in November, had stated that this is a matter of national security and democracy of the country, which is of immense importance. Keeping that in mind, they had stated we want to go ahead and quickly pass a law to ensure that post-religious conversions don't become the time of the day. As we are speaking, the Supreme Court hearing continues. The government of Gujarat had said in 2003 they had passed a law to stop religious conversions in the state. We're also hoping, Ankit, that the others also file similar applications and affidavits in the post-religious conversions case before the top court. The bench has said charity and social services are good things, but there should not be any wrong motive behind conversion, which frankly, we've done several shows on Republic TV as well. We've shown all across several villages and states that there is post-religious conversion, and the bench is absolutely against that. The central government also against it. Hopefully, once this hearing is concluded, we should have a law on post-religious conversions in India. Right. Rhythm, so right now there is no federal law on forced conversions. There's no national law, but also Supreme Court, and if you could tell our viewers as well, Rhythm. On that note, I think we will, of course, stay on the story. What we are learning so far is that Supreme Court on conversions pleads a serious matter. Earlier, Supreme Court had remarked that forced religious conversions is a threat to the independence and sovereignty of the country. Thank you, Rhythm, for joining us. Rhythm Bhardwaj, our Executive Editor Legal, getting a top updates as the hearing is happening right now. A couple of important points being made. Please seeking stringent law on forced religious conversions. The Supreme Court hearing has begun on that. Right now we are in Jammu, the Resident Commissioner office, where the Kashmiri Pundits are staging protest, and this protest is against the threats that have been issued by the terror group, the Resistance Front. The terror group has issued a list of 56 Kashmiri Pandit employees that are on their target. We'll try to speak to some of the Kashmiri Pandits, because this Kashmiri Pandit community has been on the target of the terror group for a long, and yesterday itself they have issued another threat to these Kashmiri Pandit employees. Time and again, day before yesterday when we spoke, you said that we have been demanding, but no heed is being paid to our demand. Absolutely, sir. You are quite right that we are demanding for right to live since May this year, but our demands are not being heard. In respect, the government has stopped our salaries.
giving a respite to our heroes. The government has stopped our salaries, and now a recent list of 57 employees of our community has been issued by TRF, and they are threatened to be killed. So this is the breach of security in respect of administration, and we demand the administration to take a quick action regarding our demands and relocate us to Jammu as soon as possible. So this is the Kashmiri Pandit community that have come here in the Relief Commissioner office demanding that don't rehabilitate us on the cost of our blood, don't orphanage our childs, and they are being punished because they are the nationalist voices. They say that the only solution they have is the relocation of the Kashmiri Pandit community, and this has been their demand for quite a while, that they are sitting on a protest for over 200 days, and the new threats from the terror groups have made a sense of fear among them. This has increased a sense of fear. Let's take a look at some of the top stories from across the nation now. Like you just saw, as the Lashkar released a Kashmiri Pandit hit list, the Kashmiri Pandit community are protesting in Jammu, demanding a transfer out of Kashmir. The Pandit employees staged protests in Jammu, demanding that they be transferred out of the region. 2 people have died as a truck collided with a car in Madhya Pradesh. Police immediately rushed to the spot as the locals informed them of the incident. Pro-Kannada activists staged a protest in Chinnamma Circle in Belgavi against the visit of Maharashtra ministers there. With the interstate border row still simmering, the Karnataka government has requested Maharashtra to not send its ministers to Belgavi tomorrow. A suo moto case has been registered in connection with painting walls with joint CFI at 9 places in Shivamogga. Searches are on for the accused is underway. PM Modi's brother Somabhai Modi got emotional as he talked about the Prime Minister who visited him earlier in the day. He said that people cannot ignore the kind of work the centre has done since 2014. सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट हैं। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते हैं। काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। Tensions prevailed in Chittoor, Andhra Pradesh, as the house of industrialist and Jan Sena leader B. Ramachandra Yadav was vandalized allegedly by the YSRCP supporters. Jana Sena leader has alleged large numbers of supporters came and attacked his house with stones, rods, sticks and other weapons. In a big development on the death anniversary of former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa, OPS has hinted to Republic about his intention to reunite with Edappadi Palaniswamy. OPS says that peace will prevail in the AIADMK only if they are reunited. Well, thousands gathered on streets to mock former CM and AIADMK leader Jayalalitha's 6th death anniversary. Sasikala too marches to the memorial. And we are also, viewers, getting news from the national capital where a 4-story building has collapsed in Shastri Nagar in North Delhi. Rescue operations are underway, we are told, in full swing. A day ahead of the 50th founding day of the AIADMK, Sasikala broke into tears as she paid tribute to former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa in Chennai. This was Sasikala's first visit to the memorial since she was released from the Parappana Agrahara prison in Bengaluru in January after serving a 4-year jail term in disproportionate assets case. Sasikala's last visit to the memorial was in 2017 before surrendering herself as a convict in the disproportionate assets case. She had then taken a vow by hitting the marble slabs of the memorial. Scores of party workers and supporters gathered at the memorial in Jayalalitha's memory.
as Jayalalithaa was being remembered on her 6th death anniversary by scores of party workers and supporters, rival AIADMK leaders too paid tribute separately. Bureau Report, Republic TV. Viewers, Farooq Abdullah was re-elected president of the National Conference for another term just a short while back, but he has made a controversial comment yet again. Here's the comment, just listen in very, very closely, viewers, which has been made by the National Conference leader. और सुनाओ, मैं वज़ीर आला, इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ। जो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा, जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी थी। और जब मैंने वहां पूछा यहाँ क्या हुआ, कहा यहाँ कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चला गया। गांव की तरफ पहुंचा तो एक वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी बीवी की दुकान। मैं बैठ गया, मैंने मुझे चाय का मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए? उन्होंने कहा इन लोगों ने हमें फौजी ने कहा खबरदार मशीन के पास आओगे हम तुम्हारी टांगें तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं खबरदार। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको भेजना होता है, लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिए। मैं हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखें। So, viewers, you just heard there, re-elected to the presidentship of the National Conference, Farooq Abdullah making a completely objectionable statement. He is recounting a story where he says that people told him that the polling stations were empty because the Indian army had made a threat, and then he counter-threatens the Indian army that there better not be anything of the like this time or there will be a massive storm. We've seen how Farooq Abdullah had first ruled himself out of contention for remaining the chief of the National Conference, but apparently the party wanted him and only him, and not even his son Omar Abdullah, who apparently has been rejected by the party, at least insofar as this election goes. And now after being re-elected, Farooq Abdullah has jumped straight into the attack, targeting the forces directly. Shivangi, what do you make of this statement that has come in a whirlwind series of events in Jammu and Kashmir insofar as the National Conference goes? Right, well, we are seeing another comment being made by Farooq Abdullah. This was the first time, Ankit, because Farooq Abdullah has sparked a row again and again as well. Couple of comments being made. This time he says that Doda voters were threatened by the army. Ankit, we are getting a guest as well on the phone line. We can take that. So we have former Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister Kavinder Gupta joining us. Mr. Kavinder Gupta, your response to this statement by Farooq Abdullah. अब क्यों याद आया? शायद इलेक्शन होने Mr. Gupta, can you hear me? लगता है कि yeah, I am speaking. Hello. Ji, continue. Yes, please. Continue, sir. नंबर एक तो फारूक अब्दुल्ला को अब याद क्यों आया इस वक्त? ये घटना 15 साल पहले या 20 साल पहले की ये सुना रही है। क्या कहना क्या चाहते हैं? दरअसल इनकी पार्टी आज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लोगों को अब विश्वास इनसे उठ गया है, तो उसका एक बहाना बना करके एक फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर रहता है वो यूनिफाइड कमांड का हेड रहता है, तो जब कोई सुरक्षा का काम होता है, बॉर्डर की सुरक्षा होती है, हालात लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, तब तो इनको आर्मी वाले याद आते हैं। इनको ये भी याद होना चाहिए कि 2014 के सैलाब से भी आप सभी लोगों ने सभी लोगों को इन्होंने ही बचाया था, आर्मी उस वक्त हमारी ने। लेकिन ये जो लोग अपना बलिदान देकर के काम करते हैं, उस प्रकार की भाषा बोलना उन पर ये सरासर शर्मनाक है, और मुझे लगता है इसे माफी मांगनी चाहिए आर्मी से।
और आर्मी के कारण से ही आज कश्मीर में यहाँ पर आतंकवाद खत्म हुआ है और उसके साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा हो रही है। तो फारूक अब्दुल्ला की ये फ्रस्ट्रेशन बताती है और खुद जो पार्टी का बेस खत्म हो गया उसके कारण से इस प्रकार की बातें क्या पड़ी। जी बिल्कुल। That's Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, hitting out at Farooq Abdullah and demanding that he apologize to the army for his statement that he has made right after being re-elected as the chief of the JKNC. Same Farooq Abdullah had earlier asked for China to intercede in the matter of Article 370. Now he's making threats and warnings against the Indian army and false allegations to boot. We are tracking this very closely, viewers. Let's also, in the meantime, listen in to some of the reactions as Gujarat went to the polls earlier today. अंतर के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। सरकार से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते, काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। Viewers, Gujarat is polling today in the second phase. Coming up on the other side as well, much more coming up. It's a prestige battle in UP's Mainpuri. The seat vacant after Mulayam Singh Yadav's demise. And then viewers catch the biggest and most accurate exit poll on Republic with India's #1 news team for these recently concluded elections in Gujarat and Himachal Pradesh today evening, starting 5 p.m. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है।
मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहां पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the 2 states. It's the final fight as voting is underway for the second phase of the Gujarat elections. Almost 35% voter turnout till 1 p.m. लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
Amid the Modi chants, PM casts his vote in Ahmedabad, lauds the Election Commission for conducting peaceful polls. Congress to complain to the Election Commission over Prime Minister's walk before he cast his vote, calls it a road show and hence a violation. Home Minister Amit Shah, along with his family, casts his vote in Ahmedabad, appeals to first-time voters to step out and vote. It's a prestige battle in Uttar Pradesh's Mainpuri. The seat that fell vacant after Mulayam Singh Yadav's demise is up for grabs. And viewers, catch the biggest and most accurate exit poll on Republic today evening with India's #1 news team. Viewers, getting some breaking news coming in at this point of time. Viewers, where there is a hearing which is happening on forced conversions. A lot of pleas being heard on forced conversions as well, viewers, at this point of time, where Supreme Court has directed government to file a detailed affidavit. This is a very, very big topic as well, because a lot of talk has been happening. The Supreme Court itself has been saying that the time has come right now to stop forced conversions. Ankit, this is a very, very important hearing happening right now. Absolutely, and from what we are given to understand, Shivangi, the Supreme Court has directed the centre to file a detailed affidavit to provide complete information on the laws made against conversion in various states. The Supreme Court will hear the matter on Monday. Let's listen in to what the applicant in this case, the petitioner Ashwini Upadhyay, had to say. ऑब्जर्वेशन ही बोलना है सर। रोल हमारा नवी नहीं कर रहे सर। आज धर्मांतरण में कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी की, क्या कहा कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है। जो कन्वर्जन है वो धोखे से हो रहा है, चाहे लालच दे के हो रहा है, बहुत सीरियस मैटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आज आपने अभी तक इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या आपने राज्यों से बात किया। तो सॉलिसिटर जनरल का कहना था उनको थोड़ा और टाइम चाहिए राज्यों से बात करने के लिए और फ्राइडे तक वो राज्यों से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्जन को रोकने के लिए क्या स्टेप लेने जा रहा है वो फ्राइडे तक सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। कुछ लोग आ गए थे, कुछ केरल से आए थे, कुछ तमिलनाडु से आए थे और देश के अलग अलग राज्यों से हमारी PIL का विरोध करने के लिए। वो कह रहे थे ये PIL मेंटेनेबल नहीं है, ये PIL डिसमिस होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि हम आपके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कोई बात नहीं होगी, पिटिशनर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी वो कन्वर्जन के ऊपर होगी। अगर आप कन्वर्जन का सपोर्ट करते हैं या कन्वर्जन का अपोज करते हैं, आप जो स्टैंड अपना लीजिए कन्वर्जन पे लीजिए, पिटिशनर के ऊपर या PIL की मेंटेनेबिलिटी पर कोई बात नहीं होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कह दिया है। फ्राइडे तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देंगे, मंडे को इस पे सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है उसका नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, लेकिन वो कानून पूरा ठीक नहीं है। धार्मिक भावना भड़काना, धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, क्योंकि IPC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं अलग से कानून बनाने की बजाय इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है उसी को बदला जाए, जिससे कि FIR दर्ज करना आसान हो जाएगी। स्पेशल एक्ट बनते हैं तो FIR ठीक से दर्ज नहीं होती। IPC में जब प्रोविजन होता है तो FIR आराम से दर्ज होती है। पुलिस के जो सिपाही होते हैं आराम से FIR दर्ज कर लेते हैं, या 100 नंबर पे कॉल करिए, 112 नंबर पे कॉल करिए तो आ भी जाते हैं। स्पेशल अगर एक्ट बनेगा तो पुलिस उसमें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसलिए हमने कहा है
आईपीसी का जो चैप्टर 15 है ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, उसी को अमेंड करके उसी में 2 नई धारा जोड़ दिया जाए, जिससे धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। आपकी एक इकलौती पिटीशन पड़ी थी, अचानक जब नोटिस हुआ उसके बाद उसके विरोध में कई पिटीशंस आ गई, आखिर वो विरोध किस आधार पे कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए इतनी सारी पीआईएल आई हैं और उसपे बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं, ऐसे वकील खड़े हो रहे हैं जो एक बार में सुनवाई का 10 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा था, अगर कन्वर्जन बंद हो जाएगा तो उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। चाहे वो खाड़ी देशों से हजारों करोड़ रुपए आता है हवाला के जरिए, या वेस्ट कंट्रीज से जो एफसीआरए के जरिए आता है हजारों करोड़, वो आ रहा है कन्वर्जन के लिए। जब इंडियन पिनल कोड में कठोर कानून बन जाएगा, लोग 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो सारे लोग परेशान हैं, वही सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आके मेरी पीएल का विरोध कर रहे हैं। That was Ashwini Upadhyay, the petitioner in this matter, which the Supreme Court is taking very seriously. The Supreme Court has asked the centre to now file a detailed affidavit with details of what all the various states are doing, the laws and steps that they have taken to curb this threat of forced conversions, and it needs to submit this affidavit to the Supreme Court before the next hearing. Meanwhile, from what Ashwini Upadhyay said while speaking to the media after the hearing concluded today, it appears that the court has said that there would not be a discussion on the maintainability or on what anyone has to say about the petitioner. The matter that will be taken up is forced conversions. He also mentioned how there needs to be a law under the Indian Penal Code because as things stand at the moment, there is not enough reason for the police to go after someone who is conducting forced conversions. We'll try and get Ridham Anand Bharadwaj, our Executive Editor Law and Governance, to join and share more details on this, to elaborate on what we can expect next and what's gone on in court. But clearly this is a topic that the Supreme Court is hearing with all seriousness. Last week the centre had filed an affidavit, a 9-page affidavit, in which it had spelt out that it views religious conversions that are forced in a very strict manner. It views them as a big threat, and it had also listed the various states that have taken law into their own hands with regards to framing acts against this. We'll track this story very, very closely, viewers. It's a big story. The centre is to file an affidavit in the Supreme Court. Viewers, it's the second and final phase of the Gujarat Assembly elections today. Just a couple of hours remain before the polling booths close. And one of the first people to go and cast their vote today was the Prime Minister, who voted in Ahmedabad. Now, while he was there voting, the cameras got a good glimpse at him. He posed for a couple of photos. But the Congress appears to have taken an issue with this. The Congress says that this constitutes a model code of conduct violation, and hence now it has filed a complaint, the copy of which is now on your screens, with the Election Commission. The Congress party is of the opinion that the Prime Minister, with his walk before he cast his vote, violated the model code of conduct. They have equated it to holding a roadshow, which is no longer allowed after the final polling concludes, the final campaigning concludes just a few days before the polls take place. And the Congress in this manner has filed a complaint with the Election Commission. We've also heard a number of people who have spoken about this matter, like the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. We also have Priyanka now joining us from Gujarat. Priyanka, the Congress taking the matter to the Election Commission, what are they hopeful of? What are they asking for in this complaint against the Prime Minister's walk before his voting? Well, Ankit, a couple of points that have been mentioned in this complaint copy, and I'll read that out for our viewers as well. Since, of course, the first and foremost, the point of that complaint is about the Prime Minister carrying out a quote-unquote roadshow. Now, apparently, it says that there was several BJP flags as well that had been put up near the polling booth, which was 500 feet near the polling booth itself. And they have also said that why did the Prime Minister, in fact, was
walking in that entire route where the BJP flags had also been put forward. That is one point of the complaint. This is in Gujarati, so I'm just quickly translating for our viewers to understand as well. We're putting out that copy of the complaint exclusively accessed on your screens right now. And of course, the other is talking about several attacks that have been made on Congress candidates that are the allegations that are being leveled by the Congress party. Apart from that, there are also another point of this entire complaint where they say in Ahmedabad, in Ghatlodiya, in Vejalpur, several such areas, there are hoardings that have been put forward. There are BJP flags that have been put up, and that's why they're saying that this is another violation. So that's point number 3. And of course, point number 4, they're talking about Bapu Nagar booth, and they're talking about Bapu Nagar booth. That's another area in Ahmedabad. And they have said that in that one person in fact was trying to create ruckus there, and that was supposedly a BJP person as well. Apart from that, of course, these are some of the 4 complaints that are being made by the Congress party in the Election Commission. The first and foremost being the most important one that we see, that the Congress party is claiming that this is the Prime Minister who has violated the Model Code of Conduct by walking. So essentially, even in this complaint, they have stated that he was walking in that entire route where there were BJP flags that had been put forward, and that is what they have taken an objection to. And of course, this is an entire complaint copy that has also been sent to the Election Commission, and we're being told that there was a verbal complaint that has also been made to the Election Commission. There is a delegation, in fact, that had gone to the Election Commission, and even last night we were being told that the Congress party has confirmed that there was a delegation that had gone to flag off this entire event of the Prime Minister, is what the Congress is claiming. And they have also said that particularly about the Prime Minister's going to cast his vote, they have particularly stated that he was in fact walking. He was walking, and that has been mentioned in the complaint. And they have also stated that he in fact got out of the cavalcade and he was walking 500 feet near the polling booth, is something that they have mentioned by themselves. So this really also brings us to the question about why the Congress party has in fact been raising this kind of a question over the Prime Minister merely just going and walking and voting as any normal voter would. And that is what the Congress in fact is now claiming was a violation of the MCC, Ankit. Absolutely. Priyanka, clearly the Congress party has a number of grumbles which it has put into this letter, which it has filed as a complaint with the Election Commission, most notably being the Prime Minister's walk before he voted. A person who appears to be backing the Congress on this, at least in spirit, is the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Let's listen in to what she made of this controversy over the Prime Minister's walk before his vote. They are the special people. It is the Election Commission duty. As a political party, we abide by the Election Commission. But what Supreme Court said, I do agree, 100%. That Election Commission also, there should be some system for nomination of the Election Commission and all this. He did a road show today. Election day road show is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. Basically, first of all, I would like to say that the Congress has seen a huge defeat before it, and therefore they are now actually in panic, and that is why they are making this kind of complaints. Not only that, but the Congress has somehow always been anti Mr. Modi and anti-Gujarat also. And when they see Mr. Modi's popularity of this kind, when people turn up on their terraces to see him, I think it's only a jealousy and probably dislike for Mr. Modi and Gujarat, which is making them make this kind of complaints. But are you saying then that there is no basis to this, because they are saying that this is an MCC violation, that he was very close to the polling booth and that he was carrying out a roadshow? Is there any kind of response that we will also be looking at in terms of talking to the Election Commission about? Our legal team will be responding to that, whatever the complaint they have made. But I can only say that the Prime Minister is under SPD security, and his security is of first priority for the whole nation.
So I don't think that just because Congress makes complaints, his security can be compromised. And that is the prime requirement of the day. And I'm sure his security personnel have been following the rules to the T. So you're saying that this is just posturing as of now that the Congress is doing, that there's no basis for it? Is that what the BJP's official stand is? Yes, the Congress has seen a huge defeat and that is why they are complaining. I don't see any other valid reason for the complaint. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, Mega controversy amid the Mainpuri bypolls. Leveling big allegations, SP Chief Akhilesh Yadav claimed that Uttar Pradesh police are not allowing voters to cast vote. क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। Meanwhile, SP leaders staged protests outside Uttar Pradesh Assembly. Bureau Report, Republic TV. Here's getting some breaking updates coming in, and this time from West Bengal. Congress protesting against the state government and the Bengal governor. The visuals of that on the screen as well, viewers. This is what's happening there. We are seeing a lot of presence of the police as well as a protest. A protest is happening there. Now, this is a Congress protest against the state government and Bengal governor in Kolkata.
in Kolkata. We can see a lot of posters as well, there on your screens as the Congress continues to protest against the state government and the Bengal governor as well in Kolkata as well. A big crowd has gathered outside there in Kolkata. They are demanding answers from the state government. This protest is happening near Raj Bhavan in Kolkata. People coming out in large numbers as well, demanding answers from the state government. And like we are telling you that there seems to be heavy police presence on the streets of Kolkata as well as a Congress protesting against the state government and also the Bengal governor in Kolkata. We are seeing some people also being detained into police buses right now. On that note, let's take a very, very short break, viewers. Very shortly, you will not want to miss the most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team. Stay tuned to Republic TV. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, mass comm, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। All right, viewers, getting some breaking updates coming in. Let's continue with the breaking news, which has come right from West Bengal. Visuals you can see on your screen, where we can see a lot of anger on the roads of Kolkata, where the Congress is protesting against the state government and the Bengal governor in Kolkata. We're getting some top updates coming in. Heavy police presence also being seen there on the streets of Kolkata. People on the roads holding placards and posters and protesting against the state government. The state government in Kolkata already, the Mamata Banerjee-led government in Kolkata already on a back foot when it comes to some corruption scandals and also cases of scams in the recruitment of teachers. Let's go ahead to Ishan Dev. Ishan Dev, take us through what is happening on the streets of Kolkata as we speak.
Shivangi, the Congress supporters and the Congress leadership in Kolkata, they are demonstrating in front of the Raj Bhavan, and as they started demonstrating there, protesting the capturing of Jhalda municipality in Purulia district, police action has been initiated, and all the Congress supporters and leaders who were leading the demonstration there, they have been taken into custody. They have been removed from the place. They have been removed from in front of the gate of Raj Bhavan. And you know that in the municipal election in West Bengal, which took place just 6 months back, around 6 months back, at that time Congress got only municipality, that was Jhalda. Jhalda municipality has got 12 seats, and out of 12 Congress got 5 seats, TMC got 5 seats, and 2 other were independent councillors. But one of the Congress councillors whose name was Topun Kandu, he was shot dead before the formation of the municipal board, and thus TMC took hold of the board. And after that, when Congress brought a no confidence motion, and the TMC chairperson was defeated in that no confidence motion, that now again TMC has planted another person from another councillor of TMC fold as a chairperson, which Congress is saying as undemocratic, and they are now protesting in front of the Raj Bhavan right now against that. Shivangi. All right, thank you, Ashandeep, for getting us all the details. Ashandeep, live from a Republic Bangla newsroom as dramatic protests are happening. Several Congress workers have also been detained. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years. With top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment in. The mandate from the 2 states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m.
It's a 50.51% voter turnout recorded till 3 p.m. in the second phase of polling in the state of Gujarat. As election in Gujarat enters the final hours, will the voting pick up? The Prime Minister casts his vote in Ahmedabad after a walk to the polling booth amidst Modi chants. The Congress now complains to the Election Commission over Prime Minister and Home Minister's walk outside the polling booth. The BJP begins its preparations for 2024. Prime Minister meets with office bearers at the party headquarters. And we are building up to the biggest and the most accurate exit polls on Republic with India's #1 news team. A very good afternoon. You're with us here on Republic, and this is our non-stop rolling coverage of the big elections. The big elections in Gujarat. The biggest news team is getting to you minute-by-minute updates. We are also, remember, building up to that big exit poll with roundup starting at 6 this evening. And that is where you will see, Abhishek and Rhythm, the first numbers that really come out, because people have been asking Abhishek that, which party has the edge. So I think, Rhythm, by the evening today, you will have clarity about what happens in Gujarat, not just Gujarat, also Himachal. So we here at Republic, remember, are doing all the number crunching for you. And it's been a day of non-stop controversies. We've seen the Prime Minister, we've seen the Home Minister in Ahmedabad casting their ballot. Yep. And Abhishek, as always, you have controversy, the Congress running to the Election Commission, complaining, saying that this was a violation of the Model Code of Conduct. But Abhishek, what is it clearly that we'll be looking at in the next few hours, building up to that big coverage with Arnab starting at 6? For one, Deepthi, the pace of polling has picked up in the last couple of hours. In fact, there were reports that suggested that in the second phase of polling also in Gujarat, like in the first phase, the polling was a little down as compared to 2017. But it seems that some makeup has happened, a makeover has happened over the last couple of hours, and polling has become brisk, and we are told that it has crossed 50% mark by 3 p.m., which is a good number, which means that insofar as the second phase of polling is concerned, it might report a little more voting as compared to the first phase. Though I'm still not sure whether this would break the last assembly polling mark in 2017 mark. So that is one. The second, of course, the exit poll numbers that we are bringing, Deepthi, and viewers need to know this. We have our own survey, our own team deployed by way of PMark that are going to bring us the numbers. Plus, of course, two more exit polls, the Metris and the Chanakya. All these three polls we are getting. So poll of polls, and of course our own work done by the team of PMark, who got all the 5 states right last time that they did with us. So I think in that sense, the viewers should look up to the next couple of hours led by Arnab Goswami and of course you, me and Rhythm from the studios, and the exit poll numbers start 6:30 p.m. Yes, I do see Harsha, Madhurima and Priyanka. Remember, our best eyes and ears on the ground, because this is an election that matters. Remember, not just for the BJP, Rhythm. This is also a relevance test for the Congress party. This is also about the AIADMK party, whether it actually will be able to make any dent, if it will be able to eat into, Congress's vote. Is that going to be that X factor? No one knows. And before we actually go back to our team of reporters, we'll also have a panel of guests that just joins us, Rhythm. But what is it that you would be looking forward in these numbers? Most good evening, Deepthi, Abhishek, and all our reporters who are joining us, because today we are going to first, Deepthi, be looking at the numbers. Let's just tell our viewers the Republic PM ARQ exit poll is the only poll, Abhishek, also that got the 5 state elections spot on in every state. As Gujarat is completing voting, we are going to stay tuned to all the closest numbers and the real results that will be coming on Republic. And as we wait for that 6 p.m. mark before those opinion poll
results are out. I also want to go across to our reporters. Madhurima, if I can first come to you, since morning you've been tracking leaders. What is the sense you are getting? How much voting has happened where you are? What are the issues you've been speaking to people that they've been highlighting today? Well, Rhythm, I have been reporting from Roundup where the Prime Minister had come and exercised his right to vote. It was indeed, an electric morning. People, even in the chilly temperature early, had poured out to have a glimpse of the Prime Minister and, of course, to cast their vote as well. But the issues here, the first being the trust factor. They are all deep in trust with the Prime Minister. When I spoke about the freebies and the Delhi model that they want to bring in, the Kejriwal government, the Kejriwal and the Aam Aadmi Party want to bring in, I got very unique answers that they do not want the Shaheen Bagh model, but they are happy with the Gujarat model. That was, that was the Prime Minister's idea when he was the Chief Minister of Gujarat. So this is what I have been hearing the entire day. The kind of reception the Prime Minister received was unprecedented, where people from nearby vicinities also poured in, making it very difficult for the security officials as well, because they wanted to had a glimpse of, see a glimpse of their Prime Minister and their own leader, like Priyanka has been highlighting. They relate to him as Narendra Bhai over here in Gujarat, and that is what we saw, Rhythm. Also the issues, one being Hindutva, UCC, and then the security in Gujarat. The women are feeling very safe, and development. As far as when we spoke about freebies, they said that Gujarati believe in earning what they enjoy. This is the sentiment that we're getting from Madhurima, hold on to your thoughts. Where people, we are getting a breaking news development. The Congress party continues to be at it, and Jignesh Mewani, via Twitter, I believe, as of now, that in his constituency, he's contesting from Vadgam, which is a reserved SC seat in North Gujarat. He has said that in Fatehpur village, according to him, BJP workers effectively have captured a booth. They are indulging in voting, fake voting. And this is being reported by Jignesh Mewani of the Congress party. He's a Congress candidate from Vadgam constituency in Banaskantha in North Gujarat, and he is saying that in the Fatehpur village in his constituency, there are BJP workers who have gotten inside a booth, and this is from some back window. Remember, Congress party earlier in the day objected to Prime Minister walking up to the polling booth and walking out, Rhythm. And so it seems a case of sour grapes, is it? That the Congress party keeps finding issues. But of course, this is, if an official complaint is made, the Election Commission should be looking into it. Jignesh Mewani for now has tagged the Election Commission official Twitter handle, as can be seen from the screen. The tweet is up there on the screen, and we have guests joining us to take this story forward. Also, viewers, just to let you know, this is not just about Gujarat. Deepti, we are going to get Himachal numbers as well. Yes. And that's going to be important. Politically significant states, both Rhythm, you know, Gujarat is Prime Minister's home state, as also, of course, of the Home Minister. And Himachal happens to be his Karm Bhumi in many ways. He was in charge of Himachal Pradesh in late 90s. So that personal connect is there. Important states politically for the Prime Minister, for the BJP. And of course, as politics stand in India today, for the fortunes of the Congress party as well going forward. Yes, so let's say good evening to our panel of guests. Sandeep Ghosh is an author and political commentator, along with Dr. Sandeep Shastri, who is the Vice Chancellor at the Jagran Lake City University, Bhopal. He's also a political analyst. Pankaj Sharma is a senior journalist. He's a former media advisor to the Chief Minister Kamal Nath. Ravi Srivastava is also a political analyst, and he bats for the Aam Aadmi Party often. Good evening to all of you, gentlemen. I want to take my first question with Pankaj. Pankaj, why is the Congress already spooked?
bang in the middle of the second phase of polling, you say the Prime Minister walking to cast his ballot is a violation of the Model Code of Conduct. Everyone can understand the meaning of his walking. I mean, it was practically a road show. Prime Minister flouting all EC norms. Desperation is clearly seen. So if Congress is raising this with the Election Commission, Congress has a right to raise these points, because never ever any Prime Minister held any road show while polling is going on. So this is something very surprising. Where is the road show? I didn't see any banners. I didn't see any flags. The Prime Minister, got off his car and he is walking. Let's try and put out those images, I think, once for our viewers, Pankaj. And let me see if Ravi actually agrees with you. Ravi, will you join the cause with the Congress party on that? Prime Minister is a serial offender as far as such kind of optics is concerned. Earlier elections, if you recall, he was holding the BJP insignia on his shirt and kurta, and he was walking down the road after voting. It's nothing but a simple emotional blackmailing or an emotional connect with the voters, just to show that what he has done. I think he should not have done it, because he is the Prime Minister of the country. He can do it more gracefully and what you call as a proper way. It is not required to make a kind of gestures and all that to the public standing by. They are there just to greet him and all. But I think this kind of creating optics is absolutely unfair and unwarranted. He has been doing it not once, and then before that going to mother's place, seeking her blessings and all. I want to take one comment with Sandeep Ghosh and Dr. Shastri, and then we'll go to our reporters. Ravi, just about yesterday, when we had the MCD polls, you had Arvind Kejriwal along with his family, his mother and father walking to the polling booth. Is that a roadshow, Sandeep? Is that a roadshow? Is that a violation of the Model Code of Conduct? He said, "Kattar imandar logo ko Delhi vote degi." Is that a violation of the MCC? I'm not so sure. Why can't the Prime Minister walk? Is there a necessity that he has to drive up to the polling booth or be taken there? I think it's entirely up to him to walk to the polling booth just like any other voter. And he is not really campaigning while walking. He is not, as alleged by Ravi, wearing any BJP insignia. And so what's wrong? And if he's attracting optics, which he would do in any case. Okay, our Prime Minister today is of a very different order, has a different order of not just popularity, but adulation he attracts from people. In whichever way he will go, from the public, from people like you in the media, media cameras, everybody will follow him. They don't have a problem with media camera in a different situation, though. That's not for voting. Following a Rahul Gandhi on the Yatra. So Mr. Modi, whatever he does, it will happen. And you can't translate that into a roadshow. But you just can't call it a roadshow. Okay, we're just going to go through breaking news right now. We come back to our guests as well as our reporters. The breaking news that's coming in as we are speaking, there's a controversy that's now erupted during the second phase of polling. Congress candidate makes a wild charge on a Wi-Fi name. He objects to the Wi-Fi name Namo. Congress candidate says Namo Wi-Fi can be used for hacking. The administration, of course, has rubbished this Congress candidates claim, who says Wi-Fi to give, and they've said Wi-Fi is there to give connectivity to schools. As this breaking news is coming in, let me also go across to our reporters. But before that, Abhishek, you also, another controversy. Now Congress once again having an issue with the Wi-Fi name Namo. Well, this is coming in from Valsad in South Gujarat, and Raju Marcha is the Congress candidate there, Rhythm. And these are supporters of Raju Marcha or, Congress workers there. Now look at this place. This is close to the strong room where the EVMs are kept in a college. And there is police arrangement there, security there. But then these people are looking for this Wi-Fi which says Namo. And they are saying, oh, this is Narendra Modi Wi-Fi and this can hack the EVMs. For God's sake, they have gone to the collector and the collector has clarified saying that, come on, this is essentially a government project
for providing Wi-Fi to the, public schools in those far-flung forest tribal areas. It's called Namo because Narendra Modi is from Gujarat and this is a Gujarat government project. But then the Congress party really showing jitters rhythm, like in the case of Jignesh Mewani, so in this case perhaps. That is true. So why don't we take one quick question also with Dr. Sandeep Shastri, and then we can continue with all our reporters. And do remember, a lot of breaking updates are also flashing on the bottom of your screens. The election is still on. Remember, the second phase of polling in Gujarat is still on. We are looking at a 50% turnout till 3. Dr. Shastri, why don't you weigh in on this? There has been a considerable amount of debate on the percentage of voting turnout, sir, that if the turnout is low, does it help the BJP? Is it against the incumbent? I mean, is there any kind of an ossified trend that this voting percentage might be able to allude to? There is no empirical evidence as to whether a high voter turnout or a low voter turnout impacts adversely on the ruling party or the opposition. I think there is no empirical evidence on that. Last time when in the first round of Gujarat voting there was a lower turnout, expression was made of the fact that it could be a result of two factors. You have had the BJP continuously in power for a long time now. So it could be an element of complacency that the BJP is in power, it will continue in power. So there could have been an element of complacency. Some may even argue that it could be an element of disappointment, that there was slight anti-incumbency and that came in. From the perspective of the opposition, it's very clear that low voter turnout is not a good sign, because it means that you have not been able to inspire your supporters to come out and vote. And I think the critical question is, those who voted and those who did not vote, did it signify any important way of looking at electoral choices? So I would say there is no empirical evidence on this, but I would weigh in on these two factors. Low voter turnout in an election where one party has been in power for long could be a sign of complacency. Low voter turnout when a party has been in power for long is a clear indication that the opposition has not been able to get its message across to a large segment of voters that they were looking to hope to bring to the polling booth. Can I make a comment, please? Abhishek. Yeah, actually, I would say, Ravi Srivastava, hold on. Congress party only makes news on the day of polling. Why not during the campaign? That's my question. That would be my question to you. But let me clarify. Conventional psephology says that if there is a lower voter turnout, that typically goes against the incumbent. So in that sense, I think, truth be told, the BJP would be slightly worried. In fact, I can tell you that they were worried after the first phase of polling, and that's why you saw repeated requests and appeals coming in from the leadership that people should come out and vote, particularly the urban areas which are supposedly the strongholds of the party, though of course it has spread quite evenly now insofar as Gujarat is concerned. But the second phase of polling also does not seem to be bringing in good news, so to say, in terms of increase in numbers. There has been a pickup that has happened over the last couple of hours, but if you look at the average, it's just about 1% more than the first phase of polling, and in that sense, not very comforting perhaps for the BJP. Maybe the BJP representative here, or someone for them who's speaking for them can answer that question. Yes, I'm just going to come back with that question to our guests and reporters. Let's quickly break. Republic has accessed the first complaint copy. This, remember, is going to the Election Commission. This is the Congress there saying that the Election Commission needs to step in. You will see that going up on our screens in just a bit. In fact, it is in Gujarati. So why don't, I request Abhishek to just read through it. This is on the Prime Minister, remember earlier, who was walking to cast his ballot. Now, what the Congress here maintains is that this is a violation of the Model Code of Conduct. You see that copy on the right of your screens. On the left, you're looking at images, Abhishek, of the moment where the Prime Minister arrived to cast his vote, and this, according to the Congress, is a roadshow. Well, I can go through the complaint copy, and it's in Gujarati, so if you want, I can read it for you. The subject says, Congress Party's various complaints and action
thereof. This is written to the Chief Election Officer of Gujarat, who obviously is part of the Election Commission of India. And this is written by Yogesh Rawani, who is chairman of the legal cell of the Gujarat unit of the Congress party. And it says that Honorable Prime Minister, when he went for his voting in the morning, he got down about 500 feet before the polling station and walked. And he was taking greetings from those people who were standing on both the sides of the road. And we are writing on that, in that connection. Okay. And then, of course, other complaints. So it's an application or request made to the Election Commission to look into 4 subjects. The first one, of course, being Prime Minister's, what the Congress party alleges now to be a roadshow. And it says that Prime Minister, you know, Ravi Srivastava, Prime Minister gets down from his car and walks like a commoner to the polling booth. And if you do it, it's okay. If the Prime Minister does it, it becomes a roadshow. What's this problem with the Congress party? Or Pankaj Sharma, if you could, let's go to Pankaj Sharma on that. I will Pankaj, if you can answer this, what's the problem if the Prime Minister walks? What's your problem? Abhishek, what did you expect? Should he have taken his convoy right into the polling booth? He had to get down before and walk up to there. Okay, one by one. There is a show of a kind of a road show over there. Yeah, please, Mr. Pankaj, you carry on. No, I was saying that he can certainly walk, but why he chose to walk on the polling day early in the morning at 8 o'clock, 8:15? He could have walked at 4:30 in the afternoon, but since he knows that morning walks happen in the morning only, na Baba? No. It was not a morning walk. He was walking to the polling station. He was going there to poll his vote. He could have gone at 4:30 as well. So, he deliberately did it because he knew that, it would be this walk or say road show or street show, whatever, would be shown by all the media across the country. And it will certainly impact the second phase of the poll in Gujarat. He knew it. He knows all these things. He's a very seasoned politician. He has been doing all this for a long time. So it was not a simple, innocent walk. Abhishek, can I respond on your? So there is a simple and innocent walk. What is an innocent walk? We don't understand. What is a not so innocent walk? What is a complicated and not so innocent walk? I mean, we would like to understand. Pankaj Mishra. Ravi Srivastava, can you take that question from Pankaj Mishra? Yeah, I'm telling you that this was purposeful and deliberate. He could have taken his vehicle close to the polling booth and got down and made a vote over there. Purposeful walks are signs of purposeful walk. Ravi Srivastava would be a sign of good leader. A good leader walks a purposeful walk. What's complicated and not so innocent about a purposeful walk? You would want the leader of the country to be having a purposeful walk. Rahul Gandhi is having a purposeful walk. That it was a purposeful walk. He's been walking for 50 days now. This is no leadership in it. It's just a deliberate and purposeful roadshow by walking 500 Interesting, Abhishek is the Congress and the AAP here is fighting. They are fighting for the number 2 position. One second, gentlemen, Ravi and Pankaj, you both are fighting for the number 2 position. I just want to, before you go to Sandeep, let's get in Dr. Sandeep. Your perception. What can AAP really do? The very fact, Ravi, Dr. Shastri hasn't spoken. Let's please listen to him. He has a lot of experience. He reads the numbers very, very carefully, unlike a lot of us here. So, Dr. Shastri, why don't you tell me, is AAP just a bubble that you've seen largely on the social media? Because even in a constituency like Surat, you haven't seen an unusually high turnout that possibly could be indicative of a lot of change, in the favor of the Aam Aadmi Party. Because Surat, again, is one constituency, Dr. Shastri, that the Aam Aadmi Party has largely focused on. If you look at, of course, we will get to know what the exit poll says in a moment. But if you look at studies which were done prior to the campaign starting, and I was part of one of those studies,
one indication was very clear that the AAP was having some signals of support, some elements of support coming in. They were proving to be a major challenge to the Congress party in the campaign. A lot of the AAP vote was coming from the Congress party. And what our governance study showed was that AAP was not drawing so much from the BJP, but was drawing from the Congress. And therefore, it was more a fight for the second spot rather than a real challenge. Dr. To the Shastri. Okay, Dr. Shastri, we have to continue. We have to continue this conversation. We are going to have this for a couple of hours. We have to take a short break and then we're coming back. Just stay on. All the guests stay on, and of course, viewers, please stay put with us on Republic Network. We are back right after a short break. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. All right, we are back with our conversation that we are having as a build-up to the exit polls. Remember the Election Commission deadlines, according to which, or guidelines, in fact, according to which, you can come out with an exit poll only half an hour after polling has ended.
In Gujarat, it's 8 a.m. to 5 p.m. But then for bypolls in various parts of the country, the time is 6 p.m. So we cannot get the numbers out before 6:30 p.m. And that's why the short wait, viewers, insofar as exit poll numbers for Gujarat and of course Himachal go. But then coming back to the conversation we were having, Rhythm, looking at these voting percentages, yes, seem to be a little less than last assembly elections, even as second phase perhaps polling just a little more than first phase. You think this is going to have an impact, and if you could take it to these someone from the BJP to respond. Absolutely. If I could actually go across to Sandeep Ghosh, who's joining us. Sandeep Ghosh, one question that Abhishek is also asking about the low voter turnout and whether it will have an impact. And of course, these elections that are being seen as a precursor to the general election, the BJP is fought it as if there's no tomorrow, but the Congress largely absent, the Aam Aadmi Party, the new kid on the block. How are you looking at this entire situation? And of course, an important key question on the low voter turnout. First of all, let me even clarify, I'm not a BJP spokesperson, nor do I hold a brief for them. I come here as an observer and, for analysis and commentary. My view is that goes without saying that, if it's a lower voter turnout, it's usually a matter of concern for the incumbent party. And I think BJP has been worried about its voters, its committed voters, being a bit lazy in these elections, almost assuming that BJP is going to win. So why make the effort to go to the polling booth? And that's why even Narendra Modi in his speeches has been exhorting the voters to come out and vote. But the point is, what is the kind of difference which you will have with the second and third party? My sense is this time the voting, the difference in terms of last time when you were seeing you're putting out the vote shares, it was 49.1 with 41.1. This time if Aam Aadmi Party is able to get a larger share, the difference between the first and the second party is bound to increase. And therefore a 3% drop or a marginal drop in the turnout is not really going to be materially affect the BJP. So overall, I don't think it's a matter of worry which will make you see a rapid change in your, major change in the outcome. But certainly it's a factor to be considered, and I think BJP has been conscious about it, and that's why today they have been again. You found even union ministers tweeting, asking people to come out and vote. Yeah, I think Sandeep Ghosh, you are putting it very mildly, very politely that BJP. What do you say? BJP is concerned. Yeah, BJP is concerned, but rural areas in 2017, Dr. Shastri had a 72% turnout. No, Sandeep, you used even a milder version. He did not say BJP is concerned. And he qualified, he said, I'm not a BJP spokesperson. Yeah, he's not. Which is obviously right. Course, But, so, Ravi, before I come to you, Dr. Shastri, how should you look at a voter turnout when the first phase, like I said, in a constituency like Surat, you did not see an unusually high turnout. Today, in a lot of urban, cities, including Ahmedabad, a lot of constituencies there haven't seen a very, very high turnout. Now, the BJP could say, listen, because a lot of our voter, they already know that we are going to be party number one, we are winning. They might be complacent, they might not, be stepping out. And that's the reason why you've seen the Prime Minister, Abhishek, taking part in those huge road shows, wanting people to come out, the Election Commission speaking about it. On the other side, what about the AAP and the Congress? The very fact now that from a bipolar to a triangular contest is what we are looking at, Dr. Shastri, and this low voter turnout. How do you read these two things together? I would endorse the point that my namesake panelist made a while ago and reiterate 2 points that I have been consistently making ever since I have spoken about the first round of voting. Yes, it is a matter of alarm for the ruling party that having been in power for so long, they are not able to sustain the voter turnout. As I said, it could be an element of complacency. Our party is winning, therefore why go?
So that complacency could be something which could be staring the ruling party in the face with this lower turnout. But I will not go by a single factor explanation. I think the opposition too needs to be worried, because higher voter turnout also is a reflection of the fact that there is a change mood. There is a mood for change. And if the opposition has not been able to galvanize the vote, that is often reflected in a lower voter turnout. And the last point, I think clearly Gujarat may be moving from a bipolar contest to a tripolar contest, with the AAP entering the fray. And I think here again, what appears to be happening is the AAP has split the Congress vote and not taken away much from the BJP vote, which therefore would work to the advantage of the BJP. Absolutely. And as you're making this point, I also want to get in Pankaj Sharma here. Mr. Sharma, how are you looking at the massive number of rallies that have been done by the BJP, by the Prime Minister, by the entire leadership, the Home Minister, and comparing it to how Rahul Gandhi made a very notional, token, one-day visit to Gujarat, 0 days in Himachal? Where does this leave the Congress party and its campaign in both the states? See, Rahul Gandhi was busy in his Bharat Jodo Yatra, so he couldn't spare time for Himachal and Gujarat the way he should have. And BJP, of course, was aware. Shocking action. He's joined the VHP. He's become a sant. You know, he's joined the VHP, become a sant. Least bothered about worldly matters like electoral politics, right? So he is not worried about electoral politics the way Narendra Bhai Modi and Amit Bhai Shah are worried. You know, they are on a different plank, and Rahul Gandhi is on a different plank. Politics and political party for him is not only a vehicle to win elections somehow. So I mean, if he has this but Pankaj, kind then of why philosophy, are you running to the election commission? Why are you complaining? If you've accepted, no, 1 second, you need to be reasonable about this, Ravi. This is the problem, because the Congress is plain simple confused. They do not know what to say, how to respond, Ravi. Isn't that the problem? Look at the BJP, they know they have to win every election, so you will see them out. Look at the Aam Aadmi Party, you see their hunger, you know, whether that was Gujarat, whether that was now even in the MCD polls. You've seen a muted campaign by the Congress, both in Gujarat and in the MCD polls, Ravi. And then they say, listen, Owaisi vote kaat raha hai. Then they will say, election commission inke saath mila hua hai. I mean, they have to decide whether they want to fight elections or not. Ravi. Yeah. See, first of all, I don't hold any brief for Congress for that matter. But I think it was Honorable Prime Minister who acknowledged that the Congress is working underground in Gujarat. Congress was not vocal, Congress was not making a show of it, but they were silently working in Gujarat, and Prime Minister said that you should be scared of it. Now, as far as the BJP is concerned, everything is at stake in Gujarat. Everything. I said their Prime Minister is at stake in Gujarat. So if something goes wrong in Gujarat, if somehow their vote share goes down, the candidates lose their constituencies, it is going to reflect very seriously on the BJP. But they've been in power in Gujarat for 27 long years. In spite of that, Ravi. That is what, Ravi, 27 long years. And Sandeep, why don't you come in on this? That is what exactly I am saying. Is it the Congress, is it the Aam Aadmi Party, or is it the BJP? Sandeep, according to you, who has more at stake? Aam Aadmi Party has nothing to lose. Sandeep Ghosh, I'm going to come back to you, Ravi. Aam Aadmi Party has nothing to lose, okay? When Arvind Kejriwal says 3 days ago that मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ that we are coming to power, he has obviously a lot to lose. Otherwise, he's, the kind of bravado he has shown. What BJP is out there to prove is not only that even after 27 years they can win the state, but this time they would like to win with such a bang that, they want to make AAP redundant to say Gujarat is not Punjab. And Congress, in any case, is marginalized. They would like to beat it to a stage from where it will have a great difficulty in coming back in Gujarat. And that is what they are going to, I think, flaunt and demonstrate in the whole country.
And forget, it's true that Congress, if they get whatever votes, will be getting it for the candidates in the local constituency, the anti-incumbency against specific candidates. And it will be a credit to them over there. But forget Rahul Gandhi. Who else in Congress campaigned across the state? They gave a huge list of their VIP campaigners. And ultimately, none of these people even turned up. Mallikarjun Kharge went to a couple of places, scored a few self-goals and came back. So what was Congress really doing out there? These are questions which will be asked, and I think it is important what is at stake for Mr. Modi if he is going to hoist the flag of BJP so high that the rest of the year now you will find he is focusing not in the election but in G20 and various other agenda to raise the entire level of his campaigning for 2024. Oh, yes. And we are obviously not forgetting what's going to be happening in Himachal. Himachal again is where Priyanka Gandhi, Pankaj and Ravi has gone all out. She has been the face of the Congress's campaign. And in case you see the Congress losing Himachal, does this mean this is a vote of no confidence in Priyanka? Pankaj will absolutely say no. So what we'll do is we'll quickly head into a break. On the other side, we are putting our focus on Himachal. And a quick reminder, 6:30 is where you will see the very first numbers on Republic with Arnab and the entire team. December 8 with Arnab is the hashtag. Don't go anywhere. Back on the other side with lots more. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Last post to post, live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and
Welcome back. You continue to be with the election headquarters along with Deepthi and Abhishek and me. Our guests continue to be with us, Sandeep Ghosh, Dr. Sandeep Shastri, Pankaj Sharma and Ravi Srivastava. But first I go across to breaking news that's just coming in. Getting a statement from the Congress campaigner and ex-Gujarat Chief Minister Shankar Singh Waghela using the OBC appeasement on voting day. He said Congress CM is likely from the OBC community. This is in the second phase. He says this. It says 27-year BJP rule is set to change. Playing the appeasement card, Waghela says the Chief Minister will be from the OBC community. Abhishek, first I ask you for your first comments on this remark by former Gujarat Chief Minister. Well, Shankar Singh Waghela is effectively living a retired life. He just about managed to get a ticket for his son from Bayad in central Gujarat. And the fact of the matter is the Congress party, because it was so much into OBC politics with its calm theory, it lost the moorings in Gujarat with almost the entire upper caste segment led by the Patidars, the Patels, shifting in the mid-80s to early 90s, bringing BJP to power. So I think, I don't know what Shankar Singh Waghela is intending, but he is definitely not intending to help the Congress party. And I remember, Rhythm, the Congress actually made this announcement, I think 48 hours ago. They said, and I think Ashok Gehlot was present there, Pankaj, why don't you tell us this? You know, you point fingers at other opposition parties for playing the casteist card. You say, आप तो election ही नहीं खेल रहे हैं. Arvind Kejriwal will say, हम राजनीति बदलने आए हैं. Also, just to add, the longest serving OBC Chief Minister of Gujarat has been Narendra Modi of the BJP. Pankaj. If some individual, see, he is an individual. If some individual wants to express his opinion or sentiments, he can well do it. You know, he did Congress President Mallikarjun Kharge announce anything today? Or did the Supreme Leader of the party, Rahul Gandhi, announce something today? No. So, I mean, Shankar Singh Waghela's statement should not be taken, so seriously that way that he's trying to influence the election on the polling day. It's not like that. Yeah, you can take it seriously at your own expense, Pankaj Sharma. He has a right to express. It was an innocent statement, you will say. Like it was an innocent walk. Like the innocent quickly, walk. Sandeep, quickly. Then we need to head into a break. Quickly, Sandeep. Just 10 seconds. I don't know whether it's a Freudian slip. Pankaj said the supreme leader of the party, Rahul Gandhi. This is a new term used by everybody from Congress. I wanted to underscore that. No, I am not from Congress. I am not from Congress. We have to yes, he is that. the supreme leader of his party. We have to discuss that. Deepthi, if you want to take a short break, otherwise we can discuss it now. Yes, Pankaj, we'll head into a quick break. On the other side, we'll go back to Dr. Sandeep Shastri and Ravi, and we'll also be looking at Himachal. And as always, remember, Republic is going to be your election news headquarters, decoding every number, putting out the first numbers, and getting you the big picture on the other side of this very quick break. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा, शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired
to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus, post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra, and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty. You with Election 2022 live coverage on your election headquarters, Republic TV. Just a short while from now, the first opinion polls are going to, the exit polls are going to be out to really get a sense of the unmissable numbers that are going to come in. But first, we stay across with the controversy that we were with. Our guests continue to be with us. Sandeep Ghosh, Dr. Sandeep Shastri, Ravi Srivastav is also with us. Ravi, if I can actually ask you the question that we asked earlier, it's Vaghela's comment is 27-year BJP rule is set to change. And like Abhishek says, as he plays the appeasement card, he forgets that Prime Minister Modi himself is the biggest OBC chief minister that Gujarat has had. I think it's a democracy of Congress where leaders are allowed to speak their own mind. They make comments about this political situation, and there is no gag order kind of a thing. I have not heard any, passing comments or significant comments coming from the BJP leaders, because I think they follow only a code of conduct as far as political statements are concerned. So I don't read much into it. Yes, Mr. Modi himself, being a OBC, was 13 years, he's the chief minister in Gujarat. So I think I don't see any kind of appeasement politics at this age when there are 10 minutes to go for the closure of the polling. So it's just a passing comments and does not need much of the reading between it. Ravi, what about when Arvind Kejriwal actually said that you should have pictures of Lord Ganesh and Goddess Lakshmi on currency notes? What was that, Ravi? That's not an appeasement politics anyway. That's a simple comment. I haven't even used that word. What was that? No, it was an innocent comment. It has gone out. Otherwise, other channel is calling up. I'll tell them to stop it, please. Okay, I think we've just lost that connection also with him. Dr. Shastri, apologies, but after this break, we will, come to you, and I'm going to be looking at what's happening in Himachal, because is that just going to be about BJP and the Congress? Will the Congress really, many say, has a chance, Abhishek, in the state of Himachal? Would that be possible? What do the numbers till now indicate? On the other side of this quick break, we are back with our non-stop rolling coverage. December 8 with Arnab is the hashtag. And the first numbers is what you will see on Republic starting 6:30 this evening. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m.
Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya where there were clashes. मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic P-Mark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila.
All right, we are back with our conversation as a build-up to the exit polls for Gujarat and Himachal. We have been discussing Gujarat for an hour almost now. Let me also introduce our guests this hour. And we have Binay Singh, political analyst, I believe is joined. Live from Delhi. I think we're waiting for Binay Singh to join. PKD Nambiar, political analyst, live from Delhi. And let me just read the exact list of our guests. Binay Singh is going to join us in a while. PKD Nambiar, political analyst, joins us live from Delhi. Saurabh Shah, senior journalist, live from Mumbai. And he said yes. And we have Dr. Irsan Trivedi, political analyst, leans towards the Aam Aadmi Party, joining us live from Ahmedabad, where voting is still happening. And Tanvi Pruthi, political analyst, joins us live from Delhi. As I said, we have been discussing Gujarat for almost an hour now. Deepti, so shall we move to Himachal, Rhythm? Yes. If you can begin that Himachal conversation and take it forward. Absolutely. So as we're going to Himachal, my first question then to all the guests who are joining us right now, I first come across to Saurabh Shah, senior journalist, joining us live from Mumbai. Saurabh, we've seen in the last elections in Himachal, BJP backed 44 seats out of 68. Congress managed to secure only 21 seats. Of course, we know that since 1985, no government has come back to power again. It keeps alternating between the BJP and the Congress. What do you think will work in favor of both the parties this time as they're going for election results in Himachal? According to me, all the voters across all the states of India, they know the benefits of double engine Sarkar. This is not just a slogan, but whatever the government is in Delhi, you have to have that government in your state. So the voters have understood that whatever Modi is doing in Delhi across the nation will be done in his own state also. And that is the final result. It will show in Himachal, it will show everywhere, including Gujarat. Okay, I think, Deepti, the argument is that if Modi magic is working in Gujarat, it would evenly work in Himachal, obviously. So that was in response to Rhythm's query as to whether this time also Himachal would follow the pattern it has since 1985 of changing the governments, or as the BJP slogan suggests, that don't change the government but change the tradition. You take it forward. Abhishek, that has been the pitch of the BJP, but I don't know what will happen in Himachal, because again, PKD, this is a state where the winning margins are actually sometimes very, very narrow. Smaller constituencies, largely a bipolar contest between the BJP and the Congress. The AAP goes there, but then, the AAP is completely vanished from the state of Himachal. What is your assessment of what possibly could work either ways? Priyanka Gandhi has been the face of the campaign. Rajiv Shukla has provided a lot of support to the Congress here. That's why he was fronted. On the other side, issues like the one rank, one pension, issues of the old pension scheme. When it comes to a lot of government employees, issues of mehengai, issues of jobs, PKD, do you think that could just get tricky for the BJP here? Well, one thing I must tell you, that there is a slight change, it is true that in the Himalayan, the Himachal was always been changing the government every 5 years. They always look for another government to come in. But there is a trend which has been a new trend. If you really look at it from the Kerala, for an example, this is the same trend that they never re-elected another government. Uttarakhand was also not an exception. But if both these places, in the last 2-3 years, we have seen that the people wanted to have continuity. Unless and until there is a strong anti-incumbency against the existing government. In this case, in Himachal, I am not saying that it is the perfect government. It could have been done much more, and it may have an option to do more and more. But yes, it's as the first time in the history of Himachal as a state, the amount of infrastructure development, the aims coming in, a large amount of development, and then in the speed in which this development is been taking place is very visible, and every Himachali can feel that. All those people, and so tourism has got a major, one of the major financial attraction for that particular state.
And it has all helped Himachal to do much better than what it was always doing. You need to understand that Himachal was always more of like a sarkari job, was one of the major attraction. Today, it has got 2 or 3 major industrial hubs within Himachal. So I think you should not be surprised if what the about the BJP comes bypolls? back What in about the power bypolls of with a last thumping year? majority Because of is that going to be a trailer? Let me take that question to Tanvi also. PKD, she hasn't spoken. Let's take it to Tanvi. Then we'll get in Saurabh, and perhaps we'll have Binay Singh also with us. Tanvi, what is your assessment of the Hill state? You're a very tiny state, but again, the question to be asked is, can the Congress even win this tiny state? On the other side, can the BJP beat, anti-incumbency here? 2 points I would like to make, and my point number 1, I think what Congress effectively was fighting in both Himachal and Gujarat was not just the mighty BJP, which has a lot of resources, both human and material, but the rising tide of Aam Aadmi Party. So, for Congress to be in this election was not easy at all. And I think they have successfully sort of covered the Aam Aadmi Party wave in both Himachal and Gujarat. Of course, the exit polls will be a testament to what I'm saying, but let's wait for an hour or so. And my point number 2, for fighting BJP in Himachal, the kind of campaign that Mr. Modi has done, that clearly proves that there was this dilemma that Himachal was not Anki Dodi state for them. And that double engine sarkar notion was not working with the people. Because if everything, like my friend Mr. Nambia just mentioned, if things were so smooth for the people of Himachal to realize. It did not work in Haryana. Yeah, if everything was so easy, then the Congress has perfectly made the state election, relied on the state campaign, particularly on the state issues, and not make it, a Rahul versus Modi fight or a Priyanka versus Modi fight. So that has worked for the benefit of the Congress in the Himachal state. And I think that they will bear the result, because you just mentioned the number of seats for the Congress party in the 2017 election. But look at the vote share. BJP won these seats by a vote share of 48%, while Congress managed to get a vote share of 41%. 41% is a very good vote share. And I think that they will be able to cover it up this time and win better seats than BJP. So I'm very hopeful for the state of Himachal. I'm very happy with the kind of campaign, the state issue-based campaign that Congress has run against the BJP. And I'm really hopeful for, that they will form the government this time. And the double engine sarkar notion will be put to rest. Would there be a natural, as a natural corollary, Tanvi, if the Congress really wins in Himachal, the only state where Rahul Gandhi has not gone once, Rhythm, you can take on that. That's right. One rally, one day in Gujarat, I think zero in Himachal. How do you put it to Tanvi? And Tanvi, the question, I'll just add to Abhishek's question, is this a realistic proportional estimate? A state Rahul Gandhi, Himachal, does not go to, possible, inversely, the only one that is proportional to give Congress a rise? So we were not discussing Gujarat, so I did not mention, a lot about Gujarat. I was sticking to Himachal, but I want to remain my stance, and I said that the election was not about Rahul versus Modi or what Rahul can do for the people of Himachal. The question was what the state leadership is there doing. The people are eventually going to vote for the state government. They're electing their chief minister. They're not electing the future prime minister. And I think that's what the Congress did best. Let's rely on the state issue. Let's rely on the state leadership. Let them then why go to Gujarat? Battle. I think it was a wise choice. Then why go to Gujarat? How many rallies did he do in Gujarat? Please answer, Niranjan. How many? 1, 2, 3? They were not many. I think Rahul Gandhi did a wise choice of staying out of the state elections. Otherwise, this would have been a Modi versus Rahul. I think that is true. That is true. The reason being that Rahul Gandhi not attending these elections, as Abhishek said, would have been going in the favor of Congress. Congress understood that Rahul Gandhi is a disaster when it comes to election or a phase of in elections for the Congress. There is no other reason for a top leader. May I ask you, who is the topmost leader of Congress today? Who is the topmost leader, or who calls the bucks in Congress?
It is Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi or the Sonia Gandhi, only these three people. Now, despite that part, the BJP has got one tall leader as its brand ambassador, the face the country is looking at as Narendra Modi. But PKD, PKD and Tanvi, the truth is also, Abhishek, in rhythm, that Rahul Gandhi is the biggest asset for the BJP. And Charu will vouch for it. Before I go back to Saurabh and to Dr. Trivedi, Charu Pragya, you will vouch for it. That is why you had every BJP neta saying Rahul Gandhi क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको बुलाइए रैली करने के लिए. Because you will wait for him to, make some kind of a comment. You will create a controversy. Isn't that true, Charu? And Charu, then you would also say, hey Ram. नहीं, Siya Ram. Need BJP to help him create a controversy. I think he's got this unusual knack and talent for it. Every time he holds a mic in his hand, he manages to create a controversy. And I really don't understand why he doesn't do better research or get better speech writers. That being said, it is very clear why Rahul Gandhi did not come to Gujarat. And the reason is that he knew that he's not going to turn around any votes or gain more of a following while he's in Gujarat. That has been clear for a very long time. So for a political party which claims it is doing a whole Bharat Jodo Yatra across the length and breadth of our beautiful country, and he's doing it for political reasons, to not touch upon both the poll-bound states, it's not just weird, it is unbelievable. That is not the way politics is done, and there is no shame in getting down on ground and working hard and meeting people. I don't know why Mr. Gandhi thinks he's above all that. In my party, the junior-most Karyakarta will rub shoulders with the senior-most leaders and work around the clock to ensure our vision for the future is explained to the people and a report card of the past is presented to the people. That is our job. We are supposed to do that. Why does Mr. Gandhi shy away from doing it? Is it because he thinks that even if he attempts... All right, Charu, hold on to your thoughts. We'll come back to the discussion. But then a breaking news development coming in. That's huge jump has been reported in voter turnout post-afternoon, and it now stands at 65% by 5 p.m. That's a big one. Remember, in first phase of polling in Gujarat, the voter turnout got stuck at 61% by 5 p.m. and by the time the final tally came, it was 63%. Now it's 65% by 5 p.m., which means you add a couple of points more and it's going to go to 67%. It's still about 3 or 4% less than 2017 rhythm. But then brisk polling happening in the second half of the day, at least so far as the second phase of polling is concerned in Gujarat. Absolutely, that becomes very crucial. I also want to get in now Dr. Irsan Trivedi, political analyst, who's also joining us live from Ahmedabad. How are you looking at this voter turnout, Dr. Trivedi? Because this is clearly an indication that people have come out to vote. We've also seen in Gujarat massive number of rallies by the Prime Minister, the Home Minister, the entire leadership in the BJP. How do you think this will work out? Is this going to be a triangular fight this year, according to you? See, in the last election was of Hajj. That means Hardik, Alpesh and Jignesh, HAJ. And this election is fought on based of Ram. That is Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal and Narendra Modi, sir. So I think what I can feel is that the turnout. The first phase was little bit on the lower side. That 6% voting was less. And that was, I was just thinking as a political analyst, towards this, the people who are somewhat, dissatisfied from BJP, the supporters of BJP who didn't get tickets, they might have stopped their supporters to vote on particular that, but second phase election, second phase voting, which is showing around 65% right now and may increase up to 67, 68. So I think it will turn out to be, especially this is a city area where BJP is holding a strong hold. Of course, here they will give a very good fight. For the Congress. I'm thinking that if the Congress is losing roughly around 8 to 10% of the vote share, then it will be a trouble of it, because it is a fight for their sustainability, their availability. Because in 2017, they got almost many MLAs, but out of them 17 MLAs went into BJP part, and this is a battle where Aam Aadmi Party will create a wonder factor. How many seats, Dr. Trivedi, are you giving to the Aam Aadmi Party in Gujarat? Very briefly. What's the number? Arvind Kejriwal is famously sitting on every channel giving, numbers. He's saying Bhavishya Vani hai, isko yaad rakhiyega. As per Election Commission of India,
I mean, exit poll, they have mentioned that not to disclose before 5:30. So I think I should hold to that particular segment, that I should not अच्छा, speak तो आप भी about पर्ची पर लिख कर रख लीजिए. आप भी पर्ची पर लिख कर रख लीजिए. 6:30 बजे के बाद आपसे भी आपका नंबर पूछेंगे. But you know, on that note, before we go back, मैं बता दूं. अच्छा, चारू wants to speak on behalf of the. एक दूसरे का बता दो. Ehsan can tell about the BJP and Charu can tell about the Aam Aadmi Party. Okay, PKD is saying 0. So you know what we'll do is truce. Truce right now. Truce right now. It's not. We are not taking numbers like this here. But what we'll do is that this election season, you know, ladies and gentlemen, you've seen tons of controversies. Controversy after controversy, whether it's the Aam Aadmi Party, whether it's the BJP, or whether it is the Congress. And you see this, Abhishek and Rhythm, almost in every election season. The latest being what you heard from the Congress Party today. The Prime Minister goes to cast his vote. He is walking, and you will hear the BJP saying this was just the Prime Minister doing a simple walk. But the Congress sees red. The Congress has reported this now to the Election Commission. They say EVMs में गड़बड़ है, slow voting हो रही है. So do these controversies really help to, you know, rake up numbers as far as the parties go? We don't know anything about that yet, but this is just a sneak peek into the many controversies we've seen this election season. As Gujarat witnesses the second and final phase of polling today, insult politics to cash for ticket claims. The Gujarat election season witnessed it all. From the uniform civil code issue, एक ऐतिहासिक फैसला है. मुझे दुख है कि विपक्ष के लोग सभी समाज को, सभी नागरिकों को एक समान कानून का हक मिलने से क्यों रोकना चाहते हैं. तो यूसीसी का मैं शुरू से खिलाफ रहा हूं. हमने जस्टिस चौहान साहब जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनको सामने लिख कर दिया कि आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है. बीजेपी यूसीसी की बात इसलिए कर रही है कि वो भारत के मुसलमानों का कल्चर खत्म करना चाहती है. to big assertions on building anti-radicalization cells. देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, प्रोएक्टिव एक्शन है और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी एक्शन है. बहुत अच्छा निर्णय लिया है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने. एक बार यहाँ पर सेल चालू हो जाएगा, बहुत सारे राज्य भी इसको स्टडी करके अपने अपने यहाँ लाएंगे. लेकिन सर, इस पर अभी से विपक्ष राजनीति करने लगा है. वो ठीक है, उनका काम है, वो करे, जनता को निर्णय करना. To facing charges of cash for tickets. सर्वे में आने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे पता था कि सर्वे रिपोर्ट दिल्ली से किया गया था, 25-25 लाख रुपए खर्च के ये रिपोर्ट्स किया गया था, तो सारे पैसे की बर्बादी है, बस लेन देन का व्यापार ही चल रहा है. To all out insult politics. आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो. अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? And to controversial videos of AAP leaders insulting Swami Narayana. વસ્તુ ઉપર આપણે માનવી છે, છતાં આપણને કોઈ કહે તો આપણને તકલીફો થાય છે. સાચું થઈ જાય. એટલે આ બધી બાબતોનો નિષેધ કરવો જરૂરી છે. હું નિષેધ કરું છું કે આ લોકો ખોટા છે. A slew of issues dominated the narrative. It's been a controversy-ridden campaign, but who will emerge on the top despite it all remains to be seen on December 8th. Bureau Report, Republic TV. Yes, so December the 8th, remember that's the date, Abhishek and Rhythm, that we've been eagerly waiting for even before the elections began, you know, because many said that a lot in this election actually just depends on how far is the BJP willing to go. Will the BJP, you know, break its own record in the state of Gujarat? What about the hill state of Himachal? And I'm sure all our guests have an opinion on that. But what we'll do, ladies and gentlemen, is quickly head into a quick break.
Remember, it's close to about 5:20. Polling has now closed in the state of Gujarat, and we are now focusing on the exit poll number. Sharp at 6:30, Arnab and the entire team is going to be bringing you those numbers. Non-stop live coverage continues after this very quick break. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है गुला। कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीम लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbala's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbala says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. Welcome back. Elections 2022. That's our non-stop rolling coverage. And as always, we at Republic believe that every election rhythm has a lot of important implications. There's going to be that big national picture. Yes. The story is not just about the BJP, ladies and gentlemen, because Modi is the factor in the state of Gujarat, but also about the AIADMK Party. Is the AIADMK Party that X factor in the state of Gujarat that possibly could change the politics in the state? Can it actually dent the BJP's chances? The BJP, remember, has been in the state of Gujarat for 27 long years. On the other side,
What about the Congress party? Remember, the Congress party, Abhishek, is fighting for its relevance. Rahul Gandhi right now is on a Bharat Jodo Yatra, but what about his own party? And the absence of Rahul Gandhi from Gujarat, from Himachal, is that a new model that the Congress is using? Will that work? We do not know. I think Abhishek quickly wants to make a point, then we'll go back to our guests. I'm afraid if the Congress leaders at the state level really want it that way, because I know for a fact, for example, in Gujarat, there have been candidates of the Congress party this election who have told the state leadership, please don't come. Forget about Rahul Gandhi, even you don't come. We will handle it locally. I think we are more confident of managing things on our own. So I think that's becoming the model for the Congress party, unfortunately, where the top leadership is not very relevant. And that's something which I think the Congress representative here or someone who's speaking on their behalf have to explain. Is that really acceptable to the top leadership that their cadres, their second rung or third rung actually don't miss them? And, you know, Saura, why don't you come in on this? You're a senior journalist. Is there a difference in how the BJP will approach an election versus the Congress? The BJP will go to national issues. You know, we've seen much of that in Himachal. We've seen much of that also in Gujarat. Now, what the Congress has attempted to do, minus Rahul and minus, much of Priyanka, I think Priyanka's rallies were also cancelled the last minute in the state of Gujarat. But is this a hyper-local model that the Congress now is wanting to work with? Do you think in today's day and time that could really find resonance with the voters? Let me be very clear that there was no triangular contest in Gujarat. AAP was just a media-made nuisance. The leaders of AAP, some Italia or some Isudan, they are going to lose their seat, candidacy. If they win, if they can save their deposit, it will be a very big moral victory for them. You were asking about how many seats AAP would get. I would say single digit, and that too a very lower single digit, which means anything between 1 to 5 seats at the most. BJP is not competing with AAP, neither it is competing with Congress. BJP is competing with itself. They want to increase their seats from 127 to any number. And I think that it would be more than 149. 149 was a record of Madhav Singh Solanki when he was a chief minister in 85. Yes. And that also 149 seats Gujarat Congress got in Gujarat because of the sympathy factor of Indira Gandhi's assassination. But here, just on the only one point, and that is progress. Everybody has seen Gujarat's progress in these 27 years. It is pro-incumbency. It is not, and it is just a media-made or Congress-made hype that it will be anti-incumbency. You go to any village of Gujarat, you go to any city of Gujarat, you drive on any road, the 27 years legacy is getting more and more votes to the Gujarat BJP. Okay. So if you're saying that, then I also go across to Tanvi Prithi, political analyst, also joining us from the capital. Tanvi, this is the kind of situation that we are seeing, that the BJP will win. They're saying it's no secret. It's about how much the margin is going to be. That is largely being debated. So is this going to be a margin that we think of 150, or do we think it's going to be 115? I remember in last time in 2017 exit polls, all pollsters predicted that BJP will get more than 120 seats, 120 to 150, and they were stuck at 110. So even this time also, I am very confident that Congress will maintain its vote share, its seating pattern intact. And I agree with the panelist who just spoke before me. Sir very rightly said that in Gujarat, Aam Aadmi Party they have no space, and it was just a media made, it was actually a fragmentation of the Indian media, and there was no presence on the ground. So I think that the anti-Indian... But Tanvi, it's easy to, I think, put the blame on the media. For some time, if you remember, the narrative that was pushed in the initial few days, and Charu, I'll get you on this, but then first Dr. Ihsan Trivedi,
the narrative that the Aam Aadmi Party brought in is about schools, it's about education, it's about healthcare, and then we actually did see a lot of push by the BJP also on those very basic issues of education and health. Until you had the Aam Aadmi Party and the tons of alleged scams that tumbled out in the national capital, Dr. Trivedi, but those are also issues that you will have to answer. Because, what happened is that many say the Aam Aadmi Party peaked too early. And then you had no answers to these scams and these revelations that were made in the national capital. See, first of all, I'm so happy that BJP and Congress, they are together for oh my God, yes, you are right and you are right. And Aam Aadmi Party will get this much less seat or will not get, or the deposits will be lost or something. I'm so happy that BJP's Congress is now, they are showing their true, togetherness. So I'm, okay, all the best for you. And second thing, yes, Aam Aadmi Party did affect, did actually affect BJP campaign. Here BJP was, they are just telling them, okay, 2002, all the riots now, and since then we are not seeing any riots and all that. But what about the police grade? Police pay grade. They were not raised until and unless Arvind Kejriwal here made a press conference and suddenly BJP realized, oh my God, this is like, we should have done. But what about your education model scam? What about your labor scam? What about the liquor scam? Don't you think that the voters realize that they cannot trust you, Dr. Trivedi? That's the reason why today everyone on the panel agrees that the Aam Aadmi Party was just a creation of the social media. Did they mention Manish Sisodia's name in it? So it's a creation of BJP social media. It's a creation but that does of not BJP mean that, IT cell. That does not mean that he's not going to be charged. They tried to run a trial on media and social media before actually went to the court. Charu. So it's all well and good to defend all this, but I want to make some things clear. The first plank of Bharatiya Janata Party has been development. We are the ones who say Sabka Saath, Sabka Vikas. So Vikas has been the basic plank on which BJP has been working since Modi ji has taken over, not just as a national leader, but while he was in the state of Gujarat as well. So for another, I did not interrupt you, even though I disagree with every single word out of your mouth. This is not my style of debating, and I will request the anchors to moderate and ensure he doesn't speak in between. If he does, I will speak non-stop when he's talking. Okay. No, then you need to learn some politeness, and maybe you should take a break till you learn politeness and come back on television. So, subsequent political parties, when they talk of development, you're teaching me. Okay, please, I'm sorry, Deepthi. If this man does not have basic etiquette for a debate, I refuse to talk one second, no. The shoot and scoot politics has been a hallmark of the Aam Aadmi Party. I think if you want to ask questions of others, please be willing to listen to criticism. There will be questions that will be asked of you. One second, Dr. Trivedi, Charu did not interrupt when you were making a point. Please extend her the same courtesy. Listen to her. Yes, Charu. Yeah, so a lot of political parties after that, and most especially Aam Aadmi Party, is trying to take a leaf out of BJP's book. And if you see these similarities in a very calculative manner, Deepthi, you will see them too. So when Modi ji talks of Vikas, they think they can talk about schools and hospitals and get away with not delivering on any of those fronts. But we'll come to that. Have you noticed posters of Kejriwal holding the Tiranga in his hand? Now all these things are very, very new. They have just creeped into Aam Aadmi Party style of politics recently. But mere hearsay from other things, mere propaganda and posting pictures everywhere or promoting work that they have not done either in schools or hospitals is not going to work anymore, because the fact of the matter is that the educated and the smart people of India can see through their talk now. When we ask an RTI query and we say how many new hospitals or hospital beds were added, or when we ask how many new schools did you open, or how much money did you actually spend on the education system, the answer that comes through these RTI queries is dismal. It is actually dismal. So when they want to sell the Delhi model in Gujarat, people in Gujarat already know that 1/3 of the schools don't even have a principal. Half the schools don't even teach science.
So that does not encourage the people of Gujarat to support a lying political party like Aam Aadmi Party. And adding to that, the very recent scams that have surfaced, the liquor scam, the jail minister sitting in jail scam, getting a champi from a rapist, all these things actually show the true face of Aam Aadmi Party. So they might say free का हम पानी दे रहे हैं, लेकिन आपकी कॉलोनी में तो टैंकर आ रहे हैं, तो बबल तो वहीं पर बर्स्ट हो गया. So Aam Aadmi Party is actually not a contender on ground in Gujarat. The only place where they feel that they are a contender is when they sit on a national debate or when they are posting something on social media. On ground in Gujarat, their presence is nil, and I can vouch for this because I was in Gujarat and I have seen their non-campaign. All right, Binay, we are just awaiting for Arnab to join in any time now, and then we take it to the next level. But Binay, since you joined, you have not spoken, I believe. We want to understand. We have been discussing little lower than expected voter turnout in Gujarat, despite the very high voltage campaign that the BJP, the incumbent ruling party, ran in the state. Also, this triangular contest thing in Gujarat, my own understanding is it is not. More likely, it's more a bipolar contest between the Congress and the Aam Aadmi Party instead of a triangular one including the BJP, because BJP by far remains much ahead of the other two parties. You think that this lower voter turnout is going to have some consequence for the BJP's margins? Abhishek, I don't think it is a bipolar or triangular fight. It is a one-sided, it is not even a fight. It is a one-sided victory going to be for BJP. But for one thing, I am very happy, Abhishek, that in the second phase, the voter turnout is a bit high. And thanks to the Election Commission, they have appealed. Thanks to our Prime Minister, the Home Minister also said in the morning that we must take it like a festival. And we saw the incumbent Chief Minister of Gujarat. He came like he is celebrating a wedding ceremony. So, when it comes to low voting turnout, as a citizen, I feel betrayed. You must go to the booths, you must vote for the ruling party or for some other party. If you are not satisfied with anyone, you go for the nota. You have the third option. But the lower voter turnout, it is not good for the democracy, and for such a democracy which has come after a lot of pain. And I think voting is the first step. You march on the road of democracy. This is the first step you take. It is the beauty of this democracy. It is our right and we must exercise the right. So, it is not a triangular fight. It is not a bipolar fight. It is a one-sided victory going to be for BJP. And BJP is going to have a historical massive win this time in Gujarat. Okay. Historical massive. But the BJP will create a all right, Binay says that there is no contest. Yes, Binay says the BJP is winning a landslide in Gujarat. Charu is obviously beaming right now. But is that what the exit poll numbers will indicate? Very, very shortly. Remember, Arnab and the entire team is back and we are keeping our eyes focused on the numbers. Ladies and gentlemen, the numbers that matter. So do not go anywhere on the other side. Be back. Our non-stop rolling coverage on elections 2022 continues. Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the Aam Aadmi Party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests.
YSRTP Chief Vice Sharbila's Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally in the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कानून वापस हुए हैं और किसान कानून वापस होने के बाद सीधे किसानों के बीच पहुंची हूं और किसानों से ही बात कर रही हूं। शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग को लेकर जो राजनीति गरमाई रही वो और ज्यादा गरमाएगी, ये बिल्कुल तय है। The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus, post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people that you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड। कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Will elections 2022 seal the Congress fate? As the polling ends, is Aam Aadmi Party a factor or not? Can the BJP defeat incumbency in 2 states? Debating tonight at 9 p.m. As the Prime Minister casts his vote, the opposition calls it a roadshow. Election day roadshow is banned, but for them they may be excused. Has the Modi factor spooked the opposition? Debating tonight, 10 p.m. Hello and welcome to Election Headquarters today on Republic TV. Ladies and gentlemen, 182 seats in Gujarat up for grabs. Polling in both the phases in Gujarat has concluded. Some key on-ground issues hold the fate of the contesting parties. Take a look at the report very soon. Arnab joining us with the numbers on the exit poll. For the upcoming polls, Gujarat is a state which is replete with issues, and each party is raising them. The most stinging issues that remain are those of inflation, unemployment, and water scarcity that have remained unresolved even after so many years of BJP rule. The 30th of October Morbi Bridge collapse, which claimed over 130 lives, is likely to dominate the minds of people when they go to vote to elect the next government. Lack of basic education and health facilities in remote areas of the state are a major issue.
If school classrooms are constructed in remote rural areas, there is a dearth of teachers. The lack of primary healthcare centers and doctors also adversely affects health services in the rural pockets. Farmers are agitating in several parts of the state as they have not been given compensation for crop loss due to excess rains in the last 2 years. Complaints of pothole-ridden roads are common from all over the state. The state government and the municipal corporations have not been able to construct good roads or to maintain the old ones. Gujarat also has one of the highest electricity tariffs in the country. People are looking forward to the offers made from the Aam Aadmi Party and the Congress of getting 300 units of free electricity per month. गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो 0 आएगा। हमारी सरकार बनेगी, पुराने सारे बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ और आने वाले समय में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। The state witnesses a huge disparity as people pay rupees 7.50 per unit while their industry counterparts in Maharashtra and Telangana have to pay only rupees 4 a unit. Frequent paper leaks and postponement of government recruitment exams have dashed the hopes of a lot of hard-working youth who are trying to get government jobs, leading to much resentment. With heavy-duty campaigns and a repository of promises, those the citizens view as worthy leaders to address their concerns will finally be decided on the 8th of December. Bureau Report, Republic TV. Ladies and gentlemen, now to the hill state of Himachal Pradesh. It went to polls on 12th of November. Today, the exit polls will show which way the winds blow. But the final verdict of the Janta was out on 8th of December. Here's a look at the high voltage fight that took place in the state. In Himachal Pradesh, 68 seats are up for grabs. Traditionally, it has been a contest between the BJP. सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी। And the Congress Party. आप में से कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? यहाँ किसान होंगे, आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके, तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? But this time around, there is a third entrant. Issues in the hill state span from UCC. अरे हिमाचल वालों, लोकतंत्र आया है, अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। To pension schemes. Himachal Pradesh witnessed a record voter turnout at 75.6% in the assembly elections this year. कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। And now it remains to be seen if the state ducks the traditional alternating trend. The final decision of the 55 lakh voters of Himachal Pradesh will be clear on 8th December. Bureau Report, Republic TV.
The Congress candidate Rajendra Parmar was caught in a controversy after videos have gone viral of women dancers are hired to entertain the public. As India marks Navy Day, mega celebrations in Visakhapatnam. Karnataka now in Mandya, where there were clashes reported during the Hanuman Jayanti celebrations. This was in Srirangapatna. 93 seats will go for polls on December 5th as phase 2 of polls goes underway. Stay tuned to India's election news headquarters. Plus post to post live coverage only on Republic TV. Waterlogging has increased in the last 3 to 4 hours. Elphinstone station is shut, which means all those people who are hoping to go back home. When you look at that crowd, what's the message that Houston is sending out? There is also anticipation of a few announcements being made. What are your expectations when they both come up on stage? Are you expecting something big? I'm at the Jama Masjid in Bandra and there are thousands of people behind me. Why they are protesting, but the situation is pretty tense. Thousands of people as you see. 4 दिन की रिमांड है, 4 दिन की रिमांड. कुछ कहना चाहते हैं आप? पत्राचौल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? Truck has collided with the government bus this morning, causing the government bus to fall to the side of the road and burst into flames. About 10 passengers have been injured who were rushed to the nearby hospital. The terror group has released a list of 56 Kashmiri Pundit employees that are on their target. This drone was shot down in Taran sector when he crossed the international border and came to the Indian territory and tried to drop this drugs consignment inside the Indian territory. The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Big win for global women's rights. Iran abolishes the morality police after witnessing the anti-hijab protests. YSRTP Chief Vice Sharbila Padayatra being stopped by the police as she was to resume it today. Vice Sharbila says KCR is one who is using the police to stop her Padayatra. In Maharashtra's Palghar district, a mob thrashed a man with sticks and kicked him brutally on the suspicion of theft. आज के दिन जब दिल में दर्द है अपने जवानों की शहादत पर, उसी के साथ साथ जब ये नारे गूंजते हैं तो एक सुकून है, एक हिम्मत है। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख The mandate from the two states. It's been a high-stakes battle for the Prime Minister. Who will win, Gujarat and Himachal? While the opposition was missing in action, the people have given the real mandate. Will the BJP retain both the states? Is the AIADMK party even a factor? Get the earliest peep into the verdict with Republic PMark exit poll, December the 5th at 6 p.m. Elections 2022 seal the Congress fate. As the polling ends, is Aam Aadmi Party a factor or not? Can the BJP defeat incumbency in 2 states? Debating tonight at 9 p.m. As the Prime Minister casts his vote, the opposition calls it a roadshow. Election day roadshow is banned, but for them they may be excused. Has the Modi factor spooked the opposition? Debating tonight, 10 p.m. Terrorists name 56 Kashmiri Pundits and create a hit list. Recent list of 57 employees of our community has been issued by TRF and they are threatened to be killed. So this is the breach of security. Can another exodus-like situation be allowed?
और अब से अगले 30 मिनट में, जी हां, अगले 30 मिनट में सबसे पहले गुजरात और हिमाचल के नंबर लेके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ होगा। हमारे साथ हमारी सबसे बड़ी टीम इस समय स्टूडियो में और ग्राउंड पे है। सुचरिता, सोहेल। बिल्कुल 182 सीटें जिन पर वोटर ने अपना मैंडेट सील कर दिया है और अब से थोड़ी देर बाद आपको आंकड़े दिखाएंगे कि किसको सरकार बनाने का मैंडेट गुजरात ने दिया है। इसी के साथ साथ हिमाचल में किसकी सरकार बन रही है। जी और इस एग्जिट पोल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे जिनका आपको इंतजार है, अर्नब गोस्वामी अब से कुछ वक्त में जुड़ेंगे और गुजरात और हिमाचल के नतीजों से पहले क्या तस्वीर बनने वाली है ये हम आपको बताएंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल, और मैं तो देखिए गुजरात के बारे में कह सकता हूं बहुत आत्मविश्वास से कि जिस तरह से ये इलेक्शन गया है, मेरे ख्याल से देश की राजनीति में एक जो कहे कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बेंचमार्क सेट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन किया है और अपना राज्य गुजरात और जिसके वो प्रभारी थे हिमाचल, दोनों के बड़े दिलचस्प आंकड़े होंगे देखने के। बिल्कुल, जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है, उनके रोड शोज गुजरात ने देखे हैं, उनका प्रचार गुजरात ने देखा, लेकिन उन्होंने प्रचार हिमाचल में भी किया है। हिमाचल ने अपना मैंडेट 12 नवंबर को सील कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद दीप्ति वो रिजल्ट्स हमारे दर्शकों के सामने हम रखेंगे जो हमारा एग्जिट पोल दे रहा है। पी मार्क का ये एग्जिट पोल क्या कहता है, जनता किसकी सरकार बना रही। और मुझे लगता है ना 3 बड़ी बातें हैं सुचारिता यहाँ पर। सबसे पहले तो यही है कि क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बीट कर पाएगी, और अगर कर पाएगी आप सोचिए कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि एक ऐसी पार्टी जो 27 साल से गुजरात में काबिज है और आज तक भी उसको ना कांग्रेस ना ही आम आदमी पार्टी वहां से उखाड़ फेंक सकते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल लेक्सिकन होगा। मतलब आने वाले समय में इसके बारे में बात होगी कि ऐसा क्या फॉर्मूला है, क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है जो बीजेपी को इस तरह हेल्प करता है, आम आदमी पार्टी का क्या एक्स फैक्टर वाकई काम आता है। दिल्ली पंजाब के बाद सुचारिता, सोहेल, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ भी कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो अगला इलेक्शन यानी जो 27 का इलेक्शन होगा उसका क्या मतलब होगा। और आई थिंक एक और बात जो कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस का रेलेवेंस 2024 की जब चुनाव की बात आएगी तो कांग्रेस कहां खड़ी होगी। एक और दर्शकों को बात बताने की है बिफोर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले, वो ये कि ये जो हम आंकड़े लाने वाले हैं, एक तो हमने खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो अपना एक गठबंधन किया था पी मार्क के साथ, उसके आंकड़े आएंगे। दूसरा ऐश्वर्या मैट्रीज, एक पोल ऑफ पोल में होगा जिसमें 7 बजे लेके आएंगे, जिसमें मैट्रीज होगा, जिसमें चाणक्य होगा, जिसमें सी वोटर होगा। तो आपको एक बहुत ही वृहद किस्म का तस्वीर जो है गुजरात और हिमाचल के बारे में देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। लेकिन एक बात और जो इसमें से निकल के आ रही है सोहेल और सुचरिता, वो ये हमारे साथ गेस्ट यहाँ पे पूरी टीम है। एक ऐसी बात अभिषेक, हम मतलब हर बार बोलते हैं सुचरिता कि क्या डिफरेंस है सोहेल बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन आज एक सवाल ये है कि गुजरात की अगर बात करें तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी। अभिषेक, आई विल आस्क यू, क्या सिमिलैरिटी है बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात को लेकर? बताइए। पता क्या, दोनों के पास स्टेट लीडरशिप नहीं है अभिषेक, दोनों के पास गुजरात में स्टेट लीडरशिप नहीं। बीजेपी ने कोशिश फिर भी बीजेपी ने कोशिश की जीतूभाई वघानी के साथ, विजय रूपानी के साथ और अभी हर्ष सांघी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं, भूपेंद्र पटेल को भूल गए, अभी तो मुख्यमंत्री पटेल से तो कोशिश जारी है ना। हाँ। भूपेंद्र पटेल के साथ कोशिश जारी है, लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होता है फिर आ जाता है बात सेंट्रल लीडरशिप पे, और वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। और मोदी और शाह को टक्कर देगा तो देगा कौन? जो बात आप कह रहे हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उस पर क्या कांग्रेस कैपिटलाइज कर पाई है? क्या उसका फायदा कांग्रेस उठा पाई है? वो हमने नहीं देखा है, वो हमने होता हुआ गुजरात में नहीं देखा। भूपेंद्र पटेल के साथ उनके चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन चेहरा आगे नरेंद्र मोदी का ही रहा है, ये सब जानते हैं। बड़ी चीज ये कि कांग्रेस इस बार चुनाव में भी नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव लड़ी नहीं रही है, और कांग्रेस से ज्यादा इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल मेहनत करते नजर आ रहे थे। और एग्जिट पोल बताएंगे अरविंद केजरीवाल की मेहनत कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, और एग्जिट पोल के जरिए पता चलेगी तस्वीर। लेकिन बड़ी चीज जो सभी के समझ से परे, 27 साल से अगर बीजेपी लगातार बनी हुई है तो वो कोई ना कोई रीजन ग्राउंड पर जरूर है। देखिए सोहेल, उसमें से करीब 13 से 14 साल तो नरेंद्र मोदी के खुद रहे। उसके अलावा उसके जो ऐतिहासिक कारण है कि 80 और 90 के दशक में जब कांग्रेस पूरी तरीके से खाम थ्योरी पे चली गई, तो एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो हुआ जातिगत, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और जो उनकी
पहले हिंदुत्व की राजनीति और उसके बाद उसमें जो विकास डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी के समय से आई, तो वो दोनों का जो एक मिश्रण बना, एक कॉम्बिनेशन बना, उसको तोड़ पाना मेरे ख्याल से उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को कभी मिला नहीं। अभिषेक, लेकिन देखिए जैसी बात आप गुजरात की करते हैं ना, गुजरात की धरती ऐसी है जिसमें राजनीतिक तौर पे मैं बोलूं तो उसने हमेशा देश को बदलने वाले लोग थे, है ना। मैं कह रहा हूं महात्मा से लेके पीलू मोदी तक, मीनू मसानी से लेके नरेंद्र मोदी तक, यू टॉक अबाउट दीज लीडर्स, आप इन कैरेक्टर्स के बारे में बात कीजिए। चाहे आप महात्मा के बारे में बात करें, आप पीलू मोदी के बारे में बात करें, आप मीनू मसानी के बारे में बात करें, और या आप नरेंद्र सरदार के बारे में बोल सकते हैं, आप बात करें नरेंद्र मोदी की। तो जब, लेकिन इस बार जब ये इलेक्शन हो रहा है 27 साल से, नरेंद्र मोदी ने एक भी बार ऐसा मौका नहीं दिया। पिछली बार हल्का सा ऐसा लगा था, हल्का सा, कि बीजेपी शायद हल्की सी हिल गई है, 99 पे जाके अटकी थी। नहीं, बिल्कुल हिल गई थी, बिल्कुल हिल गई थी। अगर आखिरी एक हफ्ता नरेंद्र मोदी अगर कैंपेन नहीं करते 2017 में तो सब कुछ हिल गया। उसके पीछे तो इस बार भी कहा जा रहा था ना सोहेल, पाटीदार आंदोलन एक रीजन था। तीन कारण थे बताता हूं। 2017 में पहले तो नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थे, तो लोगों को लगता था कि इतने बड़े नेता नहीं है, अब कौन उसकी जगह होगा। सेकंड, दूसरा, जीएसटी तब नया नया आया था, तो गुजरात बिजनेस स्टेट है, वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी है, उनको बड़ा अप्रीहेंशन था कि ये कैसा होगा। तीसरा, पाटीदार। और लेकिन हार्दिक पटेल अब है भारतीय जनता पार्टी में। अरुण जेटली ने वहां पर 3 रातें निकाली थी, रातें उन्होंने स्पेंड की थी वहां पर, तो आई थिंक यू सॉ लॉट ऑफ डैमेज। और अब सूरत में जीएसटी की रेड हो रही है, इस बार जीएसटी की रेड हुई है। इतना कॉन्फिडेंस, अगर आप समझे कि बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है, इस समय जो एक नया खिलाड़ी आया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय जो एक नया खिलाड़ी आया है वो है आम आदमी पार्टी। वो नया खिलाड़ी कितना फर्क डाल सकता है, मैं तो ये समझ रहा हूं, ग्राउंड पे फर्क डाले ना डाले, जैसे एक नए तैराक को, जैसे एक छोटे से बच्चे को सोचा रहता आप स्विमिंग पूल में डाल दीजिए, तो जो परफेक्ट स्विमर होता ना, वो कहां स्विम कर जाता पता नहीं चलता, लेकिन वो इतना छपाक मारता है कि पूरे स्विमिंग पूल में वही दिखाई देता है। तो अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही, और सीट कितना लाएगा वो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ही है। और बहुत बड़ा कंपैरिजन, बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया। यही हो रहा है, शोर इतना मचाया है चुनाव प्रचार के दौरान, और इसीलिए सब चर्चा ये कर रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है कि नहीं, क्या आम आदमी पार्टी डेंट कर पाएगी, सीटें निकाल पाएगी, कितनी निकाल पाएगी ये पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इस तरह की स्ट्रेटजी कामयाब होती है? इतना शोर, इतना गुब्बारा फुलाकर कई बार हो सकता है शायद वोटर्स को लगता है चारों तरफ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, कम से कम फाइट तो ये लगने लगती है कि बीजेपी वर्सेस आप है। अब वो डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है। आई फील नो, मेरे को लगता है सोहेल, इट्स बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इट्स क्योंकि आप 30% वोट है, कम कर देंगे ना बहुत कम, तो भी 24% वोट होता है कांग्रेस का। वो 24% वोट तब है जब कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी एक बार गए हैं एक दिन, वो भी नहीं जाते तो शायद 24 का 25 हो जाता, जो कि हिमाचल में हो रहा है। आपके साथ अमित शाह ने कही थी, अर्नब गोस्वामी के साथ नड्डा ने आपसे कही थी कि एक दिन में कोई पार्टी खड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई अभी भी बीजेपी की कांग्रेस से। और बीजेपी के नेता, खुद वही नेता जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभिषेक वही नेता कहते हैं दीप्ति की अब लड़ाई कांग्रेस से, वही नेता कहते। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इतना डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। इन्होंने दिल्ली से शुरुआत की है, पंजाब इनके पास है। अगर गुजरात में आज आम आदमी पार्टी वर्सेस अ कांग्रेस, जो एक एंट्रेंच्ड पार्टी है, कांग्रेस वर्सेस एन आम आदमी पार्टी कुछ भी कर पाती है। देखिए, वो एक माहौल तो बना लेती है अपने फेवर में। अब आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, उसके पास संगठन नहीं है, उसके पास और चेहरे नहीं है अरविंद केजरीवाल के बिना। अब ये एक प्रॉब्लम बीजेपी में क्या ऐश्वर्या आने वाले समय में नहीं आएगी। आज आपके पास प्रधानमंत्री मोदी है, यू हैव अ मोदी फैक्टर, दैट इज द ओनली फैक्टर इन गुजरात। बट व्हाट आफ्टर मोदी, व्हाट आफ्टर मोदी? आज ये बताइए पूरे कैंपेन में आज कांग्रेस ने सोचा था दीप्ति की इंदिरा गांधी के बाद क्या नहीं दीप्ति? वो छोड़िए, बीजेपी इज नॉट अ कांग्रेस, बीजेपी इज नॉट अ कांग्रेस, बट अरविंद केजरीवाल इज आल्सो नॉट अ कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नहीं है, और बीजेपी, अभिषेक will agree, आम आदमी पार्टी से डरती है। आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। पार्टी क्या करेगी बताता हूं। बिफोर वी ओपन द डिबेट, मैं आई विल टेल यू व्हाट द आम आदमी पार्टी विल डू। उसको कहते हैं गांधीनगर केस स्टडी। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐश्वर्या जब से बना, हमेशा कांग्रेस के पास। गांधीनगर राज्य की राजधानी है, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस। और फर्क जो है, कांग्रेस पार्टी का रहेगा 45% वोट, बीजेपी का रहेगा 40-42% वोट। आम आदमी पार्टी पिछली साल आई और मजा देखिए क्या हो गया, खेल कैसे पलट गया। 44 सीट है वहां गांधीनगर में, बॉसेस है। ओके, अब मैं खत्म कर लूं इस बात को। आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस का वोट शेयर आधा हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। सो आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना करे ना करे, कांग्रेस का तो
ऐसा क्या कहेंगे उसको, नुकसान कर ही सकती है, बंटाधार कर ही सकती है। और मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने कहा है। संगीत रागी कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी आ गए, जुड़े हुए इस समय मुंबई के स्टूडियो से। अर्नब, ओवर टू यू। मुझे देखिए ऐश्वर्या देखिए, हैंडओवर करने की जरूरत नहीं, आप एंकर कीजिए। मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं तो इतने फील्ड में नहीं गया हूं, और आप गेस्ट को पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मुझे बाद में। फिर मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ अभी शायद संगीत रागी हैं, कई सारे गेस्ट हैं, उनको पहले इंट्रोड्यूस कर ले, उसके बाद दीप्ति आप उनको, सुचरिता आप उनको इंट्रोड्यूस कर दें जी। हमारी मेहमान नवाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद में 2-3 चीजें कहूंगा। ममता काले जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और प्रोफेसर संगीत रागी को आप लोग देख सकते हैं। परमिंदर सेठी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। और कांग्रेस कहां है, कितनी सीटें लेकर आ रही है, हिमाचल में आ रही है, गुजरात में आ रही है, नहीं आ रही है, उस सब पर आकलन होगा, क्योंकि सीटों का पूरा जो एक आंकड़ा है वो एग्जिट पोल में सामने आएगा। आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी जुड़ गए हैं, इरशान त्रिवेदी जी को आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत दिनों बाद रिपब्लिक भारत पर नजर आ रहे हैं और अपना पूरा एक आंकलन भी लेकर आए हैं चुनावों को लेकर, गुजरात और हिमाचल को लेकर। मुझे लगता है कि अगर इस पूरी चर्चा की शुरुआत अर्नब, सबकी अनुमति लेते हुए मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार। 3 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, आपके जो मीडिया पार्टनर हैं, मैं बहुत सीधी बात कहूंगा कि आज हमारे पास 2 राज्यों के एग्जिट पोल आने वाले हैं, मगर आम आदमी पार्टी के जो मीडिया समर्थक हैं, मीडिया पार्टनर है, वो बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई गुजरात की बात ज्यादा मत करो, हिमाचल की बात ज्यादा मत करो, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की बात ज्यादा करो। अब मैं तो चुनाव को इस तरीके से देखता हूं कि 2024 के रनअप में आज राज्य के जो इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। अजीब बात है कि जो लुटियन की मीडिया है वो यही कह रही है, नहीं, गुजरात की बात मत करो, दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी की रिजल्ट पहले दो, ताकि ऐसा ना लगे कि अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में 20, 25, 30, 35, 40% वोट नहीं मिले गुजरात में, तो बुरा ना लगे उनको। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, भाई पंजाब में इनकी सरकार बनी, हिमाचल में आम आदमी पार्टी है कहां, है कि नहीं है? नील बटा सन्नाटा। पूछता है भारत कहां है? आजकल बात क्यों नहीं हो रही है? जब सत्येंद्र जैन को अंदर किया था करप्शन के केस में, तब सोहेल क्या कहा था इन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने कहा हम तो हिमाचल में सरकार बना रहे, उसको रोकने के लिए सत्येंद्र जैन को अंदर किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आज हिमाचल पे कहां है? मैं जानना चाहूंगा उनको वहां पे 25, 30, 35, 40% वोट मिलने वाली है कि नहीं। भाई राज्य सरकारों की बात करो, ये क्या दिल्ली म्युनिसिपैलिटी पे ये तकवाले, सुबह से दिल्ली म्युनिसिपैलिटी करिए आप दिल्ली म्युनिसिपैलिटी। मैं राज्य सरकारों की बात करूं, कौन राज्य सरकार बना रहा है हम जानना चाहते हैं। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ये, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी वो। अरे भाई ये क्या हो रहा है भारत के मीडिया में, और आप देखते हुए भी होने दे रहे हैं ऐश्वर्या जी। तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिल जाए गुजरात में, वो जो देखना पड़ेगा एग्जिट पोल क्या कहे, तो मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी की नेशनल लेवल की एंट्री हो गई। मगर अगर इतना कुछ, इतनी कोशिश, धन दौलत, पूरी तरह से प्रेस्टीज गुजरात में लगाने के बाद अगर 25% क्रॉस नहीं करे, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा धक्का होगा आम आदमी पार्टी के लिए। इसलिए मुझे आज के चुनाव में मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की नेशनल एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसी को जानने की जरूरत है। बाकी आप जरा इस डिस्कशन को आगे ले जाइए। कितने मिनट में आने वाली है रिजल्ट? 10, 15, 20 आगे आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली म्युनिसिपैलिटी से शुरू मत कीजिए। सुचरिता, ये सारा चल रहा है दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का रिजल्ट, ये क्या हो रहा है? हाँ, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं म्युनिसिपैलिटी नहीं बनी, मगर मैं कह रहा हूं आज कि आज दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल सही क्या हो गया हिंदी चैनलों को आज? आपने बताया ना अर्नब, अभी ये सब हिल गए। वो लुटियंस मीडिया है जो बताना चाहता है कि गुजरात में कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो भाई दिल्ली के एमसीडी में बता दें, दिल्ली के एमसीडी में कुछ सीटें ला रही है आम आदमी पार्टी, तो उससे बैलेंस आउट कर दे,
उससे जरा बराबरी कर स्तर पर डिस्कशन हो रही है। बता दें कि भाई अरविंद केजरीवाल फेल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन हो रही है कि म्युनिसिपैलिटी किसकी बनेगी। अरे भाई अगली बार नागपुर, गुवाहाटी, कोलकाता की म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन पर भी आप 10-10 घंटे के प्रोग्राम करें, ये क्या हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? ये दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही रिपब्लिक भारत को, आप इसको तो उठाइए, ये भी तो मुद्दा है। चलिए ओवर टू यू। जो बात आप अर्नब कर रहे थे ये बिल्कुल गुजरात को लेकर, और गुजरात अगर फोकस है इस पूरे चुनाव के जो अंक गणित है वो थोड़ी देर में आएगा। गुजरात और हिमाचल से 2024 का एक टोन सेट हो रहा है। एक बार जरा पुष्पेंद्र जी के पास पहले चले जाते हैं। पुष्पेंद्र जी, चर्चा गुजरात और हिमाचल की, गुजरात हिमाचल आपको लगता है इस वक्त न सिर्फ विधानसभा की सीटें, विधानसभा सरकार किसकी बन रही है, बल्कि 2024 का भी एक मैंडेट, एक तरह से एक मूड सेट करेगी? देखिए, ये बात साफ है कि एक लंबे समय के बाद एक गुजराती प्रधानमंत्री बना है और सक्सेसफुली वो 2 टर्म करीब करीब उनके पूरे होने वाले हैं। गुजरात के लोग गुजरात प्राइड को बड़ा ध्यान देते हैं। विदेशों में भी मैंने देखा कि गुजरात को लेकर के एक अलग प्राइड है। गुजरात के लोग आज का चुनाव जो है वो किसी कीमत पर हारने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात की जीत 2024 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के मजबूत दावेदारी और एक अगला टर्म। लिहाजा गुजरात में हो सकता है कि थोड़े थोड़े नए नए लोग गए हो, कुछ नए नए जुमलेबाजी हो रही हो, वो सब चलेगा, लेकिन गुजरात के लोग 27 साल से परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और गुजराती को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मजबूती से उसका पार्टी में दावा हो, इसके लिए गुजराती किसी कीमत पे, मैं नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई बिजली, पानी, चावल, दूध, भ्रष्टाचार, ये जो बातें हो रही हैं, जो ऐसा लग रहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं ना वो दिल्ली में भ्रष्टाचार है ना कहीं और भ्रष्टाचार है, सब कुछ गुजरात। तो जो बात अभी अर्नब कह रहे थे कि फोकस एमसीडी इसलिए किया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि अर्नब ने तो एमसीडी फोकस की। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं कुछ लोगों का ये चक्कर भी तो नहीं है कि वो जेएनयू के चुनाव के इंतजार कर रहे होंगे उसकी घोषणा हो जाए, कहीं से कोई जीत का हल्का सा भी हमको फैक्टर मिल जाए ताकि हम उसको बड़ा कर सकें। मैं चौंक गया आज। मुझे मैं बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं, वैसे दूसरे चैनलों को कभी मैं अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करता, ये गलत बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में जानना चाहे वो तक देखे और कोई भी देख ले भाई। ये 9, 10, 11, 11, 12, 8, 9, 7 वाले चैनल देख ले, यूक्रेन की खबर मिल जाएगी उनको। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर राज्य सरकारों के बारे में जानना चाहे तो 6:30 बजे से हम नंबर दे देंगे। मैंने कभी नहीं देखा है, क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी देखा है? मैं पूछना चाहता हूं कि आज गुजरात के इलेक्शन से हटने की पूरी कोशिश हो रही है। संगीत रागी जी आप देख लीजिए, आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है। संजीव कौशिक भी मानेंगे, अजय अरोड़ा भी मानेंगे। आज ये म्युनिसिपैलिटी पे बातचीत करना चाहते हैं, क्यों भाई? मैं नहीं, ये गुजरात के बारे में बात नहीं करना चाहते। अर्नव, हाँ जी संगीत जी। अर्नव, मैं इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एमसीडी चुनाव के ऊपर जो इतना बड़ा कवरेज हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इस बात का है कि गुजरात और हिमाचल में चूंकि आम आदमी पार्टी हार रही है, तो इसके हारने से उसकी छवि को जो डेंट लगेगा, और साथ साथ जो 2024 के पहले एक जो तैयारी चल रही है लटियंस दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस का एक विकल्प के तौर पर कहीं हम आम आदमी पार्टी को खड़ा करके आगे ला सकते हैं क्या एक नेशनल फेडरेशन पार्टीज का बने तो उसमें आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी भूमिका 2024 से पहले हो। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जफर इस्लाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी जहां भी गई है कांग्रेस का लुटिया वहां पर डूबा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हरा पाने में सक्षम नहीं दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, वो हारे। बनाना मीडिया का काम नहीं है संगीत रागी जी। विकल्प बनाना नहीं, विकल्प बनाना मीडिया का काम कब से हो गया? देखिए मीडिया, आपको भी जानकारी है, आप उस मीडिया में रहे हैं बहुत पहले। मीडिया में तो उस मीडिया
कुछ मीडिया तो ऐसे थे जो मंत्री तक बनवाते थे, संतरी तक बनवाते थे, किसका कॉन्ट्रैक्ट कहां पर जाएगा, राबिया टेप के बारे में कौन नहीं, राडिया टेप के बारे में कौन देश का आदमी नहीं जानता है। और एक समय ऐसा था जो सारे प्राइम मिनिस्टर की जितनी विदेश से यात्रा है वो डिबेट शुरू करें, तो वहां पर सारे के सारे मीडिया के कौन लोग वहां डिबेट शुरू करते थे। तो वो तो एक नहीं, मैं आज बहुत दिनों के बाद रिपब्लिक भारत में आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आजकल डिबेट क्यों कम हो रही है। चलिए सुचरिता, ऐश्वर्या शुरू कीजिए। जफर इस्लाम भारत बीजेपी, दीप्ति, सोहेल, डिबेट बीजेपी के पूर्व सांसद जफर इस्लाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जफर साहब परेशान है क्या? ये सब कह रहे हैं भाई, देखिए वोटिंग कम हुआ है। जफर साहब देखिए, मैं तो कहीं से भी परेशान नहीं दिख रहा हूं। ऐसी पार्टी जो प्रदेश की चिंता करती हो, प्रदेशवासियों की चिंता करती हो, और एक ऐसी पार्टी जो परिवार की चिंता करती हो और परिवार के जो लीडर है उनकी चिंता करती हो, तो उनमें फर्क तो आम नागरिक पहचानते हैं ना। कि एक पार्टी है जो प्रदेश की जनता की चिंता करती हो, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, घर, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट, बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर, राशन घर तक पहुंचाने का काम और हर तरह की सुविधाओं पहुंचाने का काम। एक है कि कैसे देश को लुटाया जाए, वैसी पार्टी परिवार को आगे बढ़ाया जाए, परिवार कैसे देश को लूटे। तो दोनों में फर्क तो पहचानता है ना कि विकास किधर हुआ है, लोगों का विकास और एक परिवार का विकास। तो हमने जो देखा है वहां पर, आपने तो ऐश्वर्या हमसे मिले भी थे वहां पर, मैं तो वहां पर काफी 1.5-2 महीने तक रहा गुजरात में और इस बात को नजदीक से देखा कि वहां की जनता ने बिल्कुल साफ मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जाके उनके लिए काम करती है और एक सेवक की तरह काम करती है। और जो पिछले 27 सालों में उन्होंने जो देखा है ग्रोथ, वो आप उनके सामने है। जो आपको रिवर फ्रंट दिखता है वो भी लोगों के सामने है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो गुजरात में जो साफ दिखता है कि कांग्रेस क्या सोचती थी परिवार के बारे में और ये प्रदेश के सोचने वाली सरकार है। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, जफर भाई, हो गया परिवार, परिवार, हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया खड़गे जी, दलित, हमने परिवार की बात नहीं की। परिवार के बारे में जफर भाई, परिवार के बारे में सोचने वाली सरकार। अरे खड़गे जी भी परिवार के इशारे पे जो है सारा कुछ करते हैं। कहने के लिए भी परिवार से पूछना पड़ता है। आपने देखा नहीं मीटिंग कौन बुलाता है? मीटिंग बुलाते हैं कौन? नहीं, सोनिया गांधी जी आज आटे पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, सोनिया गांधी जी मीटिंग बुलाती है। ये मुद्दा नहीं आएगा। सोनिया गांधी जी आज भी मीटिंग बुलाती है और मीटिंग अटेंड करते हैं खड़गे जी। आप किनके पास मीटिंग होती है? आपने देखा नहीं? अजय अरोड़ा जी, आप कह रहे हैं सब मुद्दे, आप ये कह रहे हैं ये सब मुद्दे हैं, ये मान लिया। जफर साहब ये कह रहे हैं ये सब मुद्दे हैं। आप लोग पिछले चुनाव में 77 सीटें लेकर आए, 99 के बहुत करीब थे, सिर्फ 20 सीटों का फर्क था। अगर ये सब मुद्दे हैं और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी ने वहां पर काम नहीं किया, मोदी फैक्टर नहीं चलता है, सिर्फ मोदी को आगे कर देते हैं, तो आप लोग इस बार उस पर कैपिटलाइज कर पाएंगे? वो 20 सीटों का फर्क आप उल्टा कर देंगे? बिल्कुल सुचारिता। पिछली बार ये जब एग्जिट पोल आया, जब चुनाव के नतीजे आए, तो हार्दिक पटेल का नाम आया कि हार्दिक पटेल ने एक यात्रा निकाली थी, एक सभा की थी और उसमें हथियार ये और वो, इस कारण कांग्रेस को 77 सीटें मिली और नहीं तो हम कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन वही हार्दिक पटेल जब भारतीय जनता पार्टी में जाता है, सुचारिता, इन पे कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? ऐसी वॉशिंग मशीन कौन सी है? गोल गोल घुमाओ मत, मेरे को ये बताओ, आपके नेता थे कहां? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे, यू वर एब्सेंट, कांग्रेस गायब थी गुजरात में। एक आपने बहुत अच्छा काम किया, राहुल गांधी को हिमाचल नहीं भेजा और वही स्टेट है जहां पे ऐश्वर्या, देखिए ऐश्वर्या, सवाल ये है कि 27 साल बाद भी अगर आप फिर आउट ऑफ पार रहे तो आपकी नैया डूब चुकी है। एग्जैक्टली 27 सालों के बाद आज कांग्रेस समर्थक बोले मुझे, अरे 27 साल के बाद दीप्ति इनकम्बेंसी तो किसी के साथ हो जाती है। 27 साल के बाद तो हमारे खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, मगर ये 27 साल के बाद मुझे 27 साल तक, सोहेल ये बताओ, 27 साल के बाद अगर बीजेपी वापस आ जाए, आप पूछिए इनको 27 साल, अरे इधर देखिए, टीवी को देखिए, टीवी की तरफ देखिए, 27 साल बाद देखिए, 27 सालों के बाद देखिए, नाक कट जाएगी, मैं कह रहा हूं नाक कट जाएगी अगर 27 साल बाद इस बार बीजेपी जीत जाए। मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी बहुत डीप विश्लेषण करना पड़ेगा सोहेल। अरे 27 सालों के बाद कोई तो पूछे, इधर संजीव कौशिक जी है, अंग्रेजी में एक कहावत है, संजीव कौशिक जी है, विशाल मिश्रा चुप क्यों है? ममता काले हैं यहाँ पे स्टूडियो में जी।
जो गिरा हाँ, तो ममता काले जी को पूछिए, 27 साल तो बहुत लंबी सफर हो जाती है। ममता काले जी धन्यवाद अर्नब जी। और बिल्कुल आपने सही बोला है कि कोई बात नहीं करना चाहेगा गुजरात की, क्योंकि गुजरात एक बार फिर से इतिहास बनाने जा रहा है और 27 साल से आप नहीं हिला पाए भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि गुड गवर्नेंस को, तो आपके पास बोलने को बचा क्या है? अब मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और अब आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैठकर कह रही है, अभी अजय जी भारत जोड़ो यात्रा, अरे सुनो ना भारत जोड़ो यात्रा, तो सुन लो 2 लाइन आपके, सुनो ना आपके वो एक एहसान कुरैशी जी है ना, बड़े अच्छे से वो कवि है, वो बोलते हैं ना जैसे वैसे ही, अरे दाढ़ी वाले राहुल जी गुजरात मत ना आओ जी, बची खुची इज्जत अब हमारी मत धुलवाओ जी, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केरल और राजस्थान चले जाओ जी। ये पता है कौन बोल रहे हैं? आपके गुजरात के अरे मैं मोदी जी के लिए बोलूंगा, किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने, मैंने आपकी सुनी, नहीं आपने नहीं सुनी, आप सुनी, आपकी सुनी, आप मुझे बोलने का जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, आटे पे जीएसटी कमाल कर दिया, गंगा किनारे लाशें बहती देखिए ममता, हमने अपने खोए हैं, हमने अपने खोए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हुआ? ऑक्सीजन नीति, अगर ये मुद्दे थे, राहुल गांधी पूरे देश में पहिया क्यों घूमे? क्यों नहीं गए वो गुजरात और क्यों नहीं गए वो हिमाचल, और क्यों नहीं इन विषयों पर बात करी? क्योंकि ये मुद्दे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है। और राहुल गांधी जी के पास बोलने को कुछ है नहीं, इसने दाढ़ी बढ़ा के, माफ कीजिएगा थोड़ा व्यक्तिगत है, बीजेपी के ऐसे देखिए आपका, अरे आप कहां बोल रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी है कहां? आप मेरे को बात बताइए। आप इतना इधर बंगड़ा कर रहे हैं, उधर क्या हो रहा है? उधर कुछ है नहीं। आप मेरे को बताइए ग्राउंड में कितनी सीट आ रही है आपकी? बताइए कितनी सीट आ रही? सेठी साहब बताइए। अभी तो एग्जिट पोल नहीं कितने आपने नतीजे डिक्लेयर कर, क्योंकि हम अगर 1% आम, अरे रिपोर्टर क्या करता है? अरे रिपोर्टर है, रिपोर्टर आप पहन के, आपका आकलन क्या? आपका आकलन, अरे अपना आकलन बताइए ना, पहले डिक्लेयर, अपना आकलन बताइए। पूछ रहे जब आप 3 मुख्यमंत्री चेंज करते हो तो आप अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हो कि भी हम फेल हैं। मुख्यमंत्री क्यों चेंज किया जाता है किसी प्रदेश का? पार्टी मुख्यमंत्री, अगर ये विषय फायदा उठाया, मंत्री जेल में रहे, उसे हटाना नहीं है। मुख्यमंत्री चेंज करना गलत है। मंत्री जेल में रहे, वीडियो आए, क्योंकि इनका अनुभव ऐसा है कि मंत्री भी नहीं बदलना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात है, जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए ममता काले। सही बात है, मंत्री जी जो है ना भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में रहे और तिहाड़ को मसाज पार्लर बना ले, और जो पॉक्सो के आरोपी हैं, उनसे अपनी मसाज करवाएं, उनसे अपने लिए खाना मंगवाएं, और सुनिए अपनी पत्नी को मिलने के लिए बुलवाएं। वो सब सही है, वो सब सही है, वो सब सही है। आपको ना एनसीडी मिलेगी, ना आपको गुजरात मिलेगा, ना आपको हिमाचल मिलेगा। 4 लाख करोड़ आपने जितनी शक्ति से आप बोल रहे हो, अगर उसकी आधी शक्ति से आपके नेता थोड़ी रैली कर लेते तो आप भी बोल पाते। हिमाचल और पहली बात तो प्रधानमंत्री ने 200 की, अभिषेक कितने की? अभिषेक 30। आपके नेता भी कर पाते। आप क्यों चल रहे हो? नहीं, पहले आप बताओ चल के रहो, पहले आप बताओ चल के रहो, पहले आप बताओ चल के रहो। देखो एक सेकंड सुनो, वातावरण सेठी जी सुनो। कांग्रेस अभी आप ऐसा नहीं, फिर मैं आपसे तेज चला सकता हूँ, ऐसे नहीं। कांग्रेस को दिक्कत है कि मोदी चलता है। सुन लो दार जी, कांग्रेस को दिक्कत है कि मोदी और शाह चलते क्यों हैं? आपको दिक्कत है कि कांग्रेस रैली क्यों करते हैं? अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं हमें नहीं, अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको टक्कर लेनी तो वहां जाके लो, लड़ो आप भी 301 रैली करो। बताऊं, अरे भाई अगर आपके हिसाब से मोदी ने 300 किया, 301 करो। आपको रोका है किसी ने? अरे आपको रोका है किसी ने? अरे आपको रोका है किसी ने? मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप सुनो ना मेरी बात, सुनिए ना। आप मेरी सुनने बैठो, मैं आपको सुनने बैठो। जवाब दो ना, जवाब दो। आपको 301 रैली करने से किसी ने रोका था? केजरीवाल को 301 रैली करने से किसी ने रोका था? केजरीवाल को 301 रैली करने से किसी ने रोका था? किसी ने रोका था? नहीं। एग्जिट पोल भी नहीं है। मुझे एक छोटी सी, देश का जो हेडक्वार्टर है ना, ऐश्वर्या जी आपने बोल लिया। आपको जवाब मिल रहा है ना?
अर्नब आपको जवाब मिल रहा है ना? क्यों सेठी जी चाह रहे हैं एमसीडी की बात हो? अरे क्यों सेठी जी चाहते हैं गुजरात की बात ना हो? क्यों उन्हें नरेंद्र मोदी की रैली से दिक्कत है? सर आम आदमी क्यों कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के चलने से दिक्कत है? अभिषेक, दिस इज अमेजिंग। ये चाहते नहीं मोदी चले। अरे मोदी ने 30 रैली करी, मोदी का गृह राज्य। सुन लीजिए, स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा रहा, पानी तो पी लो, बुलाया नहीं जा पानी पी लो रहा, ना बोलने का मौका। अरे सेठी साहब, मैं भी नहीं थी स्क्रीन पे, काफी सिर्फ आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो बोलने। सेठी साहब आप रुक जाइए, सेठी साहब आप रुक जाइए, हो गया। सेठी साहब आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, दिल पे मत लो, आप रुक जाइए, आप ऑन एयर है परमानेंट। मेरा सेठी साहब आप कह रहे हैं एमसीडी, एक मिनट सुनिए, अब सुनिए तो बोल, अब आप पूरी कर चुके। फिर आप जवाब दे। एमसीडी आप कह रहे हैं देश का हेडक्वार्टर है। केजरीवाल एमसीडी में ज्यादा रैली कर रहे थे या गुजरात में? सवाल पूछ रहे। देश का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली है पूरा। अभी आपने कहा एमसीडी, बड़ी नई बात बताई, आपने बड़ी नई बात बताई। और पूरे देश पुष्पेंद्र जी हो गए, सुचरिता और जितने भी राजनीतिक रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ, रतन शारदा जी जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली हेडक्वार्टर है तो दिल्ली से चीजें तय होंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, गुजरात चले जाते वो मोदी जी से ज्यादा रैलियां कर लेते। रतन शारदा जी, रैली नहीं करनी है, रैलियां आप मोदी जी से ज्यादा कर लीजिए। राहुल गांधी नहीं जाते, नरेंद्र मोदी गुजरात जाते, तो ये इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आप उनसे 20 हो जाइए, आपको रोका किसने? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई ना कोई तो मुद्दा बनाएंगे। अभी आपके पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने पंजाब उनको मिला 6 महीने, उसको इतना बुरी तरह खड्डे में डाल दिया कि उनका मॉडल कब तक चलेगा ये सोचने की बात है। पंजाब के जो हालात है इस समय, जिस प्रकार से वहाँ खालिस्तानियों को शय मिल रही है, जिससे दिन रात खून और लूटपाट चल रही है, वो पंजाब की सरकार अगर इनका आइडियल मॉडल है तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भविष्य है। अगर आपके पास भविष्य होता तो सरकार चलाते हैं पंजाब, यहाँ गुजरात में के बड़ी बड़ी बातें न करते। आपका मॉडल है बहुत ओवर हाइप, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी वाला, और सच तो उसको बेस तो होना पड़ता है ना। गुजरात के अंदर मोदी जी की जो प्यार मोदी जी को मिलता है, केवल इसलिए नहीं मिलता कि मोदी जी ने मार्केटिंग की है, मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने 23 साल बहुत सॉलिड काम किया है। गुजरात को मैं 1972 से जानता हूँ, मेरा वहाँ घर है, और जो गुजरात को बदलते हुए मैंने देखा है ये हमारे आंखों के सामने है। ये लोग भी देखते हैं। ठीक है, आज की पीढ़ी नहीं देखा, पुरानी तो देखते हैं। अब दिल्ली में अगर जीतेंगे रेवड़ी के बल पर, वो रेवड़ी के बल में बाकी जगह तो नहीं जीतेंगे। सरकार चलानी है, आप सरकार को कर्जे में डुबाएंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर को। आपको लग रहा है ये एक बबल है? आपको लग रहा है ये गुब्बारा है, ये फूटेगा? ये एक बबल है, ये बर्स्ट होगा? अगर यही इनका हार रहा तो बर्स्ट होगा। अगर इनको अकल ठिकाने आ गई तो हो सकता है कुछ ये आगे कांग्रेस का विकल्प जो बनना चाहते बने। लेकिन जिस तरह का काम इनका चल रहा है पंजाब के अंदर, और जिस तरह की 2 मिनट और अर्नब, और एग्जिट पोल्स के नंबर्स आएंगे। 2 और मिनट। ऐश्वर्या एक बात मैं कहना चाहता हूं जी। एक बात मैं कहना चाहता हूं। 2 मिनट में हमारे नंबर आने वाले हैं, और रिपब्लिक भारत पर हम गुजरात और हिमाचल दोनों के नंबर एक साथ दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है नंबर्स की जरूरत है। ये सब बातें तो होती रहेंगी, अब दोनों राज्यों के नंबर हमारे पास आएंगे। गुजरात पे एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि पिछली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिले थे, जो एक रिकॉर्ड नंबर है, और कांग्रेस को करीब 42%, 42.2% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को बस इतना करना है कि जितनी वोट मिली थी पिछली बार उसको मेंटेन रखना है, और बीजेपी को अगर वो 3 से 4% से ज्यादा घटे नहीं, और अगर कांग्रेस मेंटेन करे तो कांग्रेस के नंबर बढ़ सकते हैं। पिछली बार 77 सीटें उन्हें मिली थी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत आसान था यह गुजरात चुनाव। अगर इसके बावजूद कांग्रेस अच्छा नहीं करे तब तो कांग्रेस बिल्कुल, मैं क्या कहूं, कुछ बोलने लायक नहीं रहेगी उनकी स्थिति। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होती है, जब त्रिकोणी चुनाव होता है, तो बीजेपी को फायदा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि त्रिकोणी जब वहां पे ट्रायंगुलर फाइट होती है, तब उसमें तो कांग्रेस को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो बैठी हुई है 42% वोट शेयर पे। लोग क्यों कह रहे हैं कि त्रिकोणी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? त्रिकोणी चुनाव में तो कांग्रेस को फायदा होना चाहिए। ये कोई इसकी एनालिसिस ही नहीं कर रहा है।
और अभी कितने मिनट बाकी हैं बस आप बताइए। एक मिनट मेरे पास नंबर आ चुके हैं, मगर आप हिमाचल और गुजरात जब इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा तब आप अर्नव एक्चुअली दोनों के एक मिनट और अर्नव एक्चुअली एक मिनट बोलिए अर्नव एक मिनट बोलते रहिए, वो जाएगी ना। लगा दें गुजरात के चुनाव, लगा दें नंबर। जनता 6:30 बज चुके हैं। एक और मिनट 6:30 बज चुके हैं, आप प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। जी ओके 6:30 हो गए। आप लगाइए, कौन सा नंबर लगा रहे हैं पहले? ओवर टू यू। नंबर ऑन द स्क्रीन लगाइए। बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन गो अहेड विद द नंबर्स। करिए बताइए जनता को बताइए। हिमाचल के नंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो इस वक्त फिगर आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी के लिए 44.8% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 42.9% वोट शेयर है। अब इसको सीटों में कैसे तब्दील होगा ये भी देखना है। आम आदमी पार्टी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो 44% से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है, ये लगभग कम हुआ है हिमाचल का वोट परसेंट और कांग्रेस का वोट परसेंट बिल्कुल 1% के आसपास बढ़ा है। और हम जरा एक बार और बता देते हैं फटाफट। बीजेपी 44.8 सीट आ रही है, 34 से 29, 34 से 39, यानी सरकार बन रही है। इंडियन नेशनल सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पी मार्क रिपब्लिक के इंडियन नेशनल कांग्रेस 42.9, कांग्रेस 42.9%, 28 से 33 सीट। आम आदमी पार्टी 2.8%, सिर्फ 0 से 1 सीट। सेठी साहब पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। नहीं देखिए, नहीं ऐश्वर्या एक मिनट देखिए, एक मिनट दो बातें कहना चाहता हूं। आप ये कहिए इसका मतलब क्या है? मतलब यह है 4.4% वोट बीजेपी के कम हुए हैं। मगर स्टोरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी तो वही 42 के 42 पर रही। वही कांग्रेस पार्टी को अगर और 3% वोट मिल जाते तो कांग्रेस सरकार बना लेती इजीली। नहीं वो तो है ना, कांग्रेस वही है ना। अभी आप ये समझने की कोशिश करो ऐश्वर्या, अभिषेक सुचरिता, इस बात की कोशिश करो कि हिमाचल प्रदेश हर बार बीजेपी और कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव सरकार देखती है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मगर इस बार कांग्रेस की कैंपेन उतनी स्ट्रांग नहीं हुई। अगर 42 से लेकर 45 तक ले जाते वो, अगर 0.8% से ज्यादा, वो 3.5% भी वोट इनकी गेन हो जाती तो फिर तो कुछ और ही नजारा होता। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात मैंने कही, ये आम आदमी पार्टी कहां है? बिल्कुल गायब है। 2.8% वोट है, यानी कि पूरा सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी का सफाया हिमाचल प्रदेश में। ये क्या आपके लिए हेडलाइन खबर नहीं है सोहेल? ये बिल्कुल खबर है, ये तो बहुत बड़ी हेडलाइन है। क्या आम आदमी पार्टी का सफाया जी फट गया। अर्नव आपका गुब्बारा फट चुका है हिमाचल में। वो भारतीय जनता पार्टी के गुब्बारा था और गुब्बारा फट चुका है। भारतीय जनता पार्टी द बबल हैज बर्स्ट जो कहते हैं अंग्रेजी में। जी प्रोफेसर, आप रिएक्शंस लें। ओवर टू यू प्रोफेसर आगे बताइए। अर्नव ये जो आम आदमी पार्टी का 2.8% का वोट है, वही भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत आने के बावजूद वो जीत की तरफ ले जा रहा है। जो आप जीत का आंकड़ा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी की दिख रही है। और इसलिए मैं गुजरात चुनाव को लेकर के कह रहा था, आप कह रहे थे, आपको ये भी समझना है, आप कह रहे थे कि संगीत रागी जी मैं जफर से पूछना चाहूंगा। जफर जी, बीजेपी को प्रोजेक्शन जो हमारे पास की 36 सीटें मिलेंगी, अब हाफ वे मार्क हो गई आपकी 35 से आप कंफर्टेबल हैं। एक सीट ज्यादा है हाफ वे मार्क से, तो अभी भी मतलब सवालिया निशान तो है भारतीय जनता पार्टी पर। या तो आप बिल्कुल किसी तरह से पास हो गए, मगर अव्वल नंबरों से पास नहीं हुए हैं और अभी भी चांस है। ये तो एग्जिट पोल है ना, एग्जिट पोल में 2% इधर उधर हो जाती है, फिर क्या होगा? ±3% है। आप नर्वस तो हैं, देखिए आप नर्वस हैं जफर जी, यू आर नर्वस। बातों का जवाब दे रहे हैं जफर जी। देखिए जफर जी आप मेरे पुराने मित्र हैं। 1942 जी, मुझे आपको जवाब देने दीजिए। आप बोलिए अर्नब जी, आपने जो प्रोजेक्शन दिखाया है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं, वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए उसमें आप हमें देख रहे हैं कि छोटी जीत दिखा रही है, बहुत भारी जीत नहीं है। लेकिन हमारे जो आंकड़े बताते हैं, इंटरनल सर्वे हमारा है, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बेसिस पे जो हमें है, उस पे बेसिस पे सबसे पहले इसके 40 के हैंडल में होगा 4200, 4300, 4400। 40 और 44 के बीच में हमें कहीं पर हमारी सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान हमारे
बेस्ड ऑन फीडबैक जो हमें जमीन से अपने पन्ना प्रमुख, अपने लोकल लीडर्स, अपने लोकल कार्यकर्ता जो घर घर तक जाते हैं। पुष्पेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी इस पर आप रिएक्ट करें, क्योंकि जो बात जफर जी कह रहे हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हर बार ऑल्टरनेटिव सरकार बनाती है हर 5 साल। और पुष्पेंद्र जी, ये अगर इस बार बीजेपी इस ट्रेंड को बदले, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे बीजेपी स्वीप नहीं करेगी, अरे स्वीप करना क्या, अगर बीजेपी को इतनी सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1985 से लेके अब तक 2022 तक कभी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं बनी है, यानी कि कोई भी पार्टी 2 बार चुनाव नहीं जीती। क्या आपको लगता है यह बदल सकती है इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक तो जो आप ट्रेंड बता रहे हैं वो, और दूसरा ये है कि अब जो चुनाव हुआ है वो मोदी के इस दौर में हुआ है, और इस वक्त जो स्थिति है मैं उसमें ये मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि देखिए वो तमाम सारे जो जहां चुनाव हो रहा है वो मोदी के फेस पे हो रहा है चुनाव। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपनी पिछली सीटों के बराबर भी आ जाएगी, तो भी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी। भारतीय जनता पार्टी जी क्या बोल रहे हैं आप? पिछली बार जितनी सीटें मिली थी आप कह रहे हैं पिछली के बराबर भी आ जाए, तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी 2017 की सीट भी आ जाएगी तो बहुत, मैं समझता हूं कि ये उनकी जीत से बड़ी जीत होगी। मैं ये मानता हूं अगर वो अपना पिछला रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लें तो। मगर पिछला रिकॉर्ड तो काफी अच्छा था उनको। पिछली बार तो उनको कितने सीटें मिली थी, कितनी परसेंटेज वोट मिली थी ऐश्वर्या, अभिषेक? पिछली बार बीजेपी को मिली थी हिमाचल में 2017 में 48.8, 48.8, 2012 में 38.5, 2007 में 43.8 और 2003 में 35.4। तो पिछली बार से भूल गए, पिछली बार से ऐश्वर्या जी आप एक बात भूल गए जी। आप बताइए कौन सी बात आप भूल गए? मैं 44 सीट, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसमें जी, क्योंकि नहीं एक बात आप ऐड करना भूल गए, वो ये है कि जितने हमारे दर्शक के नंबर देखे, करीब 45% वोट आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, मगर 2019 में अभिषेक बीजेपी को करीब 70% वोट हिमाचल में मिले थे। 70% बहुत बड़ी बात होती है। और कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर 2019 के आम चुनावों में सिर्फ 27.5% वोट उनकी थी, और एक भी सीट उनको हिमाचल से नहीं मिली थी। तो जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी पुल है, जो एक नरेंद्र मोदी फैक्टर है, बिल्कुल, जिसको कहा जाए एक तरह से सुचरिता दीप्ति मोदी वोट, जो वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे आते, बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रांग है हिमाचल में। ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है मैंने अर्नब इसी बात से करी थी कि ये नरेंद्र मोदी मुश्किल है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बेंचमार्क सेट करने वाला चुनाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिमाचल में आप कह रहे हैं? नहीं, दोनों राज्यों में प्रोफेसर अर्नव ये मैं अभी तक के आकलन से बिल्कुल असहमत हूं। गुजरात के नंबर दिखा दें। नहीं, कई दर्शक पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये मत भूलिए कि यदि हम ये कहते हैं कि गुजरात का इलेक्शन, तो वहां पर कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं। थोड़ा सा संघ वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पुष्पेंद्र जी वैसे पुरानी लड़ाई है, मान लीजिए, नई बात थोड़ी है, पुरानी है। नहीं, मैं उस बेसिस से नहीं कह रहा हूं। सुचरिता, दीप्ति और सोहेल, अगर आप गुजरात के प्रोजेक्शंस ऑन स्क्रीन कर दे तो कई दर्शक फोन कर रहे हैं। दोनों आपने कहा था दोनों राज्यों को बताएंगे जी। गुजरात का वोट शेयर एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद सीट्स कितनी आ रही गुजरात में। एग्जिट पोल पी मार्क और रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल जरा दिखा देते हैं एक बार। गुजरात की आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी को 48.2% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को 32.6 उनका वोट। ये तो मैसिव है, मैसिव। कांग्रेस का वोट शेयर 15.4। हाँ सर, कांग्रेस का वोट शेयर काफी गिर रहा है। बीजेपी का वोट शेयर 49-50 के आसपास रहता है, तो लगभग सस्टेन कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बहुत गिर रही है। कांग्रेस जो 42% थी ना, वो 32%, यानी 10% वोट शेयर कांग्रेस का गिर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो हमारे ओपिनियन पोल में 20% पर भी वो उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे ये भी कम है, वो 15% पर आ गए। और ये सीट में जब कन्वर्ट होगा तो सामने आएगा। सीट में होते ही ना बिल्कुल बवाल हो जाता है, जैसे कहते हैं।
बीजेपी इस बार जो कह रहे थे नहीं, 128 जी अर्नब, नहीं, मैं कह रहा हूं ये तो बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। जो बीजेपी पिछली बार 99 सीटें मिली थी, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जा रहा है 128 से लेके 148, यानी कि 138 की हाफ वे मार्क है, और उनको वोट शेयर वहां पे 48.2%, यानी कि हर दो में से हर एक वोट बीजेपी के लिए गई है, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस फॉर द बीजेपी। आप ये समझो, नहीं, अभिषेक, दिस इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस करना फॉर द बीजेपी। अभिषेक मेरी बात सुनो, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। नहीं, अभिषेक मेरी बात सुनिए, अभिषेक ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो नहीं पार्टी तोड़ो यात्रा है। बिल्कुल। ये तो पार्टी टूट गई इनकी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी पब्लिसिटी मशीन इनके पीछे ट्विटर कर रही है, मगर आप समझ नहीं रहे, -10% बहुत बड़ी चीज होती है। दर्शक समझ ले, -10%। कोई पार्टी ऑपोजिशन में रहते हुए आज तक बता दे मुझे, और इससे एक बात और तय हो गई ऑपोजिशन से। नहीं, अभिषेक आप पावर में नहीं हो गई, जो पावर में पार्टी होती है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, वही तो एंटी ऑपोजिशन बात और तय हो गई। जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इनकम्बेंसी वोट है गुजरात में, जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी कांग्रेस पार्टी की 2017 में 77 सीट की, वो सिर्फ हार्दिक पटेल के कारण थी, वो सिर्फ जीएसटी के कारण थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि नरेंद्र मोदी ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं थी। नहीं, लेकिन आप देखिए तो आप बीजेपी का कह रहे हैं, इनकम्बेंसी वोट है 1980 से लेके अब तक। अभिषेक 1980 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें 1927 2002 में। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 138 सीटें मिलेंगी 7वीं बार अगर पावर में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी 99 से लेके 138। आपने कभी सुना है? आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, आज तक आपने सुना 39 सीटों की बढ़त राज्य चुनाव में 27 सालों के बाद? और ऑपोजिशन पार्टी के नंबर होने चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपोजिशन विपक्ष कुछ भी कहे, पर कोई भी पोलराइजिंग मुद्दा नहीं था, एकदम क्लीन चुनाव हुआ है। अपोजिशन ने, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो वहां आएंगे नहीं। आम आदमी पार्टी ने शुरू के 15 दिन कुछ जहमत उठाई, फिर छोड़ दिया, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहा है। अपोजिशन के पास पूरा मौका था, चाहते, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, अमित शाह मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अपोजिशन पूरी पिच खुली थी, बैटिंग कर सकते थे, छोड़ दिया उन्होंने। तो कोई पोलराइजेशन वाला इशू नहीं है, कोई पोलराइजेशन वाला इशू नहीं है, फिर भी अपोजिशन ने नहीं किया। इससे पता चलता है कि कितनी जड़ें मजबूत हैं बीजेपी की गुजरात में। अगर ये संख्या सही है। अभिषेक क्या जी, अभिषेक सुनिए, आप सॉरी, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के जितने मीडिया पार्टनर हैं, इतनी कोशिश, बस में बैठ के कोशिश, ट्रक में बैठ के कोशिश, सभा पे सभा, स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप, केजरीवाल जी के एक के बाद एक इंटरव्यू। अरे उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिले, 2 सीट देखा, 2 से 10, कितने सीट? 2 से 10 सीटें दिख रही हैं। 2 से 10 कितने सीटें दिखा रहे हैं? 2 से 10 यानी कि एवरेज 6। हाँ, एवरेज 6, 15% वोट। तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो गोवा में हुआ वही तो हो गई ना गुजरात में। गोवा की जो परफॉर्मेंस थी वो गुजरात में प्रोजेक्ट हो गई। आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? आप उस बात से हटके बात क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जितने ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, वैसे वो रिपब्लिक भारत से तो डरते हैं, मगर उनको पूछिए आप कि आपका क्या हो गया? सेठी जी बैठे, सेठी जी को हिमाचल में कहीं नहीं रहे, आप गुजरात में कहीं नहीं रहे, आप म्युनिसिपैलिटी में सब जगह हैं। आप ये कह रहे हैं अब ये क्या रिजल्ट है? बिगर पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए। 2024 के लिए चैलेंजर कौन है? मैं कह रहा हूं प्रधान, मुझे बताइए। 250 सभाएं करी, अजय आलोक बिग पिक्चर बताइए, बिग पिक्चर। ये तक वाले दिखाएंगे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, हम राष्ट्रीय स्तर पर एनालिसिस करना है, इसका बिग पिक्चर क्या है बताइए मुझे। क्यों नहीं गए? बिग पिक्चर क्या है? बात गुजरात की हो रही है क्या मसला की तरह? अरे पंजाब में सरकार तो कभी है कभी नहीं है। पिक्चर इसका यही है। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री कौन है? बात कर रहा हूं, आप डंका बजा रहे हो जिस बात का, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं।
प्रधानमंत्री ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में सभाएं करते हैं ना एमसीडी चुनाव में, फिर नतीजे बताते हैं। अभी तो ये एग्जिट पोल है, पंजाब में जाके सभाएं करते हैं, फिर नतीजे बताते हैं कितने लोकप्रिय हैं। अभी गुजरात के नतीजे नहीं आए हैं, ये एग्जिट पोल है, नई पार्टी है। ये मीठा मीठा गपगप आप थोड़े कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा देखिए, वोट कटवा कीजिए आप, वोट कटवा और अभी आप बात का जवाब नहीं दे रहे। पंजाब में क्यों नहीं सभाएं करी प्रधानमंत्री जी ने, इतने लोकप्रिय थे तो? पंजाब में करी थी जी, पंजाब में आपने रोक लिया, अच्छी बात है, रोक लिया ना भाई। डेमोक्रेसी को इसी को तो कहते हैं, लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं। 6 महीने से करा नहीं रहे थे, गुजरात में इतनी घबराहट और इतनी बौखलाहट। अजय आलोक कुछ कह रहे, अजय आलोक फटाफट, अजय आलोक कुछ कह रहे, अजय आलोक डिबेट आगे ले जाए, डिबेट आगे ले जाइए, डिबेट आगे ले जाइए, डिबेट आगे ले जाइए। साबित हो गई है अजय आलोक, एक चीज साबित हो गई है आपके, एक चीज साबित हो गई है इस एग्जिट पोल से कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ की भूमिका में पूरी तरह से आ चुकी है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे गुजरात हो। दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि वोट काटते काटते ये कांग्रेस को ही काटने निकल चुके हैं। कांग्रेस का लीडरशिप इसके लिए बिल्कुल बेखबर है, और कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में और क्या कहना है सर? वो तो कैंपेन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अगर नेता ही नहीं जाए तो फिर कांग्रेस से यह तो होना ही था। 10% वोट घटा कांग्रेस का और 15% आम आदमी पार्टी को वोट आए। ये साफ साफ कहता है कि आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। पर कांग्रेस में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बीजेपी जहां पे गुजरात में वोट शेयर में थी नहीं, आप बोलिए ना, जवाब दीजिए सेठी साहब। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस, ये जो आपके 10% वोट कम हुए हैं, बिल्कुल ये जो 10% वोट कम हुए, ये इसलिए कम हुए, नहीं इसलिए कम हुए हैं कि राहुल गांधी गए नहीं, या राहुल गांधी नहीं गए इसलिए 32 तो आ ही गए। हिमाचल में बड़े नहीं बड़े, हिमाचल में राहुल गांधी जाएं या न जाएं कोई फर्क नहीं। विरोधी वहां नेता, वहां लोग कह रहे हैं, अभी हमने बात की, लोग कह रहे हैं राहुल आए होते तो और बुरे हाल होते। कर रही है, नहीं कौन ले गया ये तो बता दो, कौन ले गया है ही नहीं इलेक्शन में। आपने अभिषेक जी, आपने अभी बात छेड़ी, आपने कहा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में गए, वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, उस तरह से लड़े कि वो मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल में हम बढ़े हैं, ये अगर आप अब एग्जिट पोल को हम ठीक मान लेते हैं, मान लो हम ठीक मान लेते हैं, हम यहाँ भी तो बढ़े हैं हिमाचल में। और जहां तक आपने गुजरात की बात की, अभी समय आने दीजिए, अभी एग्जिट पोल है, जैसे होगा। हमें नहीं उम्मीद कि हम 10% नीचे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा अभिषेक जी, ना अर्नब जी को चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल है। अभी इसी से चाहिए ना, अभी इसी से मान लीजिए, कौन ले गया ये? देखिए, जिस प्रकार से अगर कौन ले गया, जैसे आपने बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल। अभी संगीत रागी जी एक बात करे थे, अरे कौन ले गया ये? बिल्कुल, अगर आम पार्टी का 15, उसके आगे आऊंगा, पर बताइए ना कौन ले गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ अभिषेक जी, आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगा। अगर हमारे परसेंटेज कम होती है, आप पार्टी वहां पे नई पार्टी आती है, अगर उसमें हमें नुकसान होता है तो हम मानते हैं कि इनकी वजह से नुकसान हुआ, तो मानो, मान लेंगे, मानो ना। ऐश्वर्या अभी को मान लें, अभी तो जल्दी है, अभी तो एग्जिट पोल है, अभी तो भारत जोड़ो है। अरे भारत जोड़ो चल रहा है, भारत जुड़ गया ना हिमाचल में, अभी तो हिमाचल में भारत जोड़ो। आप इरफान त्रिवेदी को पूछिए, हिमाचल में जुड़ गया ना। कुछ कह रहे, जफर साहब कुछ कह रहे, बोलिए। आप इरफान त्रिवेदी जी से रिएक्शन लीजिए ना, ये अहमदाबाद से हैं, ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े प्रशंसक और सपोर्टर है, इनको पूछिए ना, आप वहां बैठे हुए हैं, पूछ रहा, उनको लग रहा है सब कुछ गलत दिखा रहे हैं हम। इरफान जी बताइए, देखिए ये बहुत बुरा हो, जो भी कहिए इरफान जी, ये बहुत बुरा हो रहा है। नहीं, मैं 48 मिनट से सुन रहा हूँ, मैं 48 मिनट से सुन रहा हूँ, इसलिए और भी 2 मिनट सुन लेता हूँ। बोलिए ना, क्यों परेशान हो? मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये है ना, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको सिर्फ 10 या 15% वोट मिले और 5-6 सीट मिले, तब तो ये बहुत, मतलब आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप गुजरात में इम्पैक्ट नहीं कर पाए, बंगाल में आप नहीं हैं, हिमाचल में फ्लॉप शो हो गए, बाकी बचा था गुजरात। अब मैं म्यूनिसिपैलिटी की कवरेज नहीं करता, मैं राज्य सरकारों की बारे में बात करता हूँ। अगर इधर आपकी ऐसी रिजल्ट हो गई ना, तो आप शेकअप नहीं कर पाए ना, इसका कारण क्या है ये बताइए। क्रेडिबिलिटी की इशू है, लोकल नेता आपके ठीक नहीं थे, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम थे। सबसे पहले बीजेपी फ्रेंडली मीडिया, आप ईडी को तो जिम्मेदार नहीं मानते ना इसके लिए, क्योंकि आप देखिए त्रिवेदी जी, देखिए एक ही दिन बताया, और एमसीडी में सत्येंद्र जैन के वीडियो के ऊपर इतनी सारी डिबेटें की,
अब वो मीडिया ऐसा बोले कि नहीं भैया हमें एमसीडी नहीं दिखाना है, हम राज्य सरकार दिखाएंगे, तो मैं तो गुजरात में हूँ, मैं तो गुजरात की बात करूंगा। तो मैं आपको गुजरात की बात बताता हूँ कि ये जो है कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो 2017 के इतिहास में, जहां भारत के इतिहास में 99 भारत के इतिहास में आज तक, सुनिए एक मिनट, भारत के इतिहास में आप जफर जी के साथ डिबेट करें, मैंने कभी नहीं देखा इतनी ज्यादा रुचि एक पार्टी की म्युनिसिपैलिटी चुनाव में, मैंने आज तक नहीं सुना। आप अभी भी गुजरात के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा जफर जी कह रहे हैं मैं गुजरात के बारे में नहीं बोलूंगा। अभिषेक जी क्या है तो सिर्फ 1 मिनट में सीधा जफर भाई के ऊपर। अभिषेक जी ये नहीं बोल सकते इसलिए कि गुजरात में जिस तरह से इन्होंने कहा सरकार बनाएंगे, बार बार दावा ठोका सरकार बनाने का, आज एग्जिट पोल दिखा रहा हूं। और वैसे भी आप देखिए जो आम लोगों की बात है, आप सड़क पे किसी से चलते हुए पूछिए, आपके बारे में पूछिएगा तो आम आदमी के पार्टी के बारे में एक ही बात कहेगा कि उसका कोई वर्चस्व यहाँ नहीं है, कोई इसका प्रेजेंस नहीं है, छोटा मोटा कुछ इलाकों में है और उसी की वजह से आप 7-8% 5% वोट आ जाए तो आ जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर देखिए तो कोई उसके बारे में न जानता है ठीक से, न पहचानता है। केजरीवाल जी बार बार कहते रहे कि हमें सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे तो लगता है भाजपा दुखी हो गया, बिल्कुल सफा गुजरात हो चाहे वो आप देखिए इसमें, और इवन दिल्ली के इलेक्शन में आप सरप्राइज होंगे, अभी आपको आपका नंबर ज्यादा दिखा रहे हैं कुछ चैनल, लेकिन हकीकत में आइए तो आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद आप जो एमसीडी की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़ा झटका लगने वाला है। जो ऐसा गुजरात में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, जैसा आपको जनरल इलेक्शन हुआ एक बार जो हम इस वक्त हमारे आई थी वैसे क्षेत्र के हिसाब से रीजन वाइज बता रहे हैं कि किसको कितना गेन किस रीजन में हो रहा है। इसलिए अभी जब हम नॉर्थ गुजरात के दिखा रहे थे, उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात के जो नंबर हैं उसमें बीजेपी 32 से 40, कांग्रेस 12 से 18, आम आदमी पार्टी अगर उसे सीट मिलती है या फिर 2 तक खींच सकती है और अन्य को 1, यानी कि बीजेपी 32 से 40 नॉर्थ गुजरात, और नॉर्थ गुजरात बीजेपी के लिए उसका कर रहा है, राजस्थान से मिलता है तो वहां पर वो सीटें निकालती रही है, यहाँ पर भी वो कैपिटलाइज कर रही है बीजेपी 32 से 40। और हम बिल्कुल हम आगे चलते हैं, उत्तर गुजरात के बाद सीधा चलते हैं मध्य गुजरात। मध्य गुजरात यानी सेंट्रल गुजरात और इसकी सीटें बीजेपी 25 से 34, कांग्रेस 8 से 14, आम आदमी पार्टी वही 0 से 2, 0 से 2 और अदर 0 से 1। इसके बाद तीसरा ये अभिषेक तीसरा आ गया दक्षिण, बिल्कुल ऑन एयर अभिषेक। बिल्कुल देखिए जो दक्षिण गुजरात जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है बीजेपी का, उसमें सूरत भी आता है। सूरत की जो 12 सीट है पिछली बार 12 की 12, इतनी बातें हुई कि जो पाटीदार मूवमेंट है वो सब चलेगा और उसके बावजूद भी हमने देखा किस तरह से जी बिल्कुल। और वो दक्षिण गुजरात की जो सीटें अभिषेक वो है 25 से 32, कांग्रेस है 3 से 9, आम आदमी पार्टी 1 से 3। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को जो मिलेगा सिर्फ दक्षिण गुजरात में मिलेगा, मैं समझता हूं सूरत में मिलेगा, 1 हो 3 हो, वराचा हो, कतारगाम हो और करंज हो या जो भी सीट है वहां की ओलपाड हो। उसके अलावा आप देखें तो बीजेपी अपना दबदबा बनाए हुए है दक्षिण गुजरात में और उसका जो पूरा राज्य का टैली है, नहीं वडगाम तो उत्तर गुजरात में है, ये दक्षिण गुजरात की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 से 32 सीट ला रही है, कांग्रेस 3 से 9, आम आदमी पार्टी 1 से 3। अगर हम उसमें आंकड़ों में वो देख लें कि प्रतिशत के हिसाब से कैसा है तो क्या वो पूरे राज्य से मेलता जुलता है, वो अगर हम देख सकते हैं। बिल्कुल गरिमा। और अब एक जी अगला आंकड़ा दक्षिण गुजरात का अगर रखें, ठीक है, हम दक्षिण गुजरात के आंकड़े देख रहे थे, अभी अभिषेक ने वही बताया। अब अगला है सौराष्ट्र और कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ जहां पर हमने देखा फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई है, 54 सीटें हैं, यहाँ पर 32 से 42 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, कांग्रेस को 12 से 18, आम आदमी पार्टी 1 से 3 और इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर 1। अब रिबेल फैक्टर यहाँ पे कैसे काम किया है वो भी देखना जरूरी होगा। मुझे लगता है कि उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसने भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प कहीं किया है। अगला रीजन आई थिंक सोहेल पूरे गुजरात की तस्वीर क्या निकल कर आ रही है ये आपको बताने जा रहे हैं, जिसका सभी को इंतजार था कि गुजरात से क्या तस्वीर आ रही है। देखिए आपके सामने गया उत्तर गुजरात 32 से 40 बीजेपी, 12-18 कांग्रेस, 0 से 2 आम आदमी पार्टी, मध्य गुजरात 25 से 35 और कांग्रेस 8 से 14। दक्षिण गुजरात में, साउथ गुजरात में 25 से 32 बीजेपी है और 3 से 9 कांग्रेस है। सौराष्ट्र में 32 से 42
बीजेपी है, 12 से 18 जो है वो कांग्रेस है। जो बात अभिषेक कह रहे थे, अगर कुछ मिलेगा आम आदमी पार्टी को तो वो दक्षिण गुजरात से मिलेगा, लेकिन अभिषेक यहां आम आदमी पार्टी को वो भी सिर्फ सूरत में, तो ये पूरी शक्लो सूरत निकल कर आ गई है। पूरे गुजरात की रीजन वाइज कहां किसे क्या मिलने वाला है, लेकिन जो पूरी पिक्चर है वो ये कह रही है कि फिर से बीजेपी आ रही है। न सिर्फ आ रही है बल्कि 148 इतनी सीटें आज तक में नहीं मिली। 148 भारतीय जनता पार्टी के मोदी मतलब जीत की गारंटी एकदम। गुजरात में तो खैर परसेंटेज भी कम हुई है। क्या कम हुआ है? गुजरात की परसेंटेज भी तो कम गई है बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी सीट हिस्ट्री बन रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अब कहीं ना कहीं कुछ तो ढूंढेंगे खुश होने के लिए। हम हिमाचल में तो बना रहे हैं ना। आप 77 से नीचे 30 से 40 पर आ गए। केजरीवाल के एमसीडी से भी खुश हो सकते। नहीं सुचरिता ये लोग मानने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी फैक्टर। ये फैक्ट ये मानने को तैयार नहीं। आज की वोटिंग देखिए आप, गुजरात में करीब 60% है कि नहीं? सुचरिता आप बताइए, करीब 7% है कि नहीं? अब बीजेपी 1995 से जीत रही है, और एक बार भी हमारे अभिषेक एक्सपर्ट है गुजरात के, बता दे हमें कि क्या कभी वोटर टर्नआउट करीब 60% के करीब रहती है कि नहीं? 3 इलेक्शन उससे पहले कांग्रेस सरकार में आई, हर बार जो वोटर टर्नआउट हुआ करता था वो 52-53% 55 से कम था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब टर्नआउट 60% होती है, ये डायरेक्ट बीजेपी का प्रभाव है। ये समझने की इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब राज्य अब कोई कुछ कह दे कि आपकी एग्जिट पोल अच्छी है नहीं अच्छी है, मैं एक मिनट और एक आंकड़ा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 22 सीटें अभिषेक। दोस्तों इसको समझे कि 22 सीटें हैं जहां पे जो वोटर टर्नआउट है वो 15% से घटी है। इनमें से कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 15 हैं। 36 सीटें हैं गुजरात में जहां पे वोटर टर्नआउट 10 और 15% से कम हुई है। इनमें से कांग्रेस के 14 हैं और बीजेपी के 21 है। मैंने पूरा एनालिसिस किया इसका मतलब क्या है? जो आज की वोट है ना, ये लोग माने कि नहीं माने कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जीप में बैठकर उस तरह से कैंपेनिंग करते हैं, 4 से 5 घंटे, दिन में 5 रैली, उसका पूरा प्रभाव गुजरात में। आप देखिए ये नंबर, आज कोई भी कहेगा हमको 50 किलोमीटर लंबा रोड शो और ना 15-15, 16-16 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो आज जो गुजरात में देख रहे हैं, ये वेव नहीं है, ये भयंकर वो मोदी को वेव है गुजरात के सेकंड फेज में एटलीस्ट। लेकिन दीप्ति 50-50 बहुत बड़ा वेव है। 15-15, 16-16 कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही दिन में दीप्ति, और फिर इनको लगता है कि भाई कि नरेंद्र मोदी करते क्यों है? नरेंद्र मोदी जो सोहेल करते, नरेंद्र मोदी करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। दीप्ति तभी आई थिंक अर्नब जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी इज अनबीटेबल, एंड आई थिंक जितना जल्दी ऑपोजिशन ये समझ जाए और एक नीति डिवाइस करे उसके लिए अच्छा होगा। बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज इन डिनाइल, कांग्रेस पार्टी तो हमें पता ही नहीं कि वो चुनाव लड़ना भी चाहती है नहीं लड़ना चाहती। जी अर्नब। दीप्ति हमारे पास मैंने अभी तक पोल ऑफ और इनफैक्ट अर्नब आपको याद होगा एक पोल में हमारे हाथ में आ गया, वो मैट्रिक्स का पोल है। जी और हमारे साथ पी मार्क के आदमी भी जुड़ गए। अर्नब हमारे साथ पी मार्क के आदमी भी जुड़ गए। पी मार्क के आदमी भी हमारे साथ जुड़ गए। पोल ऑफ पोल्स भी आ रहा है, लेकिन पी मार्क के आदमी अगर आप सवाल लेना चाहें तो जी आप करिए जी बिल्कुल। तो अभी पीमा के ये 2 जो हमने अभी मतलब एग्जिट पोल सबसे पहले जारी करे हैं, ये जरा आप हमें बताएं कि आपका एक तो जो मेथोडोलॉजी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं, बोलो जी ये देखो भी मतलब सिर्फ अभी मतलब एग्जिट पोल है, इंतजार करिए रिजल्ट कुछ अलग होगा, तो आपका क्या जवाब है इनको? जी पीमा के नुमाइंदे। Hi Aishwarya. जी hi, how are you? मतलब good evening to all the fellow panelists as well. देखिए जो मेथोडोलॉजी और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारा रिपब्लिक की पार्टनरशिप के साथ की, इन एवरी इलेक्शन सो फार हमने जो विनर है वो सही बताया है। एंड दोनों मद्देनजर देखते हुए हिमाचल और गुजरात इलेक्शन जो मेरे हिसाब से कई की फैक्टर थे, आपने काफ़ी हल्ला मचाया। एंड सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई मीडिया इंटरव्यूज़, कई ये चीज़ें हुई, बट उसका ग्राउंड में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई उसमें उसका प्रभाव नहीं दिखा इतना, और इसकी वजह से कांग्रेस का वोट शेयर एज अ वाइबल ऑपोजिशन जो देख रहे थे वो कम हुआ ज़रूर।
लेकिन इसका बीजेपी को फायदा हुआ और वो एक ऐतिहासिक विक्ट्री की तरफ जा रहा है, ऐसा हमारे सर्वेज और इलेक्शन पर जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है। हिमाचल में कई लोकल मुद्दे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये महिलाओं को जो 1500 रुपए का पेंशन है उसकी जो योजना की गई है, कई लोकल फैक्टर्स थे, कई रेबल कैंडिडेट्स, बागी कैंडिडेट्स, मोदी फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ना लोगों को, विपक्ष को मोदी फैक्टर से है। तो जरा मोदी फैक्टर के बारे में बताइए, मोदी फैक्टर में आपके क्या फैक्ट्स, क्या आपके जो नंबर्स हैं गुजरात में मोदी फैक्टर के ऊपर? जी अनिमेश जी, गुजरात में अगर देखा जाए, अगर हमने लोगों से बात की, वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़े नाखुश है, ऐसे लोग मिले। वो जो भी स्कीमें हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे नाखुश है, वो थोड़े बहुत लोग दिखे। वो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, उससे नाखुश है, वो दिखे। बट किसी ने भी अक्रॉस, हमने जिस भी जिलों में बात की, अक्रॉस जातियाँ जिससे बात की, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी मेंटेन्ड है। 8 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, गुजरात बड़ी बात, बट वो लोकप्रियता और बड़ी बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर है। बड़ी बात इसी डिसिसिव फैक्टर की वजह से है जो कि बीजेपी जो है वो एक ऐतिहासिक। अनिमेश, अगर 2002 से सीटें देखें बीजेपी की तो 127, 117, 115 ये घटी हैं, 99। लेकिन आपका सर्वे अब 2022 में एकदम से एक बड़ी छलांग दिखा रहा है बीजेपी के लिए, 128 से 148, यानी 99 से ये बहुत बड़ी छलांग है। उसका एक बड़ा कारण क्या है? अगर आपको एक कारण बताना हो कि ये इतनी बड़ी छलांग 2017 से कैसे लगाई बीजेपी ने? देखिए, 2 बड़े कारण हैं। एक तो है कि जो फाइट है वो थोड़ी त्रिकोणी बन गई थी, ट्रायंगुलर बन गई थी आम आदमी पार्टी के आने से। और दूसरा है, मतलब गुजरात इतना इम्पोर्टेंट प्रदेश है, इतना बड़ा इलेक्शन है, उसमें अगर सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप कोई कैंपेनिंग ही ना करे तो उसमें जो वर्कर हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उसमें कैसे जोश आएगा? तो उसकी वजह से साइलेंट कैंपेन जो भी है, जिसकी वजह से वो अभी भी नंबर 2, और जो उनका संगठन है, जो 40-50 साल से जो संगठन बना हुआ है, उसकी वजह से अभी भी नंबर 2 आ पा रहा है। देखिए, इसका एक डायरेक्ट मैसेज नहीं, इसका एक डायरेक्ट मैसेज है। और अगर हम जरा मल्टी ऑनर गरिमा, साल की गवर्नमेंट नहीं, इसका एक डायरेक्ट मैसेज है। हर्षवर्धन जी आ गए। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसका एक क्लियर मैसेज है कि मोदी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है विपक्ष। कांग्रेस तो कोशिश भी नहीं करता, कांग्रेस तो हथियार डाल चुका है। गरिमा के अनवय पौने मैं कह रहा हूं भाई, कांग्रेस तो हथियार डाल चुका है, लेकिन हर्षवर्धन जी, आम आदमी पार्टी हो, इधर हो उधर हो, कोई हो, किसी को तोड़ नहीं मिला है। मोदी और शाह डुओ का भी, और नरेंद्र मोदी एज एन इंडिविजुअल। नहीं ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है, ये एक बड़ी बात स्थापित करने जा रहा है कि भारतीय राजनीति में नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता भरोसा नहीं करने वाली। आप हर बात पर निगेटिव कमेंट करके सोचेंगे, और एक और जो मन में रहता है ना कि आज नहीं तो कल कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 27 वर्ष तक सत्ता में है तो जाएगा ही जाएगा, यानी हम कुछ नहीं करेंगे तो नकारे नेताओं को, पहला निगेटिव कमेंट करने वाले लोगों को पसंद नहीं कर रही जनता, दूसरा नकारे नेता। नकारे शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, कोई है सत्ता में आया, राशिद अलवी जी, और उसको लेकर एक शब्द निकाला गया, एंटी इनकम्बेंसी। राशिद अलवी जी आया है वो बुरा करेगा। राशिद अलवी जी हमेशा गलत काम बोल रहा हूं जी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं वापस आपके पास। कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद राशिद अलवी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राशिद अलवी जी, कहां है कांग्रेस, कहां जोड़ने में लगे हैं आप भारत को? मुझे भारत तो फर्स्ट क्लास है, जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। गुजरात में 10% का डिक्लाइन, गिरावट दिखा रहा है वोट शेयर में राशिद अलवी जी, गुजरात में, और हिमाचल में भी हार रहे हैं आप। राशिद अलवी जी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में हम जरूर कमजोर हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, इतनी मेहनत नहीं हो पाई है। और एक ये भी फर्क होता है, जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री हो, वहां पे लोगों के अंदर एक एहसास रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री है। गुजरात के लोगों को ये भी एहसास है। हालांकि गुजरात में विकास नहीं हुआ है, गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, किसान के लिए पैदावार के लिए पानी नहीं है। अभी आपने देखा कि ब्रिज गिर गया, 100 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री पोलिंग स्टेशन पे तो जा रहे हैं, वहां पे लोगों का हाल पूछने के लिए नहीं गए।
कितनी तकलीफ की बात है। जो प्रधानमंत्री जनता की बात करता हो वो जनता के मरने पे उन लोगों के, लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राशिद अल्वी जी, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी कांग्रेस को दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री चल क्यों दिए ना सोहेल सुचरिता। अभी अभी और न ब्रेकिंग आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने रबिश कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है दीप्ति कांग्रेस की इस कंप्लेंट को कि भाई अब चलने से भी रोक दे क्या। राशिद अल्वी जी, दिक्कत क्या है, कांग्रेस अभी भी 2017 में अटकी हुई है कि 2017 में भी कंप्लेंट किया था, कुछ नया तो हुआ नहीं, वही कंप्लेंट दोबारा कर दो। नरेंद्र मोदी सुबह गुजरात में थे, वोट डाला, दोपहर को दिल्ली आ गए, 2024 की स्ट्रेटेजाइज। ऐसी इलेक्शन मशीनरी के साथ दीप्ति कांग्रेस को टक्कर लेनी है, और ऐसी इलेक्शन मशीनरी और ऐसे दो नेताओं के साथ टक्कर लेने के लिए राशिद अल्वी जी 2017 से आगे आना पड़ेगा। 2013 में जो कंप्लेंट किया वही दोहराएंगे 10 साल बाद, तो कैसे चलेगा दादा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट ठीक की थी, लेकिन इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के फैसले नहीं करता। आप देख तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर फाइल हवाई जहाज की तरह दौड़ती चली जाती। और मैं आपसे ही पूछता हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हिमाचल की तारीखें ऐलान कर दी इलेक्शन कमीशन ने, गुजरात की क्यों ऐलान नहीं की? आपको मालूम था कि गुजरात की तारीखें होनी हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्यों तारीखों का ऐलान नहीं किया? आपकी भी जिम्मेदारी है, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। और मैं तो बहुत अरसे से नहीं लगता कि कांग्रेस के ये जो बहाने हैं ना सर, कांग्रेस के ये बहाने हर इलेक्शन में हम सुनते हैं। कांग्रेस क्या इलेक्शन लड़ना चाहती है या एक एनजीओ बनना चाहती है कि लोगों को जोड़ना है, लोगों से बातचीत करनी है, सिर्फ संवाद तक करना है? अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको इसी सिचुएशन में जीतना पड़ेगा। अगर आप 27 साल बाद भी सर बीजेपी को गुजरात से नहीं निकाल सकते, एक आम आदमी पार्टी आकर 15% का वोट शेयर ले लेती है, आपका वोट शेयर 10% गिर जाता है सर, तो कांग्रेस कहां है? कैसे लड़ेंगे आप 24 का चुनाव? आपने एक जुमला बहुत सही कहा है, और ये जुमला मैं भी बार बार कहता हूं, पार्टी के अंदर भी कहता हूं, मीडिया से भी कहता हूं। आपने कहा कि इन्हीं हालात में कांग्रेस को जीतना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो इन्हीं हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उधर खड़ा है, एजेंसीज उधर खड़ी नहीं, ये तो आपकी रीडिंग है ना सर, ये तो आपकी रीडिंग है। देखिए ये आसान होता है, आप मीडिया को अटैक कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को अटैक कर लीजिए, ईवीएम खराब है बोल दीजिए। अगर आप हिमाचल में जीत जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाता है, आप गुजरात में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। लेकिन ये देखिए ना कि क्या लोग आपको बिलीव करते हैं? लोग तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप राहुल गांधी की पदयात्रा देख रही हैं, हजार आदमी उसके अंदर आ रहा है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको चुनाव नहीं लड़ना है सर? राशिद अल्वी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं या नहीं? देखिए, सत्ता हासिल करना अकेला मकसद नहीं हो सकता है। हम समाज को नहीं तोड़ना चाहते, हम देश को नहीं तोड़ना चाहते, हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। राशिद अल्वी जी, इन्हीं हालात के अंदर ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता, वही पूर्व सांसद राशिद अल्वी कह रहे हैं, जिसने देश पे हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रागी जी 50 साल से ज्यादा कर। अरे सर, आज जीत नहीं सकते, नहीं जीत नहीं सकते। दीप्ति तो कह रहे हैं नहीं जीत नहीं सकते। पुष्पेन जी के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आप दोनों के पास। पुष्पेन जी, आज राशिद अल्वी जी कह रहे हैं, और मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, पुष्पेन जी, राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि भाई जीत नहीं सकते क्योंकि हमें जीतना नहीं है। ठीक, पुष्पेन जी, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो जीतना ही नहीं चाहते, तो फिर उनको कोई जबरदस्ती तो जिताएगा नहीं। अब आप अगर देखें, पिछले काफी समय से भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उनको इतनी सीटें मिली इंदिरा गांधी की हत्या पे मिली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी सिंडिकेट के कारण बनी। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को बने, लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, तो ये सब तो प्रधानमंत्री ऐसे बने। अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें जीत नहीं दिलाई।
आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है तो एक्स प्रधानमंत्री है। आप मनमोहन सिंह की रैलियां कराते ना गुजरात में, अगर वहां प्रधानमंत्री कर रहा है तो कहते वो 250 क्यों कर रहा है? अरे आप मनमोहन सिंह को ले जाते। वो जो भारत जोड़ो यात्रा है और भारत छोड़ो यात्रा है उसको उनसे कहते कि गुजरात में करें। तो अब अगर दूसरा कोई कर रहा है तो आप कहते हैं 250 क्यों की? तो आपसे पूछ के करेंगे क्या? गौरव भाटिया जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर रैलियां की, यहाँ पर हमारे पास जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, पी मार्क ने एग्जिट पोल किया है, वहां उनके नुमाइंदे अनिमेश पांडे कह रहे हैं कि 77 सीटें कांग्रेस के पास थी गुजरात में, 20 का डिफरेंस था 2017 में आप में और कांग्रेस में। उस 20 को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उल्टा नीचे गिर गए हैं धड़ाम। 30 से 42 सीटें अब बता रहे हैं। यानी आप सोचिए कि अगर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, अनिमेश पांडे कह रहे हैं कि नेता की कमी है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कैसे किया जाए? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो रुझान आपके एग्जिट पोल में सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि उससे भी बेहतर परिणाम आएंगे और इतिहास रचा जाएगा। 27 साल बाद जनता फिर कह रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास है। ये हमारी पहली और आखिरी पसंद है। सुचारिता जी, भारत में राजनीति में 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल होता है और सरकारें बदल जाती हैं। जहां कांग्रेस शासित राज्य पंजाब। गौरव जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ। मेरे साथ इस समय गुजरात के गृह मंत्री और युवा नेता अभिषेक हर्ष सांघी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय। हर्ष, वेलकम टू रिपब्लिक। हर्ष, इस समय रिपब्लिक का जो गुजरात एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है भाई, हिस्ट्री इन द मेकिंग, 128 से 148। मेरे को जितनी जानकारी है, आपका भी जो इंटरनल सर्वे वो भी 138 दिखा रहा है मैक्सिमम। पीमार्क का ये जो सर्वे वो दिखा रहा है 128 से 148। हर्ष, जैसे डायलॉग होता है, खुश तो बहुत होंगे आज आप। देखिए, संबंधों का जो इतिहास होता है उसके नंबर्स लिखे नहीं जाते हैं। ये सत्ता का इतिहास नहीं है, ये संबंधों का नया इतिहास गुजरात भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक साथ मिलके बनाने जा रहे हैं। आज हमने रुझान देखे हैं और मैं स्पष्ट जमीन पे ये देख पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता गुजरात के चारों कोने में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने के लिए आगे निकल चुके हैं। हर्ष जी, आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमने लोगों से जाकर जब पूछा कि मुद्दा क्या है, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुद्दा है, मोदी को जिताना है, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। आपको लग रहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्ट गुजरात के लिए आज भी, जबकि 8 साल से वो केंद्र की राजनीति में है, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है? देखिए, मोदी जी आने संघर्ष, मोदी जी आने साहस, मोदी जी आने विकास का दूसरा नाम है। तो मुद्दा विकास का होगा तो मोदी जी आ ही जाएंगे। और ये है सत्ता, और सत्ता नहीं, सत्ता से ज्यादा विश्वास का मुद्दा। तो मोदी जी यानी विश्वास, और विश्वास के साथ विकास का मुद्दा था। विश्वास और विकास का मुद्दा एक भयंकर बड़े पैमाने में इस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और मुद्दा विकास का ही था और विकास का मुद्दा आगे बढ़ा है अच्छी तरह से। हर्ष भाई, अभिषेक बोल रहा हूं। नंबर तो आपके आ जाएंगे। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि आपके पड़ोस में वराछा रोड पे क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि ये जो नई पार्टी आई है दिल्ली से, कुछ वोट तो लेके जा रही है। देखिए अभिषेक जी, वराछा रोड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कुमार कानानी 15,000 से ज़्यादा मतों के साथ विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूरत शहर में सभी सीटों पे विजयी होने वाली है। अभिषेक जी, आप गुजरात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आपने गुजरात की ज़मीनों पे काम किया है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, ये बात सुन के मुझे बेहद दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के 2 युवाओं को 8वीं तारीख को इस्तीफा दे लेने के लिए कहा। फर्स्ट फेज के चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल ने ये दोनों नेताओं से बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने पंजाब और दिल्ली की जो सामान्य नागरिक है,
नहीं, आप वो दोनों को जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब चीज़ों की जानकारी रखते हो। आपके पास ये भी माहिती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे गुजरात के 2 युवाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है। उन्हें ये व्यवहार क्यों किया? दिल्ली और पंजाब के लोगों की जो मेहनत की कमानी थी वो गुजरात में प्रोपेगेंडा के रूप में उन्होंने उपयोग किए, और उसके बावजूद और ईशुदान गढ़वी की बात कर रहे हो में भी नहीं मिल रहा है गुजरात के कोई नहीं। मैंने आपको कहा ना, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, मुझे नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि मेरे गुजरात के कोई युवाओं के साथ इस प्रकार का अभी तो व्यवहार किया जाए। आप हो, महकमा आपके पास है, आप नाम बता दो, खबर बन जाएगी। नहीं, खबर तो आपके पास है ही, पक्की खबर है आपके पास जो है वो, लेकिन किस प्रकार से इस प्रकार से व्यवहार किया जाए, मेरे राज्य के नागरिकों को धमकाया जाए। ये 2 युवा, उसने भूल से भले आम आदमी पार्टी पकड़ ली हो, लेकिन ये दोनों युवाओं ने सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़े थे। आपने उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया कि दूसरे युवा कभी आम आदमी पार्टी की ओर देखेंगे भी नहीं कभी। क्या इसका नुकसान हुआ है? आपने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन पैसे से थोड़ी ना चुनाव जीता जाता है। क्या इसका गुजरात में नुकसान हुआ है? क्योंकि जो कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कुछ कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इटालिया ने, इसका नुकसान हुआ है। गुजरात के लोगों ने वोट किया है, ये गुस्सा भी लोगों में था कि उनके अपने बेटे के खिलाफ कोई ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, हम बहुत भावुक लोग हैं, हम मूर्ख थोड़ी ना है, भावुक लोग हैं, हम भगवान में मानने वाले लोग हैं, हम आस्था में मानने वाले लोग हैं। हमारे भगवान पे कोई इस प्रकार की बात करेगा, इस प्रकार की विचार रखेगा और ये विचार के साथ चुनाव लड़ने आएगा तो हिसाब तो जरूर से करेंगे ना। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तो मैं क्या बात करूं, वो मेरे देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर से है, लेकिन उनकी पार्टी के ही कुछ और नेता उनको नेता नहीं मानते हैं, तो वो दुख और वो बौखलाहट में वो गुजरात में आके कुछ भी बोलते हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दर्द की दवाई, भारतीय जनता पार्टी के पास ये दर्द की दवाई होनी जरूरी नहीं है। अच्छा हर्ष जी, एक सवाल बताइए। की दवाई जरूर से कर ली, ठीक है, ऑपोजिशन को छोड़िए, मुझे बताइए कि कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी फैक्टर ही अकेला रीजन है कि बीजेपी बार बार हर जगह जीतती है। लेकिन जो आपके स्टेट में बीते 8 साल में चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे विजय रूपाणी हो, आनंदीबेन पटेल हो, या अभी जो करंट आपके चीफ मिनिस्टर है, उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। एक जेनरेशनल चेंज, जेनरेशनल शिफ्ट लाने की बात है, तो क्या आप गुजरात के अगले भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के नेता है मोदी जी, करोड़ों भारतीय के नेता है मोदी जी, और करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा है मोदी जी पे। तो मोदी जी तो फैक्टर हमेशा रहने वाले हैं, गुजरात में नहीं, ये देश के हर कोने में रहेंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी फैक्टर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है मोदी जी, हम मोदी जी का नाम उनका कार्यकर्ता नहीं तो कोई और लेगा। और गुजरात में मोदी जी का जन्म हुआ है, गुजरात में ही मोदी जी ने सालों तक काम किया है, तो मोदी फैक्टर तो गुजरात में जीवन भर रहने वाला है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आप अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे जो सीनियर नेता हैं उनके साथ काम मैं सीखता हूं, और आने वाले दिनों में भी मैं भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक बन के उनके साथ काम सीखूंगा और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल हर्ष सांगी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप दोबारा हमारे साथ लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, थैंक यू। और अब हम जो सुचरिता, अभिषेक, सोहेल, दीप्ति जो लेके आ रहे हैं वो है पोल ऑफ पोल्स। पीमार्क और मैट्राइज दोनों के नंबर्स ऑन है, दोनों के नंबर्स। और ये पहले हम हिमाचल का बता रहे हैं, हिमाचल में बीजेपी 37 ये पोल ऑफ पोल्स है, पीमार्क और मैट्राइज दोनों का मिला के। भारतीय जनता पार्टी 37, कांग्रेस 30, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स 1, यानी भारतीय जनता पार्टी वो नंबर क्रॉस कर रही है और 37 ला रही है। ये पोल ऑफ पोल्स है, पीमार्क और मैट्राइज दोनों का मिला के। भारतीय जनता पार्टी 37, कांग्रेस 30, आप 0, अदर्स 1। और अब स्टेट चेंज कर देते हैं सुचरिता, सीधा यहां से निकलते हैं गरिमा हिमाचल से और चलते हैं गुजरात।
पोल ऑफ पोल्स दोनों स्टेट बैक टू बैक दिखा के फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर हिमाचल में जैसा आपने कहा सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की पोल ऑफ पोल्स में, और गुजरात में देखिए क्या नंबर आ रहे हैं 112 121, यानी यहाँ भी सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की 112 से 128 पोल ऑफ पोल है, वो मैट्राइज के नंबर से नीचे वाले जी। ठीक है, 128 से 148 जो आप हम दोनों नंबर्स दिखा रहे हैं, यानी कि 128 सीटें इस महा एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 46, आम आदमी पार्टी के लिए 5 सीटें आम आदमी पार्टी को इस पोल में मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी गुजरात में सरकार साफ तौर पर बनाती नजर आ रही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि ये गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मीडियन देखें तो 128 भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभिषेक अभी तक के हिस्ट्री से ज्यादा होगा, चाहे एक ही सीट ज्यादा है, लेकिन अगर पीमार्क और मैट्राइज का दोनों का मीडियन निकालें तो 128 है, मैक्सिमम 127 था। कांग्रेस 77 से 46 पे आ रही है, आम आदमी पार्टी सेठी साहब चले गए, लेकिन कौशिक जी खुश हो जाइए, 0 पे नहीं है, 5 पे हैं आप, और अदर्स 3 है। अभिषेक 128 ये पोल ऑफ पोल्स में दिखा रहे हैं, ये पीमार्क और मैट्राइज का मीडियन निकाल के 128। जी अभिषेक। देखिए ऐश्वर्या, मैं समझता हूं जो आंकड़े आ रहे हैं वोटिंग के परसेंटेज के, पोलिंग जो थोड़ी कम हुई है, शायद उसके कारण ऐसा दिख रहा है, वरना ये और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो सकता था, क्योंकि एज अ सिंपल फंक्शन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ अपोजिशन वोट एंड द आम आदमी पार्टी रियली eating into and destroying the Congress vote base beyond Surat. Surat Aam Aadmi Party is a player, perhaps might win 1 or 2 seats. I can give it. They might not win 5 seats. I'm sticking my neck out. As an observer of Gujarat politics, I'm sticking my neck out. Aam Aadmi Party might get 1 or 2 seats, max 3 seats, but not beyond that. उसके अलावा जो भी आम आदमी पार्टी करेगी वो कांग्रेस पार्टी का वोट अपने तरफ लेगी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगी। तो ये संख्या थोड़ी बदल सकती है, पर ये जो आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज का गिरा है उसमें से कितना अर्बन एरियाज में ज्यादा गिरा है, क्योंकि मेनली अर्बन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग होती है, तो उसके कारण क्या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, और इसीलिए रूरल एरियाज में, खासतौर से ट्राइबल बेल्ट में हम देख रहे हैं बहुत वोटिंग हो रही है। मैं आपको बताऊं ये जो मैट्राइज का पोल है, अगर आप इस मैट्राइज के पोल में जाएं तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। जैसे ही आप देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज, और वोट शेयर में जैसे ही आप जाते हैं, आप जैसे ही वोट परसेंटेज में जाते हैं, तो वो सारी चीजें एक एक करके निकल के आती हैं। और अगर आप देखें इसके अंदर ये दिखाता है अभिषेक कि आप कैसे, और आप कास्ट वाइज पे जाइए, पाटीदार पे जाइए, दलित पे जाइए, आदिवासी में जाइए, ट्राइबल्स पे जाइए, कड़वा पटेल में जाइए, लेवा पटेल में जाइए, ओबीसी, स्वर्ण हिंदू, तो आप जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो दिखता है कि वो बीजेपी ने कंसोलिडेट किया है और ज्यादा, और 27 साल बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। बिल्कुल, और ये कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है कि लोगों को ये डबल इंजन सरकार का जो फायदा बीजेपी ने बताया है, चुनावी वायदा नहीं कहें, चुनाव में प्रचार जो किया है वो दिख रहा है, पिछले 8 साल में दिखा है। और ये तो कहा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सन ऑफ द सॉइल हैं, गुजरात के लोगों के लिए उनका बेटा है जो प्रधानमंत्री है देश का, तो वो कैसे उससे हट सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक सीटों में भी जा सकता हूं। आप देखें छोटा उदयपुर में जैसे मोहन राठवा 9 बार के एमएलए कांग्रेस पार्टी के, पिछली बार प्रोटेम स्पीकर थे, यानी पूरे असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर थे, वो अभी चुनाव से 1 महीना पहले चले गए बीजेपी में, उनका बेटा चुनाव लड़ा छोटा उदयपुर से। ट्राइबल सीट है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, पर मैं समझता हूं मोहन राठवा का खुद का कद और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में आप समझे कि कौन जीतता है वहां। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूं, एक सीट का, खेड़ ब्रह्मा ट्राइबल सीट है नॉर्थ गुजरात में, वहां से बहुत समय से वहां के जो अश्विन कोतवाल करके कांग्रेस के एमएलए थे, जब नरेंद्र मोदी वहां पे मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस जीतती थी और अश्विन कोतवाल वहां से एमएलए बनते थे, वो अभी 1-2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मैं समझता हूं ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो अभिषेक एक और दीप्ति, जाति के हिसाब से और रीजन के हिसाब से की बात की अभी से, तो मैट्राइज ने एक सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी का समर्थन विरोध, हाउ मेनी परसेंटेज सुचरिता, ये कितना बड़ा इशू है? 34%, 34% ऑफ गुजरात के लोग कह रहे हैं केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ 18%, महंगाई 11%, बेरोजगारी 9%, राज्य सरकार का कामकाज 6%, विधायक का कामकाज 5%, ध्रुवीकरण 3%, अन्य कोई मुद्दा 14%, लेकिन 34% नरेंद्र मोदी इज द ओनली फैक्टर।
कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो लोग कह रहे हैं। जो पॉलिटिकल लेक्सिकन अब लिखा जाएगा अभिषेक सुचारिता, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे कोई एक ऐसा नेता है, और वो भी आज के टाइम में। आप देखिए नेताओं को लेकर किस तरह की छवि है, नेता करप्ट होते हैं, नेता झूठ बोलते हैं, नेता अपने लिए और अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और नेता का आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे समय में आज हम सुबह रिपब्लिक पर मैं और अभिषेक वो तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री की। वहां पर आपने जिससे भी बात की हो, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, आम लोग थे, लेकिन हर किसी को ना ही सिर्फ एक रिकॉल है कि एक सन ऑफ द सॉइल है, और साथ ही साथ जिस तरह एक पर्सनल कनेक्ट की बात होती है, इस तरह एक ऑर्गेनिक लव, एक शब्द है अंग्रेजी का ऑर्गेनिक लव, यानी आपको ना वो किसी के लिए बनाना पड़ता है, नेचुरली आता है, तो वो एकदम साफ नजर आता है। और ये शायद सिर्फ गुजरात नहीं है, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं, चाहे पहले सिर्फ महिला वोटर की ये बात होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं चाहे वो यूथ हो, चाहे एस्पिरेशनल यूथ हो, चाहे अब ऑपोजिशन भी हो। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कोई भी मुद्दा है 2024 में अब लड़ाई लड़ने के लिए। और हिंदुत्व के साथ मोदित्व, हिंदुत्व के साथ अब मोदित्व, मुझे लगता है यही एक नया। कौशिक जी का तो मुंह ही मतलब उतर गया, जैसे ही आपने एक नया फॉर्मेट है। कौशिक जी का तो मुंह ही उतर गया। संजीव कौशिक जी, क्यों दीप्ति ने क्या ऐसा किया कि आपका मुंह उतर गया? किसने कहा? बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। अरे तो आप दे रहे हैं ना, आपको बाबुलंद बोलिए। इलेक्शन में तो सबको सर समान मौका मिलता है ना। आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल समझ के खुश हो रहे हैं तो मैं तो भाई एग्जिट पोल बोल रहा हूँ कि एक सरकार, मैंने तो पोल, हमने तो पोल ऑफ पोल्स भी कर दिए। 40 साल से वहाँ थे, 40 स्टार बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक वहाँ उतार दिए, 3 मुख्यमंत्री उतार दिए, कौशिक देश के प्रधानमंत्री समेत 6 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिए, और बचा खुचा आज देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मैटर क्या करता है सर? आप इलेक्शन जीते, आपको इससे दिक्कत है कि प्रधानमंत्री वोट देने जाते हैं तो आप कहते हैं रोड शो करते हैं। प्रधानमंत्री एक नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, आप एक गाड़ी से उतरते हैं, आप वोटिंग स्टेशन तक जाते हैं पैदल, उसके बाद वापस आते हैं, अपने भाई से मिलते हैं। मुझे बताइए, अगर आप इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते रहेंगे वहां तक कैमरा जाए, कैसे चलेगा? हाथ मिलाए, अभिवादन करें लोगों के साथ साथ, वो भी स्वर में स्वर मिलाए। आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर फिर इधर आ गए क्या? किसको नहीं दिखाई दे रहा था? तो आप केजरीवाल के साथ थे, आप फिर राहुल गांधी के साथ आ गए जैसे ही 5 सीट आई। किसको नहीं दिखाई दे रहा? अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखी। आप तो केजरीवाल, अजय वर्मा जी, आपको दिक्कत है, आपकी पार्टी को दिक्कत है कि मोदी और शाह चले भी ना। सुनिए सर, आपकी पार्टी को इलेक्शन में आपने अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखी थी। अरविंद केजरीवाल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वोट देने जाते हैं और बोलते हैं कट्टर ईमानदार लोगों को दिल्ली वोट देगी। अब क्या ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? नहीं, मैंने तो कल अभी तो एमसीडी को चर्चा भी नहीं करना चाहती थी। अभी तो चर्चा भी नहीं करना चाहती थी ना सर। उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आप तो मोदी जी की चाल पे आप सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन भाग जाते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते हैं वोट डालने, पूरा तामझाम करते हैं, वो आपको नहीं लगता गलत? 27 सालों से जिस राज्य में जो पार्टी सत्ता में हो, वो 50 किलोमीटर का इस तरह से। तो सर क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, आप भी लड़ लेते हैं, वैसे चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं सर, उसके लिए सारी ताकत झोंकी जाती है। आम आदमी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? आपको क्या लग रहा है? आप जीत रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं गुजरात में, हिमाचल में भी सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल समझ के यहाँ बैठ के चर्चा। अरे सर, आप अपना एग्जैक्ट पोल दे दीजिए, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं गुजरात में? आप कितनी सीटें जीत रहे हैं गुजरात में? नहीं, मैं आप भाई आपको लग रहा है ये पोल गलत है।